warm and gracious welcome to this prestigious gathering on behalf of Bharati Vidyapeeth, deemed to be University, Yashwantrao Mohite Institute of Management, Karad. Today, we convene for an intellectually enriching occasion, National IT Symposium 2.0, Vigilance, the future of intelligent technology. A platform where innovation converges with insight and ideas transform into impactful realities. Your presence here truly elevates the grandeur of this event. At this moment, we are honored to welcome our distinguished dignitaries to the venue. Their presence adds immense value and inspiration to this symposium. To begin with solemn reverence and divine blessing, we shall now proceed with the floral tribute to our visionary founder, Chancellor, Honorable Dr. Patangrao Kadam Sahib, followed by Saraswati Pujan and the lighting of the lamp, symbolizing knowledge, wisdom and enlightenment. I humbly request our esteemed dignitaries present on the stage to kindly commence for this auspicious ceremony. Hasti
It is my privilege to invite visionary leader, academician par excellence, Professor Azim Sheikh Sir, Director YMIMKarad, to deliver the welcome address. Sir, we kindly request you to address the gathering. Good morning. Good morning to all respected dignitaries, esteemed guests, faculty members, and my dear students. It gives me an immense pleasure and honor as the director of this prestigious management institution to welcome you all to IT Symposium 2.0 on the inspiring theme Vision X, the future of intelligent technology. Today, we gather not just for an academic event, but for a meaningful exchange of ideas, innovation, and vision that will shape the future of technology and society. I extend a warm welcome to our distinguished guests and experts from the IT industry, Narayanan sir, Sunil sir, Chaitanya, and Vaibhav sir. I welcome you all for this IT Symposium 2.0. This guest's presence adds immense value to this symposium. Your experience and insights will undoubtedly inspire our students to think beyond boundaries. I also welcome our dedicated faculty members and my enthusiastic students who are the real driving force behind such initiative. Dear students, we are living in an era where technology is evolving faster than ever before. The world is witnessing groundbreaking advancements such as artificial intelligence, machine learning, data science, blockchain, cloud computing, cybersecurity, and Internet of the Things. These are no longer just concepts in textbooks. They are transforming industries, economies, and daily life. Today, companies are not just looking for degrees, they are looking for skills, adaptability, and innovation. Technologies like AI-powered automation, smart cities, digital payments, and virtual reality are redefining how we live and work. For example, self-driving cars, AI-based healthcare diagnostics, and intelligent chat systems are no longer futuristic dreams, they are present realities. The question is not whether technology will change the world. The question is, are we ready to change ourselves along with it? To survive and succeed on a global platform, students must continuously upgrade their skills, embrace lifelong learning, and stay curious. Learning coding, data analytics, digital marketing, and emerging technologies is no longer optional, it is essential. However, success in the technological world is not achieved by skills alone. It requires strong values and personal qualities which I always mention in my speech, that is discipline, dedication, determination, passion, perseverance, punctuality, consistency, commitment, and confidence. Along with that, time management and stress management is also important in today's era. Remember, technology will give you tools, but your character will define how far you go. In today's competitive global environment, it is not the strongest or the most intelligent who survive, but those who are most adaptable to change. You must be ready to learn, unlearn, and relearn. This symposium is a platform for you to gain insights, exchange ideas, and ignite your innovative thinking. Participate actively, ask questions, and make the most of this opportunity. Before I conclude, I would like to leave you with a powerful thought. The future belongs to those who learn more skills and combine them in creative ways. Let us move forward with the vision, courage, and commitment to build a smarter, better, and more technological empowered future. Thank you all, and I wish IT Symposium 2.0 a grand success. Jai Hind, Jai Maharashtra. Thank you, sir. Gratitude, when expressed sincerely, becomes the highest form of respect. We now move on to the felicitation of our esteemed dignitaries. Due to unforeseen last-minute changes in the schedule of our esteemed chief guest, Mr. Mukesh Jain sir was unable to join us today. However, he has graciously assured
us that he will be conducting a comprehensive 4-day workshop for our faculty members and students in the near future. I humbly request our respected director sir to kindly come forward for the felicitation. We request Mr. Jagdish Narayan sir to come forward. Thank you, sir. We invite Dr. Vishal Deshmukh sir to come forward to felicitate Mr. Sunil Satyavolu sir. Thank you, sir. We request Dr. Sandeep Jagdale sir to come forward and felicitate Mr. Chaitanya Dikshit sir. Thank you, sir. I request Dr. Prashant Patil sir to come forward and felicitate Mr. Vaibhav More sir. Thank you, sir. I request Mr. Rahul Patil sir to come forward and felicitate Mrs. Narayanan ma'am. Okay, thank you. We extend our heartfelt gratitude to all our dignitaries
them a big round of applause. Ladies and gentlemen, it is my distinct privilege to welcome our honorable guest of honor, Mr. Jagdish Narayanan, Chief Technology Officer at Equifest, India. We request technical team to play an AV. Is the Chief Technology Officer at Equifax Credit Information Services India, bringing over 32 years of experience in the BFSI and fintech domain. He has led technology at leading digital fintech institutions such as Jio Payments Bank and Aditya Birla Idea Payments Bank, and has held senior leadership roles with global financial organizations including Citi, Barclays, and Bank of America. As a technology leader in innovation-driven fintech banks, he brings unique expertise in launching startup banks from the ground up, covering product conceptualization and design, with complete end-to-end implementation across infrastructure, applications, strategy, vendor management, team building, and customer experience. With deep domain knowledge, he has worked extensively in digital wallets, payments, frictionless e-commerce, cash and liquidity management, trade finance, and credit bureaus. His global experience spans across North America, EMEA, Africa, and India, where he has led large-scale technology portfolios and transformation initiatives. A respected leader known for his strategic vision and execution excellence, Mr. Jagdish Narayanan continues to drive innovation and impact in the fintech ecosystem. We welcome you, sir, to the National IT Symposium 2.0. I now request Mr. Jagdish Narayanan sir to address the gathering on the topic from data to decisions, how AI is reshaping business intelligence. Sir, we look forward to your enlightening address. Morning. Good morning, everyone. So, when Dr. Asim Sheikh reached out to me about a month ago, or maybe a month and a half ago, मुझे ये नहीं पता था कि ये कितना बड़ा फंक्शन है, कितना बड़ा इवेंट है. I just knew that I was going to one of the premier engineering and management institutes in the country, because Bharatiya Vidya Peeth has existed when I was a student in Mumbai. The campus in Navi Mumbai was there. I had probably even applied to it also. So it is from that time. So it's not that I wasn't aware of the institution. मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है क्योंकि I visited at least Mumbai campus, if not Karad. So, and the ability for me to associate with an institution and a national, or for that matter, a global institution for now, I believe it's there in several countries outside India as well, to get associated with it at multiple levels was enough for me to say, chalo, main zarur aunga, 100% aunga. That was my thing. And this thing has just exceeded every one of my dreams. Sure. So, and not in the least, the way I came here. अब देखो, कराड़ तो मैं पहली बार आ रहा हूँ, बट उसके साथ मैं गया था कोल्हापुर. कल फ्राइडे था, महालक्ष्मी जी के दर्शन हो गए, जो बहुत ज़्यादा मुश्किल है. So what a start for me for this event. मेरे लिए तो कम से कम इवेंट के लिए तो बहुत ज़्यादा बड़ा स्टार्ट था. These guys were there at the airport to receive me. It was just extraordinary. So yes, I think I'm here at a tremendous place, and it's just wonderful to see such a large audience. I can't imagine. I've got so many people out here,
who are all coming just to learn, to understand कि क्या हो रहा है, क्या सीख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, and just that inquisitiveness, that thirst is itself a tremendous thing to just experience. So मैं लास्ट एक दिन में ही कल से लेकर के आई हैव बीन सॉर्ट ऑफ गैदरिंग अ लॉट ऑफ डेटा जो यहाँ दिख रहा है. I have been gathering data more than people gathering data from me, because I am seeing people from everywhere. Is that better? Hello. Hello. Okay. Hello. Hello. Okay, this gives you more freedom and not tied to one spot. That's a unique. So when I see people from all parts of the region around here, and of course from outside as well, all of you have the best opportunity, you've got the best data with you. Because people are coming from different parts, different walks of life, from different backgrounds. And data क्या होता है? Data is nothing but what people do in everyday life. Data is not something that you manufacture from somewhere and or invent something from somewhere or you create some magical. So data is nothing but what you do in the morning, what you do in the afternoon, what does the family do in the evening, what does everybody do? That is data. And when we talk about decisions using data, it is nothing but how can I get support to do my normal life in a better, more efficient, more happy, and a simpler way. That's it.
what am I doing? I want to just demystify all this garbage for a minute. कि हम जो कर रहे हैं घर पे वो कुछ अलग है, ये कुछ बहुत ही something altogether different in the sky. ये तो मतलब उसको we will build some spaceship to do something and invent something. ऐसा कुछ नहीं है. All the stuff that we talk about is just to make our daily life easier and better. Right? If we can do that well, then we have achieved everything else. Right? What we want to do is just figure out what we are already doing हम जो कर रहे हैं, you just bring it together in one place, and then rather than you could have seen it yourself कि अच्छा ये सब कर रहा हूँ, can I do it better? Now you try to bring in some capability of the systems which are also having data about large numbers of such people. अभी मैं क्या कर रहा हूँ मुझे पता है, अब ये लोग क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता है. Now if I can get one system to get my data and everybody's data together in one place, and then say, अच्छा, now based on all these people data, it looks like in the month of May हम ऐसे करते हैं in this area. We have achieved that prediction. We have achieved that what we call AI of some sort. It is nothing but getting the data together, organizing it, identifying standard patterns that is typically done, okay, and trying to make the system learn those patterns and then reproduce those patterns. Nothing else. If I know that before the rains, if I know that before the monsoon, before the rainy season, everyone is going to do sowing of seeds. सबको पता है. Now you just gather that data. Then you just figure out some more information, depending on the type of soil, depending on the type of weather conditions, heat, cold, whatever. Certain types of crop can be sown in certain region. Add that information. Okay. And then try to use the system to tell you back now that the
Is it audible now? Okay, right. Seems like it came alive. So what you see here is what I just said. Just democratize the data. Again, ये भी heavy jargon है. But democratize the data is nothing but जो हम रोज करते हैं उसी को उसके अंदर डालो. Keep it, just gather what we do every day. I mean, what I do, I get up at 5 o'clock, I do this, I take the bus, I go to the store, I do what I do. Okay. Then we figure out how to do it better, how to do it more efficiently. Okay. So what happens is when you have data, now the next thing you talk about is intelligence, or as it's called business intelligence, BI. Nothing but analyzing the data, okay, and saying what it seems to look like by keeping on constantly putting in data just about, let's say, crop patterns, because I'm just relating to that because I know that a lot of people will be able to relate to that. पता चल सकता है कि लास्ट 10 साल से क्या हो रहा है and क्यों हो रहा है. Okay, we found that 3 years back rainfall was better. We had years where the rain pattern and hence the crop alternating, and then so you have that kind of information for the last several years. Now, business intelligence is nothing but it giving you this trend of what are the influencing factors and in what and shape or form have these factors influenced your output. Whether it is rainfall patterns, whether it is the temperature, whether it is any other market condition, उससे आपका output में क्या फर्क आया over the last few years. In a very simplistic sense. I'm not using corporate jargon here deliberately. Right? So you have certain influencing factors, each factor having certain different level of influence. You know that rain has a significant amount of influence, timing of rain, what difference है, बहुत फर्क पड़ सकता है. Temperature of course has a lot of influence. So then you decide which is the most influencing factor, and then you know कि इसकी वजह से मेरा ज़्यादा impact हुआ, अच्छा हुआ या अच्छा नहीं हुआ, whatever है. That is business intelligence. Now, what we need to be able to do is how can we make this information reach the last person on the ground, who is not necessarily going to have all of these jargon, who doesn't do random forest algorithms every day, who sits in the farm, okay, and does the real work. How can we make it reach there? That is democratization of data. Right? So that it is not restricted or confined to a few super intellectual giants who sit in some room somewhere and God knows where. And it has to come out from there and be able to reach the last person on the ground. Simple. Now, and obviously we don't expect the people on the ground to be knowing BI tools, Power BI, Tableau. वो यहाँ होता है, वो बाहर थोड़ी होता है. Okay, so we will have to use Power BI and Tableau in a way that the person who does not need to know Power BI and Tableau is able to understand and use that data meaningfully. Okay, so that very few people need to know Power BI or Tableau, but the guy on the ground should be able to use the data in a very helpful manner. Right? The second and most important thing, and it's a standard problem everywhere, is how can you interact with people in their ecosystem. And I don't get tired of saying ever that it's a very, very cultural thing. Okay, this is not the Western world.
where everyone speaks the same language, does this eat, and everything is common everywhere across the country. That's how it is in the Western world. So, if you just make something there, in just way in English or in some way that one person can understand, then the whole country can understand that without any problem. यहाँ ऐसा नहीं है, right? We know that everything here in India will change every 50-100 kilometers. You go to the next district, the food patterns, the language, everything is dramatically different. The festival celebrated is all different. So you cannot have a standard interface. Okay, you cannot. I mean, I'm just taking an example. You put visuals, icons, and things like that. If I just put a classical Punjabi dance kind of a photograph and take that mobile app or that report output or any of those sorry. So if you just that kind of a screen, a visual interface, a mobile app, and take that app to the south of the country, what's going to happen? No one is going to relate to it. People are going to just say that this seems very, very Punjabi centric. ये हमारे लिए नहीं है. Okay, so which means that an interaction has to be very, very closely mirroring the day people that we want interaction to be with. It has to be that way. It cannot be in a one-size-fits-all manner. कि मैंने एक बना दिया, everybody has to understand what I will do. You understand it? Okay. So that is about to do these interactions, the data gathering, the output that we produce, to be able to give it back to the end common man in the way that the person understands it. हाँ ये मेरे लिए है, ये जो बोल रहे हैं ना, ये मेरे लिए applicable है, ये मेरे लिए ठीक लग रहा है. And that is the hardest part because it is very different. Everybody here has a very different background from a different part of the country, right? Just try and make an interface, and everybody here is very highly educated people, all BCA, MCA graduates and management graduates here, right? Try and make an app. Just make a simple app which everybody kind of adopts and understands and uses very equally with equal ease and comfort, and you will see how hard that is. Because someone will just feel, ठीक है, ये तेरे लिए तो ठीक है, ये मेरे लिए जमता नहीं है. It's very easy because it's just what it relates, what that app relates to that person. So if we need something that works for everybody, then it has to adapt, and that's where AI comes into the picture. When I go into an app, can the app know me first, what I am, मैं क्या करता हूँ, मैं क्या कहाँ रहता हूँ, मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या अच्छा नहीं लगता है, and then curate and show me what I like to see more, and not show me what I see least. Better or for worse, I am not a great movie fan. Too bad, मैं देखता नहीं हूँ. My wife is not here, so I can say that, no problem. Okay, so what's the point if the app keeps on pumping movies at me? I'm just going to ignore that app like anything. I don't care about it because it's not my area of interest. Okay, so if that, and the same exact app, when it goes to my wife, she loves it. Okay, it should be able to give her all the latest stuff that's going on in Bollywood because she loves it. Same app, right? So it should
this is where AI comes into picture. When you go back into the nature of the person, and the interactions are conversational in nature, and that conversation adapted and it closely mirrors the persona of that individual, of that person's nature and likes and dislikes, then that becomes more something which is adopted much better. This is where you got to be using AI. AI comes in handy for these things. Okay, it is not machine learning. क्या होता है? Machine should help you understand through a random forest or whatever architecture that you use, whatever technology that you use. That's okay. Again, for testing purposes, for development purposes, go get for. Okay, Kaggle is where the world's data is available, by all means. But remember again that upon enriching the Kaggle data with these characteristics. So when you make something, ultimately it has to be fulfilling these basic human characteristics for it to work successfully. Like saying goes, it talks about digitization these days. Digitization is standard everywhere. I'm doing digital. The first thing is, as the saying goes, please humanize digital intelligence and don't try to digital human beings. That's how. Okay. So the face is as good as its human intelligence. So, coming to the other point, whenever there is a problem, we need to be able to understand the problem from multiple aspects. If I didn't succeed in something that I tried to do, some initiative that I tried to do. It can be launching a startup, it can be a social initiative, it could be farming, it could be any area, it could just be anything, it could be any industry. Now, how do I find out कि जो problem हुआ, what are all the reasons why I had a problem? Okay, the immediate thing is, हाँ इसने बराबर नहीं किया, इसलिए नहीं चला. You don't need AI to tell you that he didn't do it well, so नहीं चला. उसके लिए AI will do it. That you can say this. If you need a thorough analysis of what all was the factors for that to succeed, what get back to the old one. So if I find out what all factors were necessary for my initiative to succeed and what all I had to do in each of those factors, what all other people that have succeeded have done in each of those areas, and hence मैंने क्या बराबर किया और मैंने क्या बराबर नहीं किया, because of which it didn't work. That is a more comprehensive analysis of what happened and what did not happen. Now, this is where tools like AI can help you get to the root of issues. If it is technology, I am keeping technology out of it for the moment because we are not talking of code geeks here. Yeah, I mean, the classical use case of somebody who's working with technology infrastructure can tell you, if I have a huge data center with huge number of application servers and infrastructure,
infrastructure and something goes wrong, for me to even figure out which is the application on which server, in which data center, and which component which has caused a problem, it's extremely hard. You will keep on going one after the other in the normal course, and that's where AI, it's a standard use case nowadays, that it just literally gets to the root cause. This server located in London, in this data center, hosting this operating system and this application was the cause of your problem. But that is now more of a commoditized use case. I mean, that's something which has been there for a while, so it's not a new use case. The other area you think about is about frauds and security, right? Again, an area which is, people are getting WhatsApps every day, कि ये हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, and they're being scared out of their wits, right? Frankly, I've stopped seeing those WhatsApps now. It just scares people like anything. You get 10 such WhatsApps every day, right? Yes, okay, yes, this fraud happens, that fraud happens, and this and that and the other. Now, yes, it is true that when you have digital transactions everywhere, right? The good side is it's all fast, nice, efficient, nice. Like the saying goes, in the old days, when everybody had to use cash, if there was a bank robbery in the old way, where people would just come into the bank and take away loads of cash, the one silver lining was, if you immediately maybe call the police or whatever, hopefully the guys are nearby, there's just like when somebody can be quickly caught and we can recover a large amount of what was lost. The same thing, the same exact money, if it is digitally stolen, the likelihood of getting even one penny back from that is almost nearly zero. Because before you blink an eyelid, whether it has gone to Brazil or Africa, you don't know where it has gone. It's gone to different pieces, different parts of the world. Before you can even blink an eyelid. And getting it back is impossible. Okay. So, now in that kind of scenarios, how do you use technology to help you, firstly, prevent such situations from happening, and secondly, if situations do happen, how do you use technology to help you at least recover from that situation as quickly as you can, as much as you can, if not 100%. So, as you can see, this is about the root cause of an issue. I'll give you a very simple example. Everybody's using GPay on their phones right now. Let's say you do a GPay payment right now for 100 rupees from your phone. There's a transaction on the phone. And just 10 minutes later, there's a second transaction from the same phone for another 100 rupees. But this one is from Delhi. Same phone, same transaction, originating from Delhi. You obviously know that one transaction is not right, because there's no way that this phone can go from here to Delhi in 10 minutes. One of the transactions is not right. कुछ तो गलत है. Now, अब क्या गलत है? पहला transaction गलत है या दूसरा transaction गलत है? That's where AI can help you figure out. Okay, let me use other data patterns about where this person is located. हाँ, based on other transactions, based on other data patterns, ऐसा लगता है कि ये जगदीश तो यहाँ कराड़ में है. So hence, कराड़ का transaction बराबर लग रहा है, तो दिल्ली का transaction गलत है. So you can at least try and stop the delayed transaction before it happens, and then go back and figure out what that transaction was. Okay, so this is one of the classical use cases where AI helps you prevent something that could have just gone wrong. Okay, so yeah, the transactions could have happened. Then you use data to prevent the occurrence of a potential fraud from happening just by using additional information that you have about the person. Of course, in doing that, question is how personal you get. Should I let everybody in the world know that I'm in Karad at this moment?
for me to be able to prevent these transactions. So it's always a double-edged sword. Yeah, if I know as much information about the person, I can be that much more accurate in working with that person. But at the same time, there's also a limit to which you know. So these are some of the aspects that we talk about AI on how you, in a daily natural life, how some of these aspects come into play. Again, I'm trying to relate it to just our daily interactions and not confined to boardrooms. Because AI is not for boardrooms. AI is for the people. Just repeat, this is more of a reiteration of what we just saw. How to move from reactive to proactive. Your classical business intelligence looks back in time, looks back with the data and says, हाँ, last 4 साल में ये हुआ, because this happened, ऐसे हुआ. Gives you nice graphs and charts and tableau, gives you colorful outputs and all the good stuff in this world. ठीक है, which is fine. Now, but how to take it forward from there? Okay, then the future in the classical world is just left for you to automatically just draw inferences from it. अच्छा, ये report देख के ऐसा लगता है कि मैं भी I'll start doing it this way. So the decision for the future is largely left to inferences that we have to draw from our existing reports. What AI helps you do is it says, while you were doing this in the last 4 years, I have also got data with me from thousands of other sources who did different thing and got different results. Hence, you might want to now look at doing the same activity, the same business, the same initiative, whatever you're doing, in this way, and perhaps your results will be much better. Because it seems like your pattern matches some of the other patterns that I have in my database. So AI helps you, enables you to think, and I want to re-emphasize that point. AI will enable you to think and not replace you, as most people think. Okay, on how to take decisions going forward, basis the world's data. Otherwise, अब तक जो decision आप लेते थे was based on your own data. You did not have the support of extra data with you to take decisions of what to do. अच्छा, मैंने ये किया, ऐसे हुआ, अब मैं क्या करूँ? There, AI helps you by saying, I also have other pieces of data from other parts of the country and the world, जिसने ऐसा किया, and hence you might see this trend if you take these decision points. Yeah. So what that helps you is what is in technical jargon called as actionable simulations. Nothing but what I just said, telling you that other people who did this saw these results, and that's the database that I have, and hence you might want to try out these data points to see how your results change. So you can, what you would have otherwise had to physically try out or try out through actually experimentation is enabled for you directly by virtue of the data that is already present there. There are thousands of scenarios present there. So A scenario में कैसा होता है, B scenario में कैसा होता है, that's those scenarios things, instead of we ourselves trying it out, we could run it ourselves, हम खुद भी कर सकते थे, but instead of we spending time, effort, money and resources in trying to do it, you can do it in one shot because AI gives you that power by virtue of having data from everywhere else. Okay, but remember, all this comes at the cost of data. And what is data? You and I. Everything, I repeat, that we do in normal life is data. And to illustrate that, simple thing, especially people that have Alexa, etc. at home, आजकल वो भी ज़रूरत नहीं है. Try this. And this is real, I'm not exaggerating.
You might just discuss a topic which you never normally discuss. Never. Matlab totally. American baseball. Nobody's ever discussed it, no? 3 people sit and discuss it for 10 minutes. Most likely, when you look at your phone after that, you'll see some article or offer on American baseball. Somebody is listening to you and watching you all the time. That's the reality. नहीं तो you hear something you never spoke about, कभी सोचते ही नहीं है, अमेरिका में किसी पता ही नहीं किसी। ऐसे ही पेटेंट करते हैं 5 मिनट के लिए, फोन पे आ गया उसका ऑफर, next baseball tournament. So when we say that all of this is based on data, remember data is nothing but us and our daily thoughts, words and deeds. That's all, nothing else. That is data. That's what goes and comes back as Netflix and other good stuff. Okay. So now, yes, that's where the whole concept of AI governance and AI ethics comes into picture, about how much do you allow yourself to become commoditized as data feed for the whole world, free of cost. Because that is what is actually the reality. Okay. Now, in the technology world, this is helpful. What I talked about was continuous monitoring, and it's monitoring you. Right? Everything that you said is getting recorded somewhere, and it's coming back. Yeah, in technology, it helps you. When you have huge technology platforms, data centers, huge estates, cloud, distributed data across the cloud, across multi-cloud, etc., all the good stuff. Yes, then you need to know what's happening with your data, with your transactions. Because a transaction originates in one country, goes somewhere to 2-3 other countries, and lands up finally in the 4th country, across 3 continents, in a single transaction, in maybe 500 milliseconds or something, or less, right? Now, in 500 milliseconds, if a transaction traverses 50,000 miles across 4 continents, then where on earth is it going, and where is it falling, where is it going through, is a little hard to monitor manually. And this is some of the areas where AI helps you do this monitoring. And why I keep saying both of these alongside each other is just to say that there are very, very strong, powerful use cases like these for AI. Being able to continuously monitor infrastructure and systems. Electricity, I mean, can I keep on monitoring? Let's say I have this huge hall. I have 2 sources of electricity. I have a solar power system and a regular power system that I have. And I have a monitoring tool which keeps on monitoring, and the moment it senses that one is kind of beginning to fail, it switches on the other, so that there is no impact to us at all. That's a tremendous use case, right? At the same time, if it constantly keeps monitoring you and what you say and do and what you do, that's not so much fun. So everything has a double-edged sword. Okay, so you have to be able to use it in the right ways and get the full power of it, to be able to harness all its benefits without getting stuck with all its downsides. Of course, workflow automation is an old concept. People have heard of RPAs and things like that. Okay, where robots can do many repetitive tasks that otherwise humans have to do all the time. Not because they want to replace humans, and that's a often asked question. It can't do that, but it can at least just the mundane jobs that have to be done on a repetitive way, time and again, can be automated with a system which just keeps on doing, so the system doesn't get bored like the way people can get bored. That's all. It can just help you remove that boredom story. That's it. So these are some of the standard use cases of AI and machine learning, which help you just achieve efficiency on the one side through automation, proactive monitoring, and the
and sort of analysis upfront, as opposed to reactive stuff. अच्छा ये हो गया, आप देखें क्या हुआ करके. It helps you. Then going one step further, helping you decisioning based on information on how it can do. Again, if you look at it, I'm still at the realm of data and decisioning using AI. I am not talking about LLMs and the like out here. Okay, that is sort of enabling one class of people who are the classical developers, the coders, the Javas and the Pythons of the world, and saying, okay, I will just put Gemini or Chat GPT or a Copilot or Claude or whatever you want, or Perplexity, whatever you like. Okay, and there are thousands of articles on which is applicable. Where will Claude work? Where will Chat GPT be better? Where will Gemini not work? Where will there are thousands of articles. I'm not going to spend time talking about those things because there are like millions of articles on those things. Okay, which LLM works in which scenario and those kinds of those use cases and those situations. But that is for developers. That's not AI for the common man. That's AI for one class of people. Right? Just go to the next one. Now getting a little technical in terms of decisioning. Okay. Now what happens is when you have lots of data with you, one of the classical problems, and that's again a real life problem which we try to bring in AI to help us solve it for, is how to relate all that data. You get data pattern, you get weather reports. Again, I'm just relating to the people out here. You get weather reports from everywhere throughout the year, throughout the last 3 years, throughout the last 5 years. You get crop patterns separately. You get maybe education level improvement data, how much literacy or how much education levels have improved the last 10 years, 15 years separately. You get a lot of this data as discrete, separate data points or data sets. How are you going to relate weather with crop patterns, with educational literacy and all the other things? How are you going to relate them? They are not unrelated, we know that for sure. Okay, if we try to relate them by ourselves, we will be able to do it. It's not we can't do it, but we'll have to do more, we'll have to spend more time. We'll have to think through it even more to be able to relate that stuff. Now, here's where AI helps you. AI says, okay, based on it has got huge amounts of data of each of these sets. It's got huge amount of weather related data. It's got massive amounts of crop related data. It's got massive amounts of education related data and other cultural aspects, whatever. It's able to give you correlation patterns, saying based on the data that we have, it looks like if you have this kind of weather pattern in these kinds of areas where there is a better level of knowledge on certain things. Okay, then your crop output is better for these types of crops. So the ability to relate those data sets, bring them together as one schema, one database, and then make it help better, is where AI can help you. Otherwise, you'll just be overflowing. There'll be just overflowing amounts of data everywhere. There's like trillions of data points. अब उसको करें क्या? How do you bring it all together and make sense out of it, and bring and correlate it with each other? That's a place where AI comes in very, very handy. Okay, because it's able to try to find patterns internally, because that's what it's trained to do. It uses the old graph algorithms and things like that to try to plot all of it together internally and try to say, okay, this looks like one curve, and if I extend that curve, it looks like if these data points are met, then the curve will go to this point. It tries to do that. Okay, it's just plain old mathematics, which we learned possibly in high school, but it's just a more advanced way of implementing that same thing. Okay, the same graph algorithms and things like that. The other thing is about
Data cleansing, that's the other important part, right? When you have huge amounts of data, a lot of data can be spurious data. Okay, it may not be correct, valid, or good data. If you let that interfere with your decisions or the output that it gives, the output is also going to be of a lower quality because it is being affected by sort of incorrect or incomplete or inadequate data points. Right? How to identify clear outliers and exclude them from that set, saying these are not points. I mean, there was one day, 2 days back, again going back to the same sort of context of weather and crops. Yeah, there was one day 2 years back when temperature in Karad hit 47 degrees. Okay, that's an outlier here. It doesn't hit 47 degrees ever otherwise. कुछ हुआ था 2 साल पहले, something happened, whatever. So that's an outlier, but take it out. Don't let that mess with your overall computations. Okay, so identify outliers which are clearly not in the regular data patterns and take them out so that your data gets more cleansed and normalized, and hence your outputs are more sort of, I would say, less variable or less, in the classical word, hallucinating. In the AI parlance, AI can hallucinate, and we'll talk about that also in a minute. Okay. And while associating data patterns, and that's a very important thing, we should be able, AI should help us associate it in a meaningful way. And I'll give you an interesting example. Someone just told me that this was like a week back, that he just bought some drink, some beer or something. Okay. Next thing, he got an offer for a fridge, a refrigerator. Why? Because it says it has been kept refrigerated. What kind of association of data is that? Just because the bottle of beer has got something that says it has been kept refrigerated, it's got data pattern there, it is associated with a fridge, and thrown a fridge ka offer. So yeah, it has done AI work in its classical sense, but thrown the most meaningless output. Or I experience it all the time. Most of the AI things tend to just throw back at you what you have just done. Like you just go, last year I bought a car, and for the next 1 month, I was getting offers for buying more cars. Okay, मैं जाके गाड़ी लेता हूँ क्या? Today buy this car, tomorrow buy that car. And if I buy one car, it's a big deal. तो उस गाड़ी क्या कर देता हूँ? Likewise, I just renewed my car insurance. For 1 month, I'm getting offer for renewal. I just renewed my insurance, na? अभी 1 year के लिए I'm not going to renew my insurance again. Why the heck are you giving me insurance offers now? So it can't, when it is associated. Handle that answer with care. I can tell you from very, very close responses at face value without even filtering through it one time. Okay, so there's a significant amount of hallucinations that happen around those responses, whether it's a perplexity or a
Copilot or ChatGPT or whoever it is, or ChatGPT or Gemini, doesn't matter. You just 4 questions, gives you an answer in less than a second, less than a minute, does a lot of thinking and gives you an answer. But handle that answer with care. Don't take it face value, because otherwise you can get misled very badly. We've had that very many times. Especially don't touch it in production straight away. Don't do that. Okay. But that is where data cleansing is a very powerful tool. If it is done correctly and it is done repetitively, iteratively, to make that data again very contextual. Say, okay, this is the person, this is what that person does frequently. Here, there's somebody in somebody's house who needs frequent medicines, which means to that person, if you give an offer for some medicines at a good this thing, it's helpful because that person frequently needs to buy that medicine for whatever reason. Don't make it a carpet topping for everybody to give medicine offer. कोई मतलब नहीं है. It's absolutely no sense. So that is where the data associations and cleansing make a lot of sense. So when you use AI to cleanse your data, to engineer your data and bring its relationships together, help build models which will help you move from finding out what went wrong to trying to help you to see how you can do better, to go more proactive than reactive, and most importantly, make it available to all. Cancel out all the jargon that I just said in the last few minutes and make it available to the common person in this most simple way, without any jargon, any of this stuff. That's when you use AI to move from data to decisions. Right? That's the way it can happen, because a decision cannot just come by putting an algorithm in front of something, just like that. You'll get hallucinations, which are just terrible. You go step by step at it, make sure you have the right data, use first to cleanse it and say, okay, which are the meaningful points which are in, which are clear outlier points which not even be considered, which are not even worthy of taking into account. Then associate the data meaningfully with each other, the data patterns, and to try and see, okay, past analysis and past trends and non-technical, straightforward, contextual sense, it makes sense. Then you go from meaningful data to meaningful decisions. Right? So this is in a sum and sub, and of course, like the sidebar use cases of using data to prevent frauds, to improve security. I mean, I'm not going to talk about all the security jargon that exists today. I mean, that everybody knows about it, and that those that don't will know it as they need it. That's okay. Okay. But it's important that how do you understand, how use the tools to understand data patterns and in an ethical manner. And I reiterate that 10,000 times over, because data is nothing but you and I. I'm speaking here, that is data. Okay, if they post this interaction in LinkedIn tomorrow, LinkedIn will gather the data. So the data is nothing but what we are all doing. Okay. It's really up to us to decide how much we want to share about ourselves to the whole world for free. Okay, without even we knowing about it. And that becomes data that somebody in the world can use to do whatever they want with other people. Right? So this is really how this whole construct works in terms of how you use AI to move from bare raw data to meaningful decisions and insights. This is really, in some sort of substance, the whole essence of what I was going to say. Ultimately, you want to
go to a very personalized solution. In the technology parlance, you will hear the parlance n equals 1. Okay, a very famous technology gimmick, nothing else but what I give to one person is not what I give to the next person. It is based on that individual's needs and characteristics and nature and behavior and things like that, and very contextual. It's as simple as that. But yes, technology loves to make it sound important, so it's n equals to 1, as simple as that. And of course, to businesses, yes, to people who are running businesses, you want to understand the whole business ecosystem, because business has on the one side their suppliers, their sort of input providers of different kinds, and then on the other side you have customers, and you got regulators, you've got a whole bunch of other stakeholders around. How to get a comprehensive view of how these decisions can be taken, keeping in mind all of these different stakeholders to fulfill all their requirements. That's the sum and substance of really what I wanted to cover. Yeah. So that's really pretty much it. You can just go, and that's really pretty much it from my perspective. I'm just going to leave the floor open for the next 5 minutes or whatever for any interactions. I extend our heartfelt gratitude to our esteemed guests for such an insightful and thought-provoking session on how AI is reshaping business intelligence. It is now my honor to introduce Honorable. Any questions? Any views? Any thoughts? Questions? If anyone has any sort of question, feel free to ask, sir. Nowadays, we are very much talking about AI and the advanced technology. So, being a teacher, I would like to ask you a question. Does AI killing AI in students? Is my question. So, AI, the whole concept is, it is just an enabler. AI in itself cannot do anything. Okay, so it is really up to us to implement it in an ethical manner and teach everybody, or make everybody aware that when they are using all of these tools, what is it that they're trading off? They think they're getting it for free. Like there is a famous saying that says, if you get a product for free, then you are the product. Because it's not free. What is coming is, we are paying the price by sharing everything about ourselves more and more and more constantly, and that's what we think we're getting for free. So when it's for free, it's not free. So, as teachers, if we educate, students, and of course in our community interactions, to benefit from AI, but being aware of its potential pitfalls and downfalls, and being sort of very balanced in how to use it, I guess we'll be able to achieve a much better output through it, and not just produce geeks who just say something for the sake of saying it, but who are just human beings who use the right tools to the job that it's supposed to do and not more than that. Thank you, sir.
Hello sir. During studies, does the student can use that programming code from the ChatGPT and show it to the teachers as their work? So, so here's a great dilemma. Is it right or is it wrong to generate a piece of code from ChatGPT or Gemini and submit it tomorrow morning in your submissions? Right? Answer is it's neither right nor wrong. Here's the deal. Here's the deal. If you can use the ready-made code that AI gives you and build something 10 times bigger in the same time frame, then that's fine. Like to take an example, I have not said in the age of AI. By the way, AI was there for 50 years back also, so it's not that it was, but it doesn't has jargon and hype that it is now. So I used to have course on graphics, okay, and the graphics course had algorithms of how to draw a circle on the screen by calculating each pixel mathematically, okay, by using the mathematical geometrical formula and calculating each pixel and drawing a circle on the screen. It was there and it was part of our examinations. Yes, we used to have to actually write the code to plot a circle using the mathematical algorithms. The very next year, circle algorithm was given as a library. It is already available as code. The guy can just inherit that library, the code, say draw circle, circle will be drawn. So the examinations also kept pace with it, and the task given to the individual was not just to draw a circle in the exam. He was asked to do something far more complex than that. So he was told, use it. Before you say, can I use it? I am telling you, use it. It's like an open book test. Use Karo. Here's a library, go use it. But do something much bigger by using it. So if we do that and challenge the minds, we're not restricting and saying don't use ChatGPT or Gemini, but build something much more. You use your intelligence on top of it to take advantage of what it can give you and build something much more grander using it. Then it helps much better. So you're not restricting it, but at the same time you're not just letting it become an excuse or just draining the mind out. So it is just balanced out in that sense. Sir, I'm going to ask one question. Yeah. Sir, on behalf of all the students, I would like to ask one question. Which AI tool which will be useful in the initial stage of the students for enhancing their skills? Okay. So again, these are specific to each area. You lots and lots of articles on that. So if you're a development person, you'll probably be looking at the LLM tools, ChatGPT, Claude, whatever you want to use. If you are a person more on the operations side, you want to automate stuff, you use automation tools like RPA tools, your agentic tools. Agentic tools can also help you do some decisioning. Okay, so AI is now become a bit of a universe. It can impact different areas in different ways. So now a person who's in an analytics program might be more inclined to use agentic tools to help do analytics better and come at decisioning and prediction models better. Someone who's a core development person might be more inclined to use the LLM tools more frequently. So it's again not a one-size-fits-all prescription that everybody in this room can use one or two tools and solve all the problems in the world. It's specific to their specific nature of work that they do or the course that they're taking, and then based on what project they're doing or what output they're seeking, there are the tools, there are predictive tools for each of these areas. Sir, my question is related to data cleaning. Most of the time when we are working with the educational institute and with the students, we are working on the dummy data. And most of the time the data is the quantitative data. So while we are removing the outlier or replacing the missing values, we are using the average or moving average likewise. Or mean on mode
in case of the qualitative data, students are not undergoing the qualitative data in the educational institute, and while they are working with the live projects or live application, they are undergoing with the qualitative data. So what the method is used to implement this? So again, there is no one single bullet for this, but this is typical pattern analysis. Like I just took an example of American baseball, right? Most people in this room, if not all, would ordinarily never discuss American baseball in a normal course of life. That's a reality. Okay. If there is a data point that came across that, oh, we discussed American baseball, here, this is qualitative data, right? It's nothing quantitative about it. Then a pattern, if you have a pattern of data and you can figure out that pattern, you clearly figure out this is an outlier. Something happened on one day, somebody came, somebody discussed, somebody from US came down and they started discussing, so people just responded and said, American baseball, baat khatam. Before that and after that, they never cared about it. Right? So when you have such data points, which are purely qualitative in nature, you have to get the pattern analysis done first of the data patterns and then put them in those buckets. And then figure out, here's a data point which doesn't fit any of these buckets, it's just sitting there by itself outside, which is just a lone occurrence of this one, and then looks like it's not a regular one. It's an outlier, take it out. Right? So that's the only way you can clean out some of these irregular data patterns with qualitative data. It's not easy, especially when you pull out data from social media. Alternate data, it's all fun to say we'll get from data from social media, but yeah, I mean, then how do you know how the data is, whether it's real or not? Or it's just somebody's, how do you know somebody's just artificially just put in some stuff there just by mistake, or not by mistake, but by intention, to just mislead somebody. You have to be able to put out patterns to say, this doesn't look like this person. Even if there is a data point, like if there is something on my profile that talks about the latest movies and the latest film stars, somebody has to figure out this doesn't look like him. आज तक कभी मूवी देखा नहीं है, कितने बार गए वो थिएटर में लास्ट 10 साल में, and then suddenly it talks about something is not right. Something is not right about this piece of data. Right? So that has to be done using a pattern analysis, saying that look, this data point looks like an irregular one. It's not a regular one, and it has to be taken out. That's the way it can be done. Thank you once again, sir, for taking the time to share your knowledge with us. We look forward to learning more from you in the future. It is now my honor to introduce Honorable Mr. Sunil Satyavolu, Technology and Product Leader at Microsoft. We request the technical team to play an AV introducing our guest speaker. Honorable Mr. Sunil Satyavolu is a distinguished product operations and technology leader at Microsoft. With over 2 decades of experience in driving large-scale transformation across global organizations, he has contributed to leading institutions including Google, Fidelity Investments, and Accenture, delivering impactful solutions across diverse industries. With a strong focus on artificial intelligence and emerging technologies, he brings valuable insights into enabling smarter decision-making, driving innovation, and building future-ready organizations. Behind his corporate journey, he is an entrepreneur, mentor, and ecosystem builder, actively supporting innovation, culture, and purpose-driven initiatives. He has served as the CEO of India Joy, South Asia's largest digital entertainment festival, bringing together technology, media, and creative industries, and has also contributed to academia by guiding students in design thinking and innovation. Deeply committed to environmental and social impact, he has led initiatives such as the restoration of a 90-acre urban lake, reflecting his dedication to sustainability and community-driven change. A respected leader known for his thoughtful approach and meaningful contributions, he continues to inspire across
technology, ecosystems, and society. We welcome you, sir, to the National IT Symposium 2.0. Sir will be addressing us on ethics of intelligent technology. Sir, the stage belongs to you. Thank you. Most of you must be sleepy. So, it's an insightful session, Rayananji. Thank you so much. Wealth of knowledge, not very easy to gain access. So, we'll start with the question. How many of you have ever used the AI to complete your assignments? Can you show your hands? Less hands, I will be upset. So many are doubtful whether we used or not. Awesome. So it has become inevitable for us to use AI, and if we are not using AI, then we need to revisit the way we work actually. So AI is here to stay. We should definitely accept that reality. Now, the topic of the day when it comes to ethics in intelligent technology. So are we evolving or are we de-evolving? How many times do we go to a mall and see a bunch of people engrossed into their phones, disconnected completely from their life, the real life, right? Somebody wanted to be in a mall. Rather than being in a mall, they wanted everybody in their network to know that they are in the mall. So they may take a picture and upload. So basically putting your privacy on the internet without even realizing that in the process of sharing my life is very jazzy, you're actually putting your privacy on the internet. It's a food for thought. I want all of you to ponder on that particular stuff. Technology is evolving faster than our biology. We are here to ensure we don't de-evolve as professionals. So, I would like to give you an outside-in view from the organizational standpoint. Organizations are shifting from experimentation to governance to prevent AI from cannibalizing higher order thinking. Some of the pointers that I have mentioned here are for all of you. I'll ensure this presentation is circulated to all of you. Because contextually there is a lot to be spoken on this, but there's a very less time. There are courses on AI and ethics on universities, and we're trying to accomplish that in 45 minutes. So, for many of you who do not understand how would ethics actually matter in the era of technology, we have some more interesting slides over there. We'll talk about it. So, risk-based prohibition. So in the US, there are acts now on how can you use AI in your work. And the 30% rule, emerging institutional guidelines suggest that not more than 30% can be used for your work, where you can leverage AI to do your work, because it's adding more work. So the question on, should we allow? Yes, we should allow, but we should know where to stop. And in many cases, we don't know where to stop. And that's where the boundary of ethics we end up crossing, and where our technology actually becomes a threat instead of becoming a stronger utility for us. So, thank you, Mr. Ajit, for having me here. It's a great honor to be here. And to the core team
It's not easy to bring people on a weekend to spend some time with you guys. It's really a big choice. And I value this time because we never know, some of you might go to another institutions and inspire other people. That's how we pass on our legacy and contribute to Bhavya Bharat. I know what it takes to make something like this and what are the efforts involved in making something like this. I really value it. So why am I here? Not because I'm an IIT or NIT graduate who made it to Microsoft or Google. I'm a BCA student, like many of you. From the first batch of BCA, it was in 98. Many of you were not even born at that point of time. And this is definitely an effort, not an effort to impress all of you, not to give you, I made it, so you also can made it kind of a jnana. That's not the idea. But honestly, to tell you something that nobody told me when I was at your age. I'm here because somewhere between Microsoft startup, which did not work, and Google, again back to Microsoft, I collected more failures than wins. And that's what makes everyone super unique. A skill can be taught, but not resilience. Everybody in this room, I can see that strong resilience in each of you, because it's not easy in a tier 2, tier 3 cities and aim something really big. Since last night I have been having some individual conversations to many of you, and I'm shocked to know the curiosity levels that each of you have demonstrated. Hats off to you and your institution and Mr. Rajim for inculcating this kind of a growth mindset in all of you. I'm here to tell you what nobody told me when I was at your age, sitting amongst you. That's the deal today. Absolutely no polish, no glossy picture, just the real fact. So, if we look at the role of each of us, whether we choose to be in the technology or not to choose to be in the technology, our roles are more or less equal, because we are that bridge between human and machine, and we are the people who will be able to strike the balance in an appropriate way. And the moment we lose balance, we're going to become a bridge which has neither the ends. So it's a food for thought again, do we want to be one of them? When it came to recent studies specific to ethics, recent studies, which is 24-26, have identified several red flag metrics. Metrics is something that you all need to live up to. That's where you all will be working when you get into a work, whether it's your own company or you're part of a larger organization. So get used to the word metric. So code quality, 30% increase in static analysis, warning post AI adoption. Complexity rose by 40%. So people say now we can code it faster, but what we didn't realize is we have improved on the complexities as well. So the efficiency is not at all the byproduct there. Complexity has become the byproduct. So we need to figure out if we wanted to operate in that world. Code duplication, recently written an article on LinkedIn. I encourage all of you to read about it. If we just blindly go ahead and use AI and create the apps which already exist, we're gonna create a burial ground of applications, a graveyard of applications. Somebody wanted to track their efficiency, they just go ahead and chat GPT and use it without even realizing there is an app existing already, because everyone wanted to create an app of their own. Workload paradox, speed gains often lead to 40% more mental effort. So basically, you think you're outsourcing your thinking to the machine by improving the quality prompts. The machine actually is outsourcing its thinking to you. So you're expected to give the work in an appropriate manner. Cycle
it's crazily increasing, and cognitive deficiency. All these aspects are the study results. So it's too early for us to celebrate that AI is actually driving efficiency. It is actually, the efficiency is something that we need to drive within ourselves in choosing a responsible AI. And this is something that I want all of you to read and digest. And this is something that I want all of you to take as a takeaway, this one statement. Knowing to code in 2028 is knowing how to type in 2005. Many people have gone to type institutions. I don't know, many of you know there was an institution for type as well. Typewriter institution, stenography, all that used to be a profession in the past. And many of them were on demand, that we can draft a letter in 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes. All of that has vanished now. If somebody is very excited that they can code today, good for you, but just think that you will become that typewriter very soon. So where do you bring your intelligence? The skill that you put you in that room aren't your syllabus. That's what you are all about. So coding is essential, but how to code and how to make machine code for you and how to leverage machine with the code and quality check is your ability. We need to build that skill set. Now, since all of you are a bit sleepy, we'll do a quick activity here. Your favorite activity. You can take out your phones. Whoever has smartphones can take out. And type this prompt on your ChatGPT, any of your tool, whatever tool that you are using. Give me 3 Indian Supreme Court judgments on AI and data privacy with case names, years, and direct quote. So try this, look at the result and take that case number, go back and see if that's the original case number. You'll be shocked to see the results. I'll give a few seconds for each of you to experiment that. Because it's a bubble, I want all of you to break it yourself. Anybody from the last row who's doing this activity? And play around with these activities in your off time. Just see how AI is actually telling us something which does not exist. AI can't think. It is just taking orders from all of us. Learning from your inputs and giving the same thing back to you again. So this thing just fabricated legal cases, judges, courts, everything with total confidence. In the US, a real lawyer did exactly what you did just now, got sanctioned by a federal court. There are now over 1,300 documented cases of this court worldwide. People are using to resolve legal cases, but AI did not evolve yet. So the monkey brain, the digital arrest, how many of you heard of digital arrest? Any of you have not heard about digital arrest so far? I assume all of you have heard. I don't see any hands. And it's absolutely safe. If you don't know something, that's why you are here, not to impress each other. Scammers use a mix of deepfake voice technology. Somebody will call as if they know you well or as your relative or loved one and put you in a trap, and that results to a digital arrest. And you'll be shocked to see the impact it has created. These tactics enable scammers to drain victims' parents' life savings with just 4 hours. The success of these scammers stem not from scammers' intelligence, but from the fact that human brains have only evolved
over 2 million years. You will be seated in front of a Zoom call and you'll be asked to completely look at the monitor and not move around. And you will constantly get phone call claiming that there's a certain police officer. You will act smart and try to go to the website and check the names. You'll all find it the right names. But by the time you even realize it's a digital arrest scam, money would have already gone from your accounts. So this picture is something that I want all of you to think about it. When you go back, be that intelligent friend to your family members or loved ones, to let them know that something like this exists. The size of the problem is much more crazier than what you're thinking about. And at least if you can educate few people on this and help them, you'll be seen as a hero. So, on the ethical failure for the real world impact, 35% higher. And on the digital scams that we just spoke about, 2,140 crores have lost so far in India. It's not a small amount. Just because we don't know something does not mean that does not exist. So let's acknowledge. The reason why you're spending this much time on this is, where are ethics on technology? Where is ethics in adapting technology? How do we build these ethical practices while we demonstrate in developing these applications? Can we ever evolve? The Supreme Court called it a national security threat. An 82-year-old chairman of Vardhaman Group lost about 7 crores. Not a small guy, not a farmer, not an uneducated person. 7 crores is somebody's dream, a family wealth, an ancestral wealth. That's the money that they have lost. Highly educated, reputed person. Think about it, it's a point to ponder. We'll do one more small activity now. Please open your phones and ask your AI to write Python to filter job opportunities by home address to provide safe neighborhood. Just try this prompt and see the results. Safe neighborhood is basically a proxy for caste, religion and income. That's the bias that the AI is dealing with. And what safe means to us may not be safe in the AI language. Just see what it has to do with a Python programmer to the rest of the attributes it's mentioned here. Caste, religion or neighborhood has nothing to do with the good Python programming. But if you feed an information like this, forget about ethics, there is a huge amount of bias that is happening there. Some AIs will refuse, some will comply. This variance itself is the lesson. And here is the thing, the AI can plead, it's just software. You can't in India. Because BVDU now is force. It enforces people to carry a personal liability, meaning you build a code, you're liable for your code. Later you cannot say that I'm so sorry I used AI to code this, because that's your product, that's your baby. Quick mirror here, data is not neutral. AI does not think. So for all of you who thinks AI think, please come out of that, it just predicts. It learns from human history, including every bias, wherever written down. Amazon's hiring AI downgraded resumes containing the word humans. We did a co-pilot launch in Singapore about 4 years back. We did an Asia summit for all our associates. And there was a prompt given. All the doctors in Finland are great. We translated it to a different language.
From that language, we tried translating back to English again. The word doctor is safely associated as female and it has wrongly translated the language. That's what AI is doing. Here is what makes this personal for India. All the PII, caste, names, personally identifiable information, college names, everything of them feature as an AI can learn to discriminate on, which essentially need not matter to us when it comes to the job. There used to be a consulting giant who used to say, your resume will be picked only if you have 65% score. Otherwise, your resume won't even be picked. That made a little bit of sense to me because you're actually trying to see who's smart, who's educated and who's committed. But the other parameters that are mentioned here has absolutely no sense at all. So the real job market in 2026, which probably all of you want to know about, shrinking, write this function, debug this, translate requirements kind of roles. Do not expect that you will sit as a BI and take these directions and understand what's happening, because those jobs will be shrinking, because we know an activity of tactical and strategical works. Everything tactical, assume that AI can take over. Everything strategical, just think that it is our job. So, it is shrinking, but what is growing? Should we build this? What could go wrong? Explain it to the real world. What does it mean? How many of you have heard this word elevator pitch? Any of you heard this word elevator pitch? So it's an interesting thing for all of you to practice when you go back home today. Let's assume Satyananda stepped into this hotel. In the ground floor, you and him get into the same elevator. There are 5 people and all of you are going to 6th floor along with him. What is that you should tell to Satya in the time that you get from ground floor to 6th floor, that he remembers you and says that let's meet tomorrow? That is your elevator pitch. At every stage of your career, all of you should keep your elevator pitch ready. Currently you are a student. You can mention that I am studying in Bharati Vidyapeeth institution. Rest of the 4 people may say that. Somebody can very well say, sugarcane is a maximum crop growth here and try sugarcane for Karad and Maharashtra. You don't even need to tell your name. Your growth mindset will help him register you and they will ask your name. They will come back to you. That's how you create your moment. One question, please ask yourself on a regular basis, what is my elevator pitch? What would I introduce myself when I meet different people so that they want to talk to me again? You probably have a minute to talk about it, but how do you earn the 10 minutes from them next time so that you have a larger window to explain what you wanted to do and then sell yourself? So the engineers getting promoted aren't the fastest coders. They are the ones who ask the right questions before code is written. Your requirement gathering is completely strategical activity. Can you become strategical? Lot of apps when we see, we will not realize a lot of work that has gone into picture. Behind the scenes, discussing which feature. I don't know how many of you are obsessed with iPhone here. I was super obsessed. I just came out of that ecosystem. But the point is, did you guys ever saw an iPhone hanging or breaking? Ever in the lifetime? I almost used it for 12 years. It never happened for me. But we see that quite often in other Android phones or something like that. So the detailing of requirement gathering, quality of code, test and regression test, whatever we call it, right?
Just look at the standards that Apple maintains. When we pay the premium, it is not for the device. It is for the reliability and the trust that the product has built. And everybody behind the scenes are proud of building something like that. Can we become such people behind the scenes, taking that requirements in an appropriate way and translating it to the language where we produce the code we actually need? One concrete Microsoft observation here. Absolutely no bragging because I'm from Microsoft, but the people I see moving up aren't the fastest. Absolutely not. I get an amazing opportunity to work with a lot of young professionals, interns in Microsoft, talk to them, understand from them, a lot of times learn from them as well. They are the ones who read the production requirement documents much more carefully than anybody else. Because if you know what needs to be done very, very clearly, then you will be able to build it in an appropriate way. Some of you have asked, what are most essential skills that are required for anybody to become successful? These are some 6 pillars. Probably you can take a screenshot or use the slide when I share it with you. That are transferable skills that will come handy to you in whatever profession that you move. Think critically. Question the obvious. Absolutely no room for assumptions. Audit your own logic. Spot the lie before it spots you. Your ability to develop your critical thinking will differentiate you. Many people miss that. Larger organizations are trying to solve that. Solve a problem from the first principle. Break it down, build it back up, don't copy the answer. In typical problem solving skill, there is an 80-20 rule that they talk about. 80% of the problems come from 20% of the issues. So your ability to identify the 20% will differentiate you, because you are actually knocking down 80% of the issues by identifying the 20% of the root cause. Stay curious, stay learning, communicate and tell stories, not the stories about why you came late or why you want to go to a movie, not those stories, but your ability to articulate something, your narrative, your storytelling, your presentation, all these aspects will help you really, really well. Let's assume you're talking to your friends about the program that you have attended. What is it you want to tell them? How will you narrate that? Can you communicate in 10 minutes? Is there a way you can communicate in 1 minute? If you have a whole day, everybody will pass the exam. But how will you perform during that window is what matters the most. In the same way, how do you build a story? The elevator pitch that we spoke about is exactly the same thing. How is your elevator pitch evolving over a period of time? Create and innovate constantly. Because that is something which will make your brain keep up to the momentum, even though whatever is happening around you. Applied knowledge is something that I want to focus a bit more, because we will know a lot of things, but if you don't apply it, the knowledge is absolutely waste. Not Python, not Excel, not generate prompts, not any tool. Just log these 6 aspects, because this will be a foundational skill set on which you can build your careers. The difference between an average career and a great one isn't about world class at one of these. It is being above average at all of these. You don't need to just say that, okay, I'm an exceptionally well storyteller. Can I land a job in Microsoft? Nope. All of these qualities at a good average or above average capability are decently adequate. So we don't have a lot of time to do one as each semester and practice them and then forget about it in the next semester, right? So we need to apply this on our day-to-day life and then get better at our peers.
So your job from 10 years from now is not about picking something personalization. I was talking to some of you, right? It is not about you deciding that I wanted to be a software engineer, or I wanted to be an architect, or I wanted to be a data engineer. That's not the idea. The expectation from the industry is that you choose the industry first. What industries will be relevant even after 10 years, 20 years from now? And within that industry, what is that I should operate? What am I capable of? Don't decide you will be a software engineer. Just decide that you want to be in a manufacturing and supply chain business. Then within that, figure out what role suits your educational qualification and your career aspirations. Then try to bridge the gap. That becomes your learning curve. The fundamental mistake everybody does is put a label to you as soon as you think about career. That should not be the case. Some of these scary images, how can these impact the way we work? Something I wanted all of you to register. Because in this unfair world, don't expect fairness. So be your own guard. Take care of these aspects so that you don't get into the trap. So we spoke about 6 pillars. Some of these elements I wanted all of you to think a little more deeper. These are all transferable skills which will compound. Think in systems, not in future. Don't say that, okay, I wanted to have an app that will become a calculator. Just see what is a larger problem it can solve. How can you become part of a larger ecosystem? Are you expecting people to install one more app on their phone? All these curiosity questions is something that I want all of you to start thinking about it. Write very, very clearly on what you wanted to accomplish. We failed to do that. We outsource that as well. Just type it in the Word and then expect AI to correct it for us. Think on behalf of us. But AI can never think like you, because the problem that you saw, AI has never seen it. Read, team, your own work. Be your own hottest team member, hottest critic. Don't be obsessed about your ideas. Somebody gives you a feedback, take it as a gift, and then figure out, did I think right or did I say it wrong? You might have thought it really, really well, but in the process of articulating, maybe you have done a mistake. So the other person did not even land it well on what you're actually thinking about. Translate relentlessly about your vision. Become technical and human both at the same time, between code and consequences. These don't expire. Like we mentioned about the typewriting skill or various other aspects, it could be the Python code in the future, those might expire, but these skill sets will never expire. These are always on demand. Something that nobody ever told me, I figured it out. Telling how to learn. People expect us to learn, but how to learn? Some of these things, when I was talking to Mr. Ajim, I thought I should make more sense and relevant. I requested, sir, what should we speak to children? His view is basically outside in view and also give something on career growth and what will help them become that future ready individuals is something that he was quoting, and I really liked that conversation. And last night when I met some of you, I felt there's a larger need to emphasize more. So the slide that you're seeing, I made it last night. There is a previous version which has only about ethical technology related aspect. Then I felt it has to be much more than that. So on these, how to learn in public, build something, write about it, share it. Your GitHub and your blog are your own resumes.
If any of you are still not on LinkedIn, sorry, you have to get on LinkedIn right away. Start writing about your interests. If you're a social media enthusiast, what is your resume talking about it right now? If somebody want to be a designer, what is your LinkedIn talking about it right now? When you speak to somebody reaching out for help on LinkedIn, what is it you're going to talk about you so that they respond to your LinkedIn message? Are you building that profile for you? I know you spend a lot of time on Insta. 10% of that if you can spend on LinkedIn, that will be rewarding for all of you. Study the why, not the how. One of the key problems that I face in communicating to Gen Z, basically, I can't just leave it at what is that they need to do. I definitely need to explain them why and also discuss more on how and empower them on how aspect of it. Because they wanted to do it their way. Teach what you just learned. Catch hold of your peers. Explain them what you have learned. Be crazy about your wisdom. Let them know what you are learning. Hear from them about their feedbacks and then again reiterate your learning. Pick hard problems on purpose. Don't solve easy problems. There are a lot of people who can do that. So, I learned more from one ugly failed project than from 2 years of course. I think this is really true for me in my career. So optimize for projects that don't settle for smaller ones. This is another element I wanted all of you to focus a bit more on how to think. First principles over first Google result. What are your principles? What are your ethos? How do you want to build your career on? Do you want to outsource even that particular stuff to Google or an AI to tell you what you should think? Or do you even have a framework in your mind? Steelman, the opposite view before arguing yours. How can you be very sure about what you know and do a fact check before getting into an argument or a debate? Are you really confident, or is it a confidence coming from the fake data? Ask yourself, what would have to be true for this to be wrong? Ask hard questions. Is it too good to believe? Or is it too bad to not believe? Write and think. Write and think is something that we've multiple times iterated. I want all of you to see the value of writing it yourself and then start thinking on what you have written. Everyone around you is about to use AI to think faster. Faster emails, faster code, faster decks. By the way, I did not use AI to make this deck. It's a manual thing. Faster everything. Your edge isn't the speed. The machine will always win on speed. Your edge is thinking better, asking the questions nobody asks, spotting the assumptions everybody missed, steel manning the view, your degree, before you argue with your own. If you win an argument with yourself first, with these principles, you will likely to win an argument with opponent as well. So win the internal battle first. I don't know how many of you play chess, my favorite game. For the people who play chess, you will be able to understand the jargon here, the fork. Two engineers, same college, same marks, same tools. Person A ships fast, trusts output, doesn't ask why. And person B ships thoughtfully, audits work, understands the stakes involved. A is replaceable in 3 years. B is indispensable for 30 years. Question to ask yourself, you want to compete against the speed which you will never win, or you want to sustain for a longer time? And before you walk out of that particular thought on the first job, one more thing. Most of you have been told, pick a role
then work backwards. The bottom-up approach that we spoke a few minutes back. But can we do a domain first and then take a top-down approach? Will it help you survive in that particular field for a longer time? Don't add a tag to yourself on a software engineer, developer, architect, or designer, whatever it is, right? What I would tell myself when I was like 21 years, build things that scare you. I really wish somebody told me this. I would have done that because I had absolutely nothing to lose at that point of time. Say I don't know faster. Many people hesitate to do that. It does not get better just because you have delayed it. Quicker you say, the chances of somebody thinking negative about you and moving to help you will be much more faster. So be really fast in saying that. Cushioning the brief beats completing it. Karad to everywhere is a shorter distance than you think. In this digital era, there are no boundaries. In this digital era, location does not really matter. When you have a smartphone in your hand, you have access. This invitation, I looked up Karad and I was reminded that this soil gave Maharashtra its first Chief Minister. Yashwantrao Chavan sir, born in the village not far from where we are sitting. On the map, it's a reminder that the distance from here to anywhere you want to go is shorter than what you have been told. Don't let anyone, including you, convince you otherwise. Thank you. I don't know if I was fast or slow, but that's what I had to say, and I also felt there has to be some time for question and answers. We can take the questions right now, or we can connect offline as well. I'm on LinkedIn. Some of you have been sending the request to me. You can post your questions on LinkedIn as well. I'll try to be attentive there. And Dr. Ajim, thank you so much for the opportunity. This is incredible to be here. Any questions? Hello. Ma'am. Sir, what happened is, hello. Sir, technology given to us everything. So it is blessing or curse you for all. It's a great question, ma'am. Thank you. It is blessing if we use it appropriately, or it can become curse if we don't use it appropriately. All of us have emails. All is well if we can access our email, but the moment we forget the password and you need to access something and you cannot recover your password, that's where it becomes a curse. You share your Wi-Fi password to your neighbor out of your love and affection, and a police constable pops up in front of your house saying that there's a fraudulent email went from your Wi-Fi. You don't even know who's staying in the neighbor, who's your neighbor and how are they using your Wi-Fi. That becomes a curse. The smartphone in the hand is a powerful tool, but we're using it to consume a lot of reels. It becomes a curse. Make tool work for us, don't work for the tool. Most of the presentations I give, I end with this note, because I'm here representing Microsoft. In the era of co-pilot, be the pilot. You take charge. Don't be the co-pilot where technology detects what it should do. Any other questions? Sir, right now you told that we should think differently and build different apps. But within that, I got a query in my mind. Microsoft didn't build the first operating system. Google was 16 search
was eventually created. Everyone has certain ideas within their mind. So should they suppress the emotion looking at these big giants? Can you elaborate more? Can you elaborate more? Yes, sir. I had an idea back then. It was about scheduling meetings and synchronizing everything on a single platform. Right now, we have these facilities on Microsoft Teams, and there are a lot of other apps. So these apps already have an ecosystem, and if I want to build that, my idea was slightly different. I wanted to include everyone, not like just with the people who use Microsoft or not. I didn't wanted to keep it limited up to the corporate sector. I wanted to include everyone. For example, right now, this event was scheduled. A lot of people missed it. A lot of people were actually invited, but because of the hectic schedule, what if there was an app or a system which actually helped people to schedule their days, and they would have managed to come here. Yeah, it's a good problem to solve, but is it good to have or nice to have? For example, how often do we host events like this in our college? Let's assume this app is within our college ecosystem, just not trying to boil the ocean. If we have this app in our college system, how often do we see a low participation because an app is not present currently? So this is the second event, second season, but we also had a HR gathering recently, right? So altogether 3 events we did. So how do you measure the pain? What will happen if this does not exist right now? And who will build it? Okay, let's assume you are very passionate to solve this problem and you have built it, but where will you host it? That was my Exactly. So in your college, for the education institutions, you can get some support from the organizations. But if you want to solve a real problem, few questions you should ask yourself is this problem worth solving? Who will pay for it? Because the app needs to run. Your old student may call you saying that, hey, the app is down, can you support me? You cannot say, hey, you're an old student, there is no support, right? Which means you should have a separate team who will take care of this app. Where will that money come from? So, building an app is definitely a good idea, but what are you actually solving? Verification, or it has to be an verification. How many of them have emails? And what is the usage of app? A lot of people don't even retain Uber and Ola in their phones for longer time. Whenever they wanted to book, they'll just book the taxi, and as soon as they reach, they'll uninstall. So then why will somebody keep your app for so long? And if the app is not present in the phone, how will you remind them? You're thinking in the right direction, but just travel a bit more on that particular direction, ask these curious questions. Thank you, sir. Thank you. Okay folks, thank you so much. Looking forward to being here again, and looking forward to connecting with all of you on LinkedIn. Thank you. I would like to express our sincere gratitude to our esteemed guests for delivering such an enlightening session on ethics of intelligence and technology. Thank you, sir. It is our privilege to welcome Honorable Mr. Chaitanya Dixit, sir, Senior Engineering Manager at HCL Tech. We request the technical team to play an AV introducing our guest speaker. Honorable Mr. Chaitanya Dixit currently serves as a technical architect at HCL Tech, where he leads cutting-edge AI initiatives and contributes to large-scale enterprise innovation, including flagship programs like Oracle AI Week. With over 12 years of rich experience in the IT industry,
he has established himself as a trusted expert in Oracle NetSuite, spanning functional consulting, administration, and suite commerce solutions, delivering robust, scalable, and business-critical ERP systems. Throughout his journey, he has taken on impactful roles at Tech Mahindra and contributed to global organizations such as Infosys and Capgemini, driving digital transformation, leading pre-sales strategies, and building high-performance teams. A multi-certified professional with NetSuite, Oracle, and Celigo credentials, and a Gen AI prompt engineer, he brings a rare blend of technical mastery and forward-thinking innovation, bridging enterprise systems with the evolving world of artificial intelligence. Beyond his corporate achievements, he is a co-founder, mentor, and industry guide, actively involved in consulting, training, and nurturing the next generation of technology professionals. Honored with multiple prestigious global awards for excellence, leadership, and impact, Chaitanya Dixit continues to push boundaries, empowering organizations, transforming businesses, and inspiring future leaders in the digital era. We welcome you, sir, to the National IT Symposium 2.0. He will be addressing us with AI. Sir, the stage is all yours. So good afternoon everyone. झोपली नाहीत ना कोण सगळे? जागे राहा. मी तुमच्यातलाच आहे, मी कराडाचाच आहे. अजिबात घाबरू नका. It's an honor to me to come here today and sharing this stage with all these dignitaries over here. Thank you, Dr. Ajim sir, all your HODs, professors, the event coordination team, also the supporting staff who arranged everything for us today over here. So as you rightly heard, like I work with many companies like Capgemini, Infosys, Tech Mahindra, and currently serving as a technical architect at HCL Tech. So also with the global exposure, I traveled from North Island of New Zealand to South Coast of Africa. So with that experience, today I came here to just guide you on storytelling. So it's my declaration over here. First of all, right now is this session is gonna be very informal. You will not see any slides on technical basis, like if like Azim sir or any technical staff over here, or like all the dignitaries also face like what kind of presentation Chaitanya is bringing today over here. Like what are these slides means? Why he kept these kind of photos? Like there are some photos, some lines should be there. Why Chaitanya is keeping all these things over here? That all will be answered you soon. And कोणतीही मूवी किंवा कोणताही एखादी स्टोरी चालवायच्या आधी एक डिस्क्लेमर असतं, अस्वीकरण. इस कहानी के सभी पात्र और घटना है काल्पनिक है, इधर काल्पनिक कोई नहीं है. इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं सब रियल है और इसका किसी ना किसी से कोई तो कोई संबंध है. तो व्हाट इज़ दैट कनेक्शंस एंड व्हाट इज़ दैट agenda for this today's seminar that I will focus to you. आवाज खरंच व्यवस्थित येतो आहे की आपण एक माईक चेक करूया. मला थोडासा इको वाटते. आय हर्ड सम ककफनी हे हरी. मला एक वायरलेस मिळेल का? वायरलेस मिळेल. हॅलो हॅलो बेस हॅलो 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 ऑल गुड. ओके. प्रीत दिलत मोहे ऐसी लागी, हो गई मैं मतवारी. भल भल जाऊं
हे मैं जाऊँ वारी वारी, मोह सुध बुध ना रही पल भर की, ये तो जाने दुनिया सारी। बेबस और लाचार फिरूं मैं, हारी मैं दिल हारी, हारी मैं दिल हारी। कळालं किती इन्फॉर्मल असेल हे सेशन? So first thing why I sing this song today over here, it is like सगळ्यात आधी पहिला प्रॉब्लेम मी इथं आलेला मला हा कळाला की मला आवाज येत नाही तुमचा. मला सकाळपासून 10 ते 15 स्टुडंट्स भेटले. मी अजिम सरांसोबत किंवा तुमच्या पाटील सरांसोबत पण बोललो. पाटील सर माझ्याकडे स्टुडंट पाठवत होते, आवाजच निघत नाही आहे तुमचा, तुम्ही बोलतच नाही किंवा पूर्ण ब्लँक होऊन जात आहे माझ्याशी बोलताना, किंवा कोणत्याही आता आज इंडस्ट्री एक्सपर्ट खूप सारे इथं आलेले आहेत, त्यांच्याशी बोलताना तुम्ही ब्लँक होते. त्यांना काय विचारायचं किंवा त्यांच्यासोबत कसा इंटरॅक्शन करायचं याच्यामध्ये थोडंसं तुम्हाला प्रॉब्लेम येत होता, हे मी बघितलं. सो द फर्स्ट रूल ऑफ इम्पॅक्टफुल स्टोरी टेलिंग इज युअर व्हॉइस. Everyone has a unique voice, okay? Everyone has blessed with their unique voice. Use that as a asset. Your voice modulations, your expression will help a lot while you present something, while you tell your story. It is not about my story, but it is like how to express yourself, how to present yourself, right? Everyone is attentive over here. कळते सगळ्यांना मी काय बोलते? ओके. फक्त 30 मिनिट्स आहेत, खूप साऱ्या स्लाइड्स नाहीत माझ्याकडे. खरं AI कन्सेप्ट विथ स्टोरीज टेलिंग मी तुला आज सांगणार आहे. ओके. सो हे गाणं रिलीज कधी झालं होतं तुम्हाला माहिती आहे? इयर कैलाश खेरचं गाणं आहे बरोबर, तेरी दिवानी. दॅट वॉज इन 2006 when I completed my 10th and moved to the Pune. Okay. So there is this one unexpected connection is there with this song, with this year. तुम्हाला हा जो फोटो दिसतोय याच्यामध्ये एक छोटा मुलगा आहे. तो छोटा मुलगा आज तुमच्या इथे प्रेझेंट आहे. मिस्टर ओंकार दीक्षित, प्लीज स्टँड अप. ही इज माय ब्रदर अँड दॅट्स वाय आय कम हिअर टुडे. दुसरं अनएक्सपेक्टेड कनेक्शन असं आहे की यू सी हिअर मिस्टर वैभव मोरे. He also from we are both from same village, Masur. So that is another unexpected connection we had over here. Third is, and I haven't shared that before with staff members also, with anybody else. I am also alumni of Bharati Vidyapit. So I completed my 11th and 12th when I went back to Pune in 2006. So his father actually, we call them as नाना. तो नानांनी आम्हाला म्हणजे मला 10वी झाल्यानंतर इथून पुण्याला घेऊन गेले की चैतन्य, यू हॅड गुड मार्क्स, यू हॅव अ गुड टॅलेंट, तर तुझ्याकडे ते पोटेन्शियल पण आहे की तू चांगला आउटफॉर्म करशील. तर त्याच्या वडिलांची माझ्या आयुष्यावरती खूप 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 उपकार आहे की त्यांनी मला कराडमधून पुण्यासारख्या मोठ्या शहरामध्ये वयाच्या 16व्या वर्षी घेऊन गेले 2006 साली. आणि त्या दिवसापासून आजपर्यंत मी जे काय अचीव केलं, जे काय एक्सपिरियन्सेस घेतले, लहान वयात खूप सारं एक्सपोजर मोठं मिळाल्यामुळं मला ते खूप सारं काही अचीव करतात. देन तुम्ही दुसरा जो फोटो बघत असाल, इट्स काइंड ऑफ फ्रेंड्स रियुनियन. लाईक ही फ्रेंड्स रियुनियन अक्षरशः 6 वर्षानंतर झालेली आहे. मी या माणसाला आज 2.5 वर्षानंतर भेटतोय. डू यू बिलीव्ह दॅट? 2.5 वर्षानंतर मी माझ्या सख्या चुलत भावाला आज भेटतो इथं. ही फ्रेंड्स रियुनियन 6 वर्षानंतर झालेली आहे. आफ्टर 6 years वी आर मीटिंग टुगेदर. इन भारती विद्यापीठ आय एम कमिंग आफ्टर 20 years ऑलमोस्ट.
So in this institution or like in this umbrella. So there always a unexpected connection when you try to deal with the AI. So build your that connection with the AI. Okay, so as Sunil sir rightly said, की AI ला काय लिहायचं हे सांगू नका, मी काय काय लिहू शकतो हे AI ला विचारा. बरोबर, तुमची थिंकिंग ॲबिलिटी तिथं स्टॉप करू नका. कारण की तुम्हाला जेव्हा कोणतेही AI टूल असेल तुमच्या प्रेझेंटेशनसाठी जर तुम्ही वापरणार असाल, तुमची आयडिया ही तुमची पाहिजे. तुमचा प्रोजेक्ट, मी खूप जणांना ते विचारलं तुमचा लास्ट इयर प्रोजेक्ट काय आहे, त्यांना काहींना सांगता आलं, काहींना नाही सांगता आलं. काही म्हणले की माझा जो दुसरा टीममेट आहे तो कोडिंगवरती काम करतो आहे, मी फक्त फंक्शनल ॲस्पेक्ट बघतोय वगैरे. नो, जर तुम्ही एखाद्या प्रोजेक्टचा भाग असाल तर स्टार्ट टू एंड तुम्हाला त्याचं नॉलेज पाहिजे. स्टार्ट टू एंड तुम्ही त्याच्याशी मैत्री केली पाहिजे, तुमचं कनेक्शन बिल्ड झालं पाहिजे. ओके, सो हाऊ दॅट इम्पॅक्टफुल स्टोरी टेलिंग हेल्प्स in your career as well, that is to present your project, then in your oral exams also, when you are giving the answers to your examiners, that time also it can be very helpful. Then if you are pitching any idea, so Vishwajit is here, so he had some startup and he pitched me some ideas. So take the help of that AI tools to build your story. And that is the first slide I am going to share here. It is about that hard-coded link, whether it is a human, whether it is your idea, it's your identity, it's your unique feature. So no matter what, how much AI we build, the human connection is the primary key, right? You all agree with that? तुम्ही त्याच्याशी कनेक्ट झाला पाहिजे. तुमचा एक्सपर्टीज, तुमचे टॉपिक, तुमची आयडिया ही फक्त तुमची असली पाहिजे, किंवा तुम्ही त्याच्यावरती पूर्ण वर्कआउट केला असेल तरच तुम्ही AIची हेल्प घ्या आणि त्याच्यापासून बेटर आउटपुट तर तुम्ही एक्स्ट्रॅक्ट करू शकता. देन अगेन दॅट स्टोरी टेलिंग इज लिंक बिटवीन दोज. सो ओंकार बीट, वैभव सर, भारती विद्यापीठ, ह्या सगळ्या लिंक आहेत मला आज इथे येऊन घ्यायसाठी. तर एक मसूरसारख्या छोट्याशा खेडेगावातला मुलगा आज या कॉर्पोरेट बोर्डरूममध्ये तुमच्याशी बोलतोय 100-200 मुलांच्या समोर, खूप साऱ्या मोठ्या हस्ती आहेत आज आलेले आहेत त्यांच्यासमोर. तर ही ॲबिलिटी बिल्ड करण्यासाठी मला 20 वर्ष गेली किंवा मला 15 वर्ष गेली. खरं तुम्ही आजच्या युगामध्ये जर तुम्ही AIचा वापर पुरेपूर केलात आणि AI टूल्स नीट वापरले आणि तुमची ओन इंटेलिजन्स जर वापरला इन्स्टेड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, तर तुम्ही अजून थोडं मोठं ग्रो होऊ शकता. सो दॅट्स द फर्स्ट की. सो बिल्ड युअर कनेक्शन. Okay, already some guys are sending me the LinkedIn request. I already discussed with Piyush and Vishwajit, then your coordinates are also there. तर यांच्याशी माझं कनेक्शन आता बिल्ड होतं आहे. तसं तुम्हीही प्रयत्न करा की समथिंग यू हॅव टू डू टू बिल्ड युअर कनेक्शन्स अँड स्पीक अप, वर्क ऑन युअर व्हॉइस मॉड्युलेशन, वर्क ऑन युअर अटायर, वर्क ऑन युअर एक्सप्रेशन्स. ओके, नाव लेट्स मूव 2 years आफ्टर दॅट. 2006मध्ये एवढं सगळं झालं होतं तुम्हाला कळालं. 2008मध्ये जेव्हा माझी 12वी झाली, तर 12वी नंतर असं झालं होतं की माझ्या इंजिनिअरिंगला मी कोल्हापूर डिस्ट्रिक्टमध्ये गेलो. जयसिंगपूरला एक डॉक्टर जे मगदूम कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग आहे, तिथं माझं बॅचलर ऑफ इंजिनिअरिंग कंप्लीट झालं. सो 2008 ते 2012 मी तिथं होतो. तर सेकंड थिंग यू कॅन सी ओवर हिअर, देर इज वन सायकल, यू कॅन सी दॅट. अँड यू विल सी लाईक 3 फोन आहेत आमच्या इथे. एका फोनमध्ये स्नेकची गेम असते, एका फोनमध्ये बाउन्सची गेम होती आणि एका फोनमध्ये क्रिकेटची गेम होती. हे फोन आठवतात कुणाला? तर हे आमच्यासाठी AI होतं, ही आमच्यासाठी टेक्नॉलॉजी होती 12 वर्षापूर्वी किंवा 15 वर्षापूर्वी. आत्ता आजकालच्या जगात तुमच्याकडे बेस्ट स्मार्टफोन आहेत, हाय एंड लॅपटॉप्स आहेत आणि टॅब्स आहेत, बऱ्याच साऱ्या इलेक्ट्रॉनिक गॅजेट्स आहेत, बरेच सारी टेक्नॉलॉजी आत्ता इव्हॉल्विंग आहे. खरं हाऊ आय स्टार्टेड, दॅट्स हाऊ आय स्टार्टेड. आय यूज टू टेक अ बायसिकल फ्रॉम माय दॅट विलेज. लाईक तिथेसुद्धा आता कसं होतं की माझे वडील कीर्तनकार, माझ्या वडिलांचं कसं होतं की ज्या दिवशी कीर्तन होईल, ज्या दिवशी भजन होईल, ज्या दिवशी कार्यक्रम होईल, दॅट डे वी गेट त्या दिवशी पाकिट घरी येईल, त्या दिवशी आमचं घर चालेल. ओके, सो ती परिस्थिती असताना
I cannot afford any bike or any hostel or the monthly expenses which I can pay from like pocket money like kind of thing, because my father don't have any fixed salary at that time. तर त्यावेळी सेकंड कनेक्शन माझ्या लाईफमध्ये आलं ती माझी मावशी होती. म्हणतात ना की आईपेक्षा मावशी खूप प्रेमळ असते. तर त्या मावशीने मला 4 वर्ष तिथं सांभाळलं जैनापूरमध्ये. तर जैनापूर हे खूप छोटंसं गाव आहे. तुम्ही जर पंचायत सिरीज बघितली असेल ॲमेझॉन प्राईमवरती, ती सेम त्या टाईपमध्ये. त्या गावात फक्त 2दा गाडी यायची, दुपारी 12:30 वाजता आणि संध्याकाळी 7 वाजता एक बस यायची फक्त, दॅट्स इट. अदरवाईज यू टू यूज युअर ओन व्हेकल टू कम्यूट टू एनी अदर सिटी लाईक नियर बाय टू कोल्हापूर, सांगली व जयसिंगपूर काइंड ऑफ थिंग. तर ते कॉलेज आहे तिथून 6 किलोमीटर, तर 6 किलोमीटर रोज जायचं, 6 किलोमीटर रोज परत माघारी यायचं. त्यासाठी मी ही सायकल वापरत होतो. आय हॅवंट फाउंड एनी गुड फोटो ऑफ दॅट सायकल. दिस इज द ओनली वन फोटो ऑफ दॅट सायकल विच आय यूज टू कम्यूट टू द कॉलेज. खूप सारा डेटा सर्च केल्यानंतर मला हा फोटो मिळाला होता, जस्ट फॉर युअर रेफरन्स. सो हिअर वी टॉक अबाउट लॅटन्सी अँड बेस मॉडेल. सो व्हॉट इज लॅटन्सी अँड व्हॉट इज बेस मॉडेल? सो इन IT वी हेट डिलेज. लाईक तुम्हाला सगळं फास्ट पाहिजे, बरोबर. IT क्षेत्रामध्ये असं नाही की आज एखादी क्वेरी तुम्हाला दिली किंवा आज एखादा प्रोजेक्ट दिला. एव्हरी प्रोजेक्ट हॅज अ फिक्स टाईमलाईन ऑर टाईट शेड्यूल, राईट. म्हणून तर म्हणतात ना की IT मध्ये आहे पण खूप बिझी असतो, खूप रात्रभर काम करतो. इवन yesterday also your team was working here setting this up event while I was traveling from Pune to Karad for 4 hours. After that I spent 4 to 5 hours for my work. तर रात्री 3 वाजता झोपून आज सकाळी परत 6 वाजल्यापासून आपल्या इव्हेंटची सगळी तयारी चालू होती. सो लॅटन्सी यू मीन कधी कधी काय होतं की परिस्थिती तुमच्या फेवरमध्ये नसते. आता त्यावेळी माझ्याकडे बाईक नव्हती, त्यावेळी माझ्याकडे स्मार्टफोन नव्हते, ओके. बट तुमच्यातलं टॅलेंट, तुमच्यातलं जे पोटेन्शियल आहे ते कमी होतं का? तर नाही. वेन आय वॉज पेडलिंग दॅट सायकल फ्रॉम माय होम टू कॉलेज, त्यावेळी माझा जो इंडियन्स बूस्ट झाला, त्यावेळी मला जो वेळ मिळत होता, 1 तास मी सायकल चालवायचो, सकाळी 1 तास, संध्याकाळी सायकल चालवायचो. जो वेळ मिळाला मला, जो अभ्यास कॉलेजमध्ये शिकायचा इंजिनिअरिंगला, तो रिवाईज करण्यासाठी किंवा एक काइंड ऑफ मेडिटेशन 1 तास तुम्हाला तुमच्यासोबत मिळत होता, प्लस माझा खाली व्यायाम पण चालू होता. दॅट बिल्ड्स माय इंडियन्स. सो वेन युअर द लॅटन्सी इज लो, लुक आउट फॉर द वर्क अराउंड्स. तर रोज शक्यच नव्हतं एवढं 12 किलोमीटर जर सायकल चालवली तुम्ही 4 वर्ष, तर माझा तुम्ही तो फोटो बघितला होता ऑलरेडी. 11वीत असताना 10वीत असताना मी कसा, त्याच्यापेक्षा पण अजून जास्त मी कमी झालो असतो वजनाने वगैरे. आणि इट हॅपन लाईक आय टूक 12 सलाईन्स इन माय वेन्स अँड देन लाईक इट वॉज क्रेझी. फॉर 1 month आय वॉज बेड रिडन. आय कांट एबल टू वॉक. पूर्ण परिस्थिती खूप सारी बिघडली होती त्यावेळी. तर तो वेळ मी कसा मग हे केला की नाही, आता उद्या लगेच जाऊन माझ्याकडे पल्सर किंवा एखादी बाईक नव्हती येणार. आय हॅव टू फाइंड अ सोल्युशन. तर नंतर मला कळलं की माझी कॉलेज काय करायचं, जैनापूर ते गाव, नंतर एक जयसिंगपूर नावाचं स्टेशन होतं, रेल्वे स्टेशन, आणि प्लस त्यानंतर माझं कॉलेज. तर मी एक सोल्युशन काय काढलं की माझी सायकल मी घेऊन जयसिंगपूर स्टेशनपर्यंत जात होतो. एक 30-40 मिनिटांमध्ये माझी ती जर्नी कंप्लीट व्हायची, आणि तिथून माझी कॉलेजची बस न्यायला यायची फ्री ऑफ कॉस्ट. दे हॅव टू पिकअप अस फ्रॉम द स्टेशन अँड वी यूज टू गो टू कॉलेज. त्यात माझी 5 मिनिटं झाली होती. तर मी काय केलं, 1 तासाचा डिस्टन्स आणि 12 किलोमीटर्स ऑफ जर्नी आय कट डाऊन टू ओनली 7 to 8 kilometers, राईट. सो यूज युअर ओन इंटेलिजन्स टू फाइंड वर्क अराउंड्स अँड टेक द हेल्प फ्रॉम AI. त्यामुळे AIकडे लगेच जाण्यापेक्षा किंवा तुमची प्रेझेंटेशन बिल्ड करण्याच्या आधी तुम्हाला नक्की काय माहिती आहे, तुम्हाला नक्की काय सांगायचं आहे, त्याच्यावरती पूर्ण फोकस ठेवून मग AIची हेल्प घ्या. दॅट विल बी मोर इम्पॅक्टफुल. आणि दुसरी गोष्ट होती की बेस्ट मॉडेल. तर मी तर मराठी मिडियमचा, राईट. आणि आमची जोक पण चालायची कधी कधी की देर वॉज वन वर्ड, सर्जरी. ओंकार इज स्टिल लाफिंग, आय नो. सो आय यूज टू प्रोनाउन्स दॅट वर्ड सर्जरी ॲज अ शुगरी. So don't know like what is meant by sugary. He was also like he was kid that time. You can see he is in like only 5th or 6th standard, and everybody at home said, "What is sugary? What is sugary?" Then my elder brother came and he saw that book. He said, "It is not sugary. It is surgery. You are pronouncing it wrong." तर पूर्ण 11वी माझी त्या सर्जरीला शुगरी म्हणण्यातच गेली होती. त्यानंतर मी बायोलॉजी सोडून दिलं, फक्त फिजिक्स, केमिस्ट्री, मॅथ्स
IT आणि जिओग्राफी पास. म्हणजे आपल्याला बायोलॉजी नको आहे, आपल्याला टेक्निकल फील्डमध्ये जायचं आहे. हे शुगरी आपल्याला काही जमणार नाही आहे, सोडून देऊया. सो बट हॅव्हिंग सेड दॅट युअर बेस मॉडेल, युअर मराठी लाईक युअर वी आर फ्रॉम मराठी बॅकग्राऊंड, लाईक वी आपण याच मातीतले, आपण इथलेच आहे, सातारा जिल्ह्यातलेच आपण सगळी मुलं आहोत. ठीक आहे, जिथं तुमचं अपलिंग झालं तिथंच माझं पण झालं. हेच रोड होते, हीच सिटी आहे, हेच झाडं झुडपं आहे, तिथंच आपण वाढलेलं आहे. खरं दॅट डज नॉट मीन इट्स लाईक अ बग. हे तुमचा काही दोष नाही आहे की तुम्ही गावाकडे किंवा तुम्ही या मराठी मातीत किंवा मराठी म्हणून जन्मला. आज तोच मराठी म्हणून तुमच्याकडे उभा आहे. 15 वर्षाचा एक्सपिरियन्स घेऊन 3 कंपनीसाठी काम करून एक स्वतःची कंपनी टाकून. ठीक आहे, तर यूज युअर बेस मॉडेल्स, यूज युअर लो लॅटेन्सी टू कन्वर्ट इट टू द हाय लॅटेन्सी. इफिशियन्सी बूस्ट करण्यासाठी तुम्ही त्याचा वापर करू शकता. आणि इट डझंट मॅटर की तुम्हाला मराठी चांगले येतं का पायथन चांगले येतं. तुमची जर पोटेन्शियल असेल, तुम्हाला जर करून दाखवण्याची जर ताकद असेल ना, तर एनिथिंग यू कॅन अचीव. दॅट इज द मॅसेज आय वॉन्ट टू गिव्ह यू ऑल ऑफ यू इन दिस लाईफ. थर्ड थिंग झालं, आता इंजिनिअरिंग पण झालं, म्हणजे 10वी झाली, चांगल्या मार्कने पास झालो, 12वी झाली, इंजिनिअरिंग पण कम्प्लीट केलं. आणि प्राऊड टू से दॅट आय वॉज इन टॉप 5 स्टुडंट वेन आय वॉज स्टडिंग. शिवाजी युनिव्हर्सिटीमध्ये टॉप 5मध्ये होतो. बऱ्याचशा सब्जेक्टमध्ये टॉप केलं होतं. मॅथमॅटिक्स आम्हाला 4 सब्जेक्ट असायचे मॅथमॅटिक्सचे, M1, M2, M3, M4. तर M2, M3, M4मध्ये सलग ते 3 सेमिस्टर मी टॉप केलं होतं. त्यामुळे मॅथ्स सांगतो, बऱ्याच साऱ्या गोष्टी चांगल्या होत्या. तर तुम्हाला असं वाटतं का मी जेव्हा कॅपजिमिनीला जर फ्रेशर म्हणून सुरुवात केली तर मला 2012 लगेच नवीन चांगला जॉब मिळाला असेल? दॅट राईट नाव युअर ॲव्हरेज फ्रेशर सॅलरी इज लाईक स्टार्टिंग फ्रॉम 6 lakhs per annum, right? 6 lakhs and above. And if you are going with a startup, if you are having very good exposure and knowledge about any technology, you will get 10 plus also or 20 plus also. But that time the basic salary of any fresher was 2.4 or 3 lakhs per annum. म्हणजे जवळपास 20 ते 22,000 रुपये तुम्हाला मिळत होते. आय वॉज एक्सपेक्टिंग दॅट की मी टॉपर आहे, मी सगळ्या या पॉसिबिलिटीज ओव्हरकम करून इथपर्यंत पोहोचलेलो आहे, सायकल चालवून इंजिनिअरिंग केलेलं आहे वगैरे वगैरे. बट कसं असतं की नियतीला ते मान्य नसतं की तुम्हाला लगेच सक्सेस द्यावा किंवा तुम्ही लगेच 2.4 किंवा त्यावेळी आमच्यावेळी कसं तर TCS आणि पर्सिस्टंट खूप चांगल्या कंपनी कॅम्पस प्लेसमेंटसाठी यायच्या. मी सकाळी बोलताना एका स्टुडंटसोबत इंटरॅक्ट करत होतो, त्यावेळी त्यांना पण सांगितलं की माझे ॲप्टिट्यूड टेस्टच क्रॅक होत नव्हती. दो आय एम गुड इन मॅथ्स बट आय कॅनॉट एबल टू क्रॅक दोज ॲप्टिट्यूड टेस्ट ऑफ TCS ऑर पर्सिस्टन्स अँड एनिथिंग. ओके, तर ते काय व्हायचं की कंपन्या यायच्या ॲज अ फ्रॉम कॉलेज साईड दे आर प्रोव्हाइडिंग अस व्हेरी गुड कॅम्पस प्लेसमेंट, बट फ्रॉम आवर साईड वी आर फेलिंग. फ्रॉम माय साईड आय वॉज फेलिंग. आय नीड टू लाईक ॲग्री विथ दॅट फेल्युअर. तो त्यानंतर काय आलं की सगळं 2012 साली संपलं होतं की कॉलेजनी पण सपोर्ट द्यायचं बंद केला होता. तर मी एक कराडमध्येच माझी करिअरची तशी सुरुवात 2012 साली कराडमध्ये झाली. एक डार्विन इन्फोटेक नावाची कंपनी होती. दिस इज माय फर्स्ट सॅलरी स्ट्रक्चर. यू कॅन सी द अमाऊंट नेट टेक होम 1,500. Even though I was an engineer, that is this is the screenshot from my. Don't look at here, look at there. I will explain this picture as well. Look at there first. Okay. So when I'm talking about this, like मला चांगलं पॅकेज पाहिजे होतं, मला एक चांगला जॉब पाहिजे होता, मला खूप सारं काही अचीव करायचं होतं. त्या 1,500मध्ये तुम्ही काहीच करू शकत नाही आहे. ठीक आहे, मला बसचा पास पण काढायला म्हणजे 1,000-1,200 रुपये लागायचे. व्हॉट यू कॅन सेव्ह इन दॅट. आणि तुम्ही कशी तुमची घराची परिस्थिती बदलणार आहे त्या एवढ्या लो सॅलरीमध्ये. अगेन दॅट आय नीड टू रीथिंक ऑन दॅट. आय नीड टू फाइंड अ वर्क अराउंड अबाउट दॅट. देन वी ट्रान्सफर टू पुणे अगेन. लाईक जॉब सर्चिंगसाठी आम्ही पुण्याला आलो. तर मी एकटा नव्हतो, आम्ही सगळे होतो असे. The first photo you saw when we with the friends which we reunite, that friends, these are the same folks over here. So 12 years back we are like this, like no one having. This is like we purposefully snap this photo and everybody has it in my group. सगळ्यांकडे हा फोटो आहे. सगळेजण ते बघतात, हसतात आणि पुढे जातात की आपण काय होतं आणि आता काय झालं. ठीक आहे. सो
गुड टाईम विल कम इफ यू यूज युअर बॅड टाईम वाईजली. ओके, तर त्यानंतर काय केलं की यू हॅव टू कॉम्प्यूट युअर इफिशियन्सी. सो लो रॅम सर्वायवल, if you have minimum resources, your brain will work much more stronger than that. So as Sunil sir also said की प्रत्येक वेळी AI कडे जाऊ नका. यूज युअर ओन इंटेलिजन्स. तुम्हाला काय करायचं आहे, तुम्ही कसं यातून बाहेर पडू शकता याचा तुम्ही स्वतः विचार करा. यूज दॅट पॉवर अँड ऑलवेज लाईक डर्टी डेटा. सो तुमच्याकडे जे रिसोर्सेस होतात, तुमच्याकडे जे परिस्थिती तुमच्याकडं निर्माण होते ती ऑलवेज क्लीन नसते. लाईफ इज लाईक अ रोलर कोस्टर, राईट. सगळं काही तुम्हाला सहज मिळेल असं कधीच होणार नाही आहे. तर त्यासाठी त्या दोन गोष्टी जर तुम्ही वर्कआउट केलं तर तुमची ऑटोमॅटिकली इफिशियन्सी वाढून जाईल. सो फर्स्ट थिंग, वर्कआउट ऑन युअर व्हॉइस, वर्कआउट ऑन युअर पर्सनॅलिटी, वर्कआउट ऑन युअर एक्सप्रेशन्स. नेक्स्ट, यूज युअर bad time or critical time to think twice and regenerate yourself to experience the good times as well. And as Steve Jobs rightly said, stay hungry and stay foolish. Okay, कायम तुम्ही जिथून ज्ञान मिळते त्यासाठी तुम्ही तयार राहा. ठीक आहे. मला खूप सारी चुळबुळ ऐकू येते, खूप साऱ्या फेस एक्सप्रेशन दिसतात की त्यांना आता झोप आली, भूक लागली. मला सुद्धा लागली आहे. मी फक्त सकाळी एका ब्लॅक कॉफीवरती काल रात्री 3 वाजता झोपून 3 तासाची झोप घेऊन आज तुमच्या पुढे उभा आहे. तरी पण कसं आहे की आज ही माणसं जे CTO आहेत, आज अजिम सरांनी जे प्रयत्न केलेले आहेत ह्या सगळ्या गोष्टींसाठी, तुमच्या भारतीय देवींनी जे प्रयत्न केलेले ते कुठंतरी सार्थकी लागण्यासाठी तुम्ही अटेंटिव्ह असणं खूप महत्त्वाचं आहे. आम्ही रोज इथे येणार नाही, आम्ही रोज तुम्हाला तुमच्याशी हे बोलणार नाही की हे करा, ते करा, ते करा. दे आर हिअर, लाईक युअर टीचर्स आर हिअर, दे आर लाईक आय सॉ युअर वेबसाईट, ऑल आर PhD होल्डर्स. आमच्या वेळी तसं पण नव्हतं. युअर टीचिंग स्टाफ इज रिअली गुड. ओके, सो इफ अ PhD होल्डर टीचर इज टीचिंग यू, देर मस्ट बी सम सेन्स, राईट. तर तुम्ही त्यांचं ऐका. दे नो वॉट टू टीच यू, दे नो हाऊ टू ग्रो यू. सो जस्ट लिसन टू देम अँड ग्रो, दॅट्स इट. ओके, ॲग्री आहे सगळे? ओके, चलो. सो लेट्स डू वन ॲक्टिव्हिटी. ओके, मला 5 लोक पाहिजेत पटकन. या इथून आणि मधून पटकन या, पटकन. प्लीज डू नॉट वेस्ट द टाईम. या रे, कोणी पण या, काय करायचं नाही आपल्याला, खेळ खेळायचा आहे फक्त. ये कम, स्वीप, स्टँड अप ओव्हर देअर. 5 लोक पाहिजेत माझ्याकडे. 200 मुलं आहेत, 5 लोक येऊ शकत नाही तुम्ही. तर स्टेजपर्यंत कसं पोहोचणार? या लवकर. उठ उठ उठ, ये इथे. फक्त समोर आहे. उठ तू. यू नो नो यू 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 तुला बोलतोय. तुला नाही तिला बोलतोय मी. तुलाच बोलतोय. ये सगळ्यांनी 5 लोकांनी इथे उभं राहा पटकन. घे चल. ये तू पण ये. नो नो, लुक ॲट मी. हां, कोऑर्डिनेटर्स कुठं आहे? मी इथं फिरत होती. शुभ बता, शांत बसा, झोपा काढू नका. बोलवा त्यांना. चला, 2 अजून पण येत फक्त. कोणीही या रे. टीचर्स पण चालतील मला. 2 जण या फक्त. हां, लुक ॲट मी. जस्ट गो बियॉन्ड दॅट. एका लाईनमध्ये उभं राहा, सेम डिस्टन्सवर. पाठीमागं जा. पटकन. या राजनंदिनी, या. सो व्हॉट आय विल डू, 1 2 3 4. तुमची जरा झोप गेली पाहिजे. हे पेपर घ्या. सेम डिस्टन्सवरती उभं असतो. पेपर चेक करा की तुमचा पेपर सेम आहे ना, साईजचा. काय लिहिलं नाही त्याच्यावरती. कलर सेम आहे ना, सगळं सेम आहे. तुमच्याकडे 10 सेकंद आहे. असं काहीतरी करत तो पेपर स्टेजकडे आला पाहिजे. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. नेक्स्ट 5 लोक पटकन या. सो डू वॉन्ट टू प्ले? 5 लोक पटकन. दुसरे 5. सेकंड राऊंड. अरे या लवकर. Just count it and distribute it all.
सेम डिस्टन्स पाठीमागं. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Give it to your coordinator and distribute among yourselves. Take it. There are some chocolates for you. मी काय सांगितलं होतं तुम्हाला? आय काय करायचं होतं आपल्याला एक ॲक्टिव्हिटी करायची होती 10 सेकंदात. तुम्हाला तो पेपर त्या स्टेजपर्यंत पोहोचवायचा होता. बस मी तुम्हाला सांगितलं गोळा बनवा किंवा विमान बनवा, असं काही इन्स्ट्रक्शन दिली होती का? मी काय फक्त सांगितलं तुम्हाला तो पेपर स्टेजपर्यंत आला पाहिजे. व्हॉट शुड बी युअर एक्सपेक्टेड आउटपुट इन दिस ॲक्टिव्हिटी? फक्त तुम्हाला चालू माझ्या हातात पेपर द्यायचा होता. तुमचं लक्ष कुणाकडे होतं? माझ्याकडे स्लाईडकडे होतं. दॅट इज द फेक स्लाइड आय पुट ओव्हर हिअर पर्पजफुली. दॅट इज द फेक स्लाइड. दिस स्लाइड याचा काही एक संबंध नाही प्रेझेंटेशनशी. फक्त एक लाईन ऑब्जेक्ट ॲक्टिव्हिटी नाव लिहिलं ठळक अक्षरामध्ये 2 चित्र लावले मी. सो द फर्स्ट राऊंड वॉज सुपरवाइज लर्निंग. मी तुम्हाला इन्स्ट्रक्शन दिली होती राईट. तुम्ही एखादा प्रॉम्प्ट देता यायला की डू दिस फॉर मी, डू दिस फॉर दॅट, लाईक दॅट. तसा मी तुम्हाला प्रॉम्प्ट दिला आणि त्याला टाईम बाउंड दिला. मी टाईम असा सांगितला की 10 सेकंदात ते सगळं झालं पाहिजे. त्यामुळे तुमचं काय झालं, तुमची थिंकिंग ॲबिलिटीज बंद झाली. तुमचं एक तर लक्ष स्लाईडकडे होतं. उठून येताना तुम्ही आधीच ऑलरेडी बघितलं होतं की आपल्याला असलं काहीतरी करायचं आहे राईट. प्लस माझ्या इन्स्ट्रक्शनकडे तुमचं लक्ष नव्हतं. मी काय बोलतोय, माझा एक वर्ड तुमच्या लक्षात यायला पाहिजे होता, तो नाही आला. तुम्हाला फक्त एक माहिती होतं की पटकन विमान झालं पाहिजे. हे विमान कुठेतरी एक जेट तयार केलं आहे त्यांनी आणि बाकीचं त्यांनी गोळीच मारलेत करून. ठीक आहे. तर ते होतं सुपरवाइज लर्निंग. सेकंडमध्ये काय आलं, सेकंड राऊंडमध्ये मी डायरेक्ट काउंटर चालू केलं होतं राईट. तुमच्या ग्रुपमध्ये मला विचारलं का ते इथं का ठेवलं आहे म्हणून? वाय आय पुट दॅट बॅग ओव्हर हिअर? नो बडी हॅज राईट. वाय? पहिली स्लाईड काय होती माझी, बोलायला शिका, एक्सप्रेस व्हायला शिका. पहिल्या स्लाईडमध्ये सांगितलेलं विसरते 4थ्या स्लाईडपर्यंत. काय करणार आहे तुम्ही? बरोबर. आस्क क्वेश्चन्स. ठीक आहे. व्हॉट यू डीड इन द सेकंड राऊंड वॉज झिरो शॉट प्रॉम्प्टिंग. विदाउट एनी गायडन्स, विदाउट एनी मोर डिटेल्स, यू जस्ट स्टार्टेड दॅट ॲक्टिव्हिटी बिकॉज द क्लॉक वॉज टिकिंग राईट. बरोबर. असं तुमच्या माइंडशी खेळलं जातं आहे आजकाल. कळालं का? त्यामुळं बी कॉन्शियस व्हॉट यू आर डुईंग अबाउट. रिक्वायरमेंट काय ती बघा. आय टी क्षेत्रात एक जरी स्टेटमेंट ऑफ वर्कमध्ये एक जरी लाईन चेंज झाली ना, पूर्ण प्रोजेक्ट तुमचं म्हणजे बदलू शकतो राईट. आमच्या मी जेव्हा ऑस्ट्रेलियन क्लायंट्सवर काम करत होतो सकाळी, म्हणजे माझी शिफ्ट सकाळी 3:30ला चालू व्हायची, जे की मी दुपारी 11-12पर्यंत माझं काम चालायचं ऑस्ट्रेलियन. मी न्यूझीलंडला असताना तिथले आवर्स चालू होते. कारण मी जेव्हा इंडियामध्ये आलो कोविड टाईम्समध्ये, ओंकार नोज दॅट, सकाळी पहाटे जेव्हा सगळी झोपलेली असेल तेव्हा माझं काम चालू व्हायचं. बिकॉज ऑफ दॅट वन लाईन वी पुट इन दॅट SOW, स्टेटमेंट ऑफ वर्क. वेन प्रोजेक्ट वॉज साईन्ड, वी आस्क देम लाईक इन एनी कंडिशन वी विल सपोर्ट यू ड्युरिंग युअर आवर्स. ओके. आम्हाला माहीत नव्हती की कोविड येणार आहे आणि आम्हाला परत माघारी यावं लागणार आहे इंडियामध्ये. समजलं? माझी लाईफ 3.5-4 वर्ष इम्पॅक्ट झाली होती ह्या एका स्टेटमेंटमुळं. बिकॉज दॅट SOW वॉज रॉंगली इंटरप्रिटेड ओव्हर देअर. कळालं का? एखादं म्हणजे एका टीमचं, एका पूर्ण युनिटचं शेड्यूल बिघडू शकतं जर तुम्ही इन्स्ट्रक्शनकडे लक्ष नाही दिलं तर. सो वेन एव्हर यू आस्क एनिथिंग टू AI, एनी AI टूल, जस्ट बी कॉन्शियस व्हॉट यू आर आस्किंग, व्हाय यू आर आस्किंग, आणि यातून आपल्याला काय मिळणार आहे. ठीक आहे. सर यू शूड फिल्टर द हॅल्युसिनेशन राईट. सो ती जी स्लाईड मी ठेवली होती ती जस्ट अ नॉईज होती, एक गोंधळ करण्यासाठी किंवा तुम्हाला एक भ्रम करण्यासाठी ते केलं होतं. तर इन AI ऑल्सो की तुम्हाला असं कोणतंही तुम्ही म्हणाल की मी AIला खूप सारं विचारतो, मी AI सोबत खूप काम करतो, मी एजंट सोबत इंटरॅक्ट करतो, खरं मला एक्सपेक्टेड आउटपुट मिळत नाहीत राईट. ते एक्सपेक्टेड आउटपुट का मिळत नाहीत? कारण की तुमचे प्रॉम्प्ट चुकतात किंवा तुमचे इन्स्ट्रक्शन चुकते. रोबोटला इमोशनल क्वेश्चन काहीच नाही आहे. तुम्ही जे सांगाल तेच तुम्हाला रोबोट देईल. सेम AI म्हणजे असं कुठली व्यक्ती नाही की तुम्हाला समजून घेईल. हां, प्रत्येक वेळी AI तुमची बायकोच नसते.
पुण्याला गेला आहे कधी येईल काय, कराडला गेला आहे कधी येईल काय माहिती वगैरे. सकाळपासून एक म्हणून नाही आला अजूनपर्यंत, तर बघू. तर स्टोरी टेलिंग विथ AI इज अबाउट नोईंग व्हॉट टू इग्नोर सो दॅट द ट्रूथ रिचेस टू द ऑडियन्स. आय वॉज द ऑडियन्स राईट. माझा असं होता की तो पेपर फक्त माझ्या हातात आणून द्या, तुम्ही खूप सारं दुनियावरचं काय 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 विमानं गोळीबिळी करून मारले मला, किंवा आपल्या सरांना सुद्धा, का कुठला राग काढत नव्हता ना फक्त. ठीक आहे. सो इम्पॅक्टफुल स्टोरी टेलिंग इज अबाउट इग्नोरिंग दॅट द नॉईज लाईक दॅट स्लाईड अँड फोकसिंग ऑन द गोल, दॅट स्टेज वॉज युअर गोल. ओके. सो इनोव्हेशन तेव्हाच घडतं जेव्हा तुम्ही एखाद्या इन्स्ट्रक्शन्स सोडून किंवा मतलब ज्या ट्रॅडिशनल वे ऑफ डुईंग द वर्क ते सोडून तुम्ही स्वतःचं इनोव्हेशन आणू शकता. ठीक आहे. सो दिस इज द लास्ट स्लाईड. ओके, लाईक सेकंड लास्ट स्लाईड. कोणत्या फोटोमध्ये तुम्हाला मी खुश वाटते? या आणि त्या खूप पैसे तिथं बसल्यानंतर खूप कुठं खुश वाटतं तुम्हाला? सगळ्यांना तेच वाटतं ना, कारण की हे फोटो असे कुठे दिले की आता हे तुम्हाला दिसत असेल माहिती नाही. दिस इज द डेव्हिल सर्किट रेस. वेन आय शेअर्ड माय प्रोफाईल विथ दिस गाईज टू हॅव दॅट एडी, आय मस्ट से डेव्हिल सर्किट अशी एक एशियातली टफेस्ट रेस आहे, जी ऑब्स्टिकल रेस आहे. तुम्हाला जे कमांडो ट्रेनिंग जे असतं त्या टाईपमध्ये तुम्हाला ऑब्स्टिकल क्रॉस करत 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 पाण्यातून मग दोरीवरून बऱ्याच साऱ्या गोष्टी असतात. तुम्ही जर पुण्याला कधी आलात किंवा you can search on the internet Davis Circuit Race, you can register for them and you can participate in that. It's just like a marathon but with obstacles. So I do participate in those Davis Circuit races since last like 2-3 years and I used to do that. मला एक तर मी डाएट फॉलो करतो, मी काय म्हणतात त्याला की मला खूप फिजिकल फिटनेसवरती मला खूप भर असतो. किंवा तुम्हाला जर 15-15 तास काम करायचं असेल, तुम्हाला जर 12-12 तास स्टीम प्लस असेल, बसण्याचं इंडियन्स हवा असेल, जसं की माझी इंजिनिअरिंगला माझ्या सायकलिंगपासून सुरुवात केली होती. आय जस्ट फॉलोड दॅट की तुम्ही तुमच्या तब्येतीची पण काळजी घेतली पाहिजे, तुम्ही तुमचं बेस्ट व्हर्जन असलं पाहिजे दररोज. असं नाही की मी काल 3 वाजता झोपलो तर मी आता इथं झोपा काढतोय किंवा बाकींच्या स्पीकर्सना ऐकतच नाही, अजून पण आळस देते पण. तर आय नो लाईक इट्स बिट लेट टुडे. खरं तुम्हाला जेव्हा तिथून ज्ञान मिळत असेल किंवा तुम्ही एखाद्या जर बेस्ट प्लेसमध्ये असाल, एका बेस्ट रूममध्ये तुम्ही जर असाल, खूप जणांना नाही मिळत हे सद्भाग्य की CTO सर किंवा सुनील सर किंवा आमचे वैभव मोरे सर आहेत यांच्याशी इंटरॅक्ट करायला. तर तुम्ही त्या वेळेचा खूप मोठा सदुपयोग करून घेतला पाहिजे. दॅट वॉज द थिंग. सो यू हॅव टू कंटिन्यूअस फाईन ट्यून युअर सेल्फ. जर तुम्ही जे बघितले असतील की मी इतके सर्टिफिकेशन केले किंवा दररोज म्हणजे डे टू डे लाईफमध्ये मला पण खूप चॅलेंजेस असतात. आय हॅव टू डिलिव्हर द प्रोजेक्ट्स, आय हॅव टू बिल्ड द प्रॅक्टिस. फ्रॉम द नेक्स्ट वीक आय एम कंडक्टिंग AI वर्कशॉप इन HCL Tech where 200+ ELTPs like entry level programs will be there. त्याचं प्रिपरेशन आहे, खूप साऱ्या गोष्टी येतात. बट तुम्ही तुमचा शेड्यूल किंवा तुम्ही तुमचं एक दिनक्रम ठरवा की त्याच्यामुळे काही असू दे, 30 minutes ऑफ योगा, 30 minutes ऑफ मेडिटेशन, गुड डाएट, अवॉइड एनी सबस्टन्सेस. आजकाल खूप चालू झालं आहे. तुम्ही जेनझीज लोक स्मार्ट तर आहातच, खरं तब्येतीची खरंच बाळांना खूप काळजी घ्या. 15 वर्ष IT क्षेत्रात असूनसुद्धा मी अजून आय एम अ टी टोटलर. आय हॅवंट टच अल्कोहोल और आय हॅवंट डीड एनिथिंग रॉंग विथ माय हेल्थ. सो तुम्ही जर नीट राहिला तर तुमचं डोकं शांत राहील, तुमचं डोकं नीट राहील आणि तुम्ही ग्रो करू शकता. ओके. सो ऑलवेज आपल्या फोनमध्ये कसे अपडेट्स येतात, सो ऑलवेज यू हॅव टू अपडेट युअर सेल्फ. ओके. की मी 12 वर्षापूर्वी एक टेक्नॉलॉजी शिकलो, तीच मी पुढे कॅरी फॉरवर्ड करतो आहे. आणि तसंच मला माझ्या मागचीच जे प्रेझेंटेशन झालं सुनील सरांचं खूप डिस्क्रिप्टिव्ह वाटलं मला की त्यांनी ते डायरेक्ट सांगितलं की A आणि B इंजिनियर होते. एकाने फक्त इन्स्ट्रक्शन फॉलो केलं, दुसऱ्याने इनोव्हेशन केलं. A जो होता तो 3 वर्षात रिप्लेस झाला, दुसरा जो B होता तो 30 वर्ष टिकला इंडस्ट्रीमध्ये. राईट. सेम थिंग विल हॅपन ओव्हर हिअर. इफ यू नॉट फाईन ट्यून युअर सेल्फ यू विल बी गेट थ्रोन आउट फ्रॉम द मार्केट. सो अँड ऑलवेज हॅव दॅट ह्युमन लेअर इन बिटवीन यू. सो कितीही तुम्ही केबिनमध्ये बसा, कितीही ऑनसाईटला जा, कितीही मोठी मोठी कामं करा, बट वॉट बिल्ड्स यू, वॉट क्रिएट्स यू
make that happen with your life every day. So एक इन्फॉर्मेशनल स्लाईड आहे की तुम्ही तुमचं करिअर कसं बिल्ड करू शकता किंवा तुमची स्टोरी इम्पॅक्ट होण्यासाठी, तुमचं प्रेझेंटेशन नीट होण्यासाठी किंवा तुमच्या करिअर ऑप्शनमध्ये काय असू शकतात. तर एनीबडी नो अबाउट वाईब कोडिंग. ओके, की तुम्हाला हे वाटतं हे करून बघावं आणि तुम्ही ते चॅटला किंवा क्लाउड कोडवरती टाकता किंवा तुम्ही यू स्टार्ट प्रोग्रामिंग ऑन दॅट प्रोजेक्ट. सो दिस इज वाईब कोडिंग. So that become a profession now. So you become professional vibe coders, okay? And you will be having like fresher package up to 9 lakhs. Then as and when you grow in that technology, you will get also good packages over there. AI sales and AI marketing, you know already, like it is growing very fast now. You can use these tools to automate the things. You can use tools for forecasting. You can use the tools to make presentations. You can use the tools to actually write the code. But with the help of your human intelligence. So these are some basic, these everyone knows, like Gemini, Copilot, Claude, ChatGPT. These are some basic tools I can suggest to you, okay, to work upon. So ask questions to AI, ask question to any experts around you and get that knowledge. In 2026, the most powerful coding language is English. So work on that. तुम्ही कम्युनिकेशन स्किल्स तुमचे बिल्ड करा. तो ए आयला काय विचारायचं आहे हे जर तुमची थॉट प्रोसेस जर बिल्ड झाली तर तुम्ही ॲटोमॅटिकली त्याच्याकडून पाहिजे तसं आउटपुट्स घेऊ शकता. तुमची इफिशियन्सी वाढू शकते. सो वर्क ऑन दॅट. ओके, काय होतं कधी कधी तुमच्या सगळ्या अचिव्हमेंट्स असतात, तुम्ही खूप काम करत असता. मी जसं सांगितलं की रिसोर्सेस तुमच्या अगेन्स्ट असतात किंवा लो रिसोर्सेस तुम्ही काम करता आणि परिस्थिती बदलण्याची खूप इच्छा असते कारण ती बदलतच नाही आणि खूप साऱ्या गोष्टी घडत असतात. खरं एक लेवल ऑफ सॅटिस्फॅक्शन तेव्हा मिळते की तुम्ही त्या दिवशी किंवा त्या एखाद्या वेळी तुम्ही त्या ठिकाणी जाऊन पोहोचता. जेव्हा मी स्ट्रगल करत होतो की मला अजून इव्हेंट्समध्ये सिलेक्शन होत नव्हतं, नंतर मी सिलेक्ट केलं. सिलेक्ट झाल्यानंतर मी PG डॅक केलं, पोस्ट ग्रॅज्युएट डिप्लोमा इन ॲडव्हान्स कम्प्युटिंग फ्रॉम सिलेक्ट. देन आय प्लेस इन कॅपजेमिनी अँड स्टार्टेड माय करिअर. तर मला काय वाटत होतं की आपल्या मुलांसाठी, आपल्या भागातल्या लोकांसाठी जे मी प्रॉब्लेम फेस केले माझ्या लहानपणापासून इथपर्यंत पोहोचण्यासाठी, ते तुमचे प्रॉब्लेम्स मी डायरेक्टली कमी नाही करू शकत. खरं तुम्हाला हेल्प करू शकतो की ते कसे ओव्हरकम करायचे. त्यासाठी मी आज इथं आलो होतो. आणि वन ऑफ माय बिगेस्ट अचिव्हमेंट की एक मसूरमधला मुलगा, एक कराडसारख्या तालुक्यातील एक छोट्याशा गावातला मुलगा आज एक न्यूझीलंड किंवा एक हाफ ऑफ द वर्ल्ड फिरून आला. तर त्यावेळी ज्यावेळी मी मला क्रिटिसाइज केलं किंवा क्रिटिसाइज होता तुम्ही तुमच्या परिस्थितीने की जस्ट टेल देम यू आर जस्ट डीलिंग विथ द पुअर डेटा, नॉट द बॅड डेटा, राईट? सो यू कॅन इम्प्रूव्ह अँड देन विथ द राईट प्रॉम्प्ट मीन्स राईट नॉलेज, राईट मेंटर्स, राईट एक्सपर्ट्स, राईट थॉट प्रोसेस, यू कॅन अचीव एनिथिंग. त्यामुळं मसूरसारख्या किंवा जंगलगिरीसारख्या एखाद्या खेडेगावातला किंवा गावातला मुलगा त्या ठिकाणी पण पोहोचू शकतो. हे चित्र कुठलं आहे मला एक्सप्लेन करावं. यू कॅन सी चितळेबंधूंच्या भाकरवाड्या, एक पाण्याची बाटली, एक कॅमेरा आणि एक बॅग, राईट? ही पृथ्वीवरचा सगळ्यात शेवटचा रोड आहे. ओके, न्यूझीलंडमध्ये अशी एक जागा आहे रेड रॉक्स म्हणून. इट इज द लास्ट वॉकेबल रोड ऑन द अर्थ. याच्या पुढे जर तुम्ही समुद्राच्या पलीकडे अंटार्क्टिका दक्षिण ध्रुव आहे आपल्या पृथ्वीचा. एक गावातला मुलगा विथ लो रिसोर्सेस, नथिंग इन इट, ही कॅन रीच आउट टू दॅट प्लेस ड्यू टू द नॉलेज, ड्यू टू द राईट प्रॉम्प्ट, ड्यू टू द राईट ॲटिट्यूड टुवर्ड्स द लाईफ. करेक्ट? सो यू ऑल हॅव दॅट पोटेन्शियल, यू जस्ट नीड टू वर्क ऑन दॅट, राईट? अँड मला धनश्री DSP या कॉन्टेस्टची कळालं होतं की सर आम्हीच खूप पळतोय, 10-15 जण खूप पळतोय. बाकीच्या लोकांना बघा ना आता पण उभं राहायला लागते, अरे शांत बसा, अरे लक्ष द्या वगैरे सांगत बसायला लागतं वगैरे. तर इट्स नॉट अबाउट लाईक की मी मला 200 लोक ऐकतात का 20 लोक ऐकतात का 2 लोक ऐकतात. इफ माय टुडेज बेस्ट लेक्चर इम्पॅक्ट एनी वन ऑफ युअर स्टुडंट ऑर आणि तो माझा ऐकून जर ग्रो झाला किंवा त्यांनी जर सिरियसली काहीतरी गोष्टी करायला घेतल्या तरी पण मी जिंकलो असं म्हणता येईल, राईट? तर जे तुमच्या पाठीमागं बोलतात, जे तुम्हाला क्रिटिसाइज करतात और की तुम्हाला
काही गोष्टी नको असतात या आयुष्यात नको घडायला, तर त्यांना जस्ट इग्नोर करा, मूव ऑन करा. बिल्ड युअर बॅक सो स्ट्रॉंग की त्यांच्या कुठल्या बोलण्याचा तुम्हाला फरकच नाही पडला पाहिजे. दॅट्स फ्रॉम माय साइड. दिस इज चैतन्य फ्रॉम यू. थँक यू. फर्स्ट स्लाइड होती because माझं वजन almost 40 किलो असेल किंवा 38 around. You saw that photo, right? With ओमकार. आज ओमकार पण खूप हँडसम झाला आहे. You saw my back over there. Fitness pro. All good. Thank you very much, guys. That's it. Your session beautifully illustrated how artificial intelligence can enhance creativity, personalize narratives, and transform the way stories are created and communicated. The way you connected technology with human emotion and creativity was truly inspiring. Thank you, sir. It is our privilege to welcome Honorable Mr. YMIMKarad, Delivery Manager at IBM India. It is a matter of great pride and joy for us to welcome one of us, our own, back to this munch. Our next guest is not just an accomplished professional, but also a proud alumnus of our institution, who once walked the same corridors and sat where you are today. Their journey stands as an inspiration to all of us, reflecting dedication, growth, and success. Sir, the stage is yours. Honorable Mr. YMIMKarad currently serves as a Senior Technical Project Manager at IBM India, bringing over 20 years of rich experience in leading enterprise-scale technology programs. Over the years, he has successfully managed end-to-end project life cycles, working with large cross-functional teams and delivering complex solutions within time, budget, and quality frameworks aligned with agile and safe practices. He has contributed to reputed organizations including Capgemini and ADOS, where he handled critical projects, led distributed teams, and ensured consistent delivery of business value. Spans project and portfolio management, stakeholder engagement, solution architecture, and modern technologies including Microsoft Stack, Azure Cloud, DevOps, and data-driven systems. He is also actively upskilling in emerging areas like generative AI and AI governance, reflecting his commitment to continuous learning and evolving industry needs. Known for his leadership, structured approach, and mentoring capabilities, he has guided teams, improved delivery efficiency, and contributed to organizational growth. Recognized with multiple awards for excellence and client impact, YMIMKarad continues to contribute with dedication, professionalism, and a strong focus on delivering meaningful outcomes. We welcome you, sir, to National IT Symposium 2.0. Good afternoon, everyone. आवाज येतो सगळ्यांना? Yes or no? Yes. Backbenchers. आवाज येतोय? मला माईक लागत नाही, माझा आवाज तेवढा मोठा आहे. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थँक्स अजिम सर, थँक्स टू पाटील सर आणि सगळ्या स्टाफना मी थँक्स म्हणतो की मला बोलवलं इकडे. माझ्या बिझी शेड्यूलमध्ये तुम्ही बोलवलं म्हणून मी आलो. मी लगेच हो म्हटलं, शीतल मॅडमना मी लगेच म्हटलं मी येतोय. मी काल ट्राय करून आलो इकडे आणि मी सांगितलं की मला AIवर बोलायचं आहे, तुमच्याबद्दल बोलायचं, तुमच्यासाठी आलो मी इकडे. तर तुमचा रिस्पॉन्स पाहिजे. तुमचा रिस्पॉन्स नसेल तर काही उपयोग नाही. बरोबर आहे? इकडे मी झोपलेले बघितले काही जण. तुम्ही मोबाईल बंद ठेवा, खिशात ठेवा, नाही तर कुठे ठेवा, सायलेंट करा मोबाईल. डू इट वन. बंद करा मोबाईल, सायलेंटवर ठेवा, खिशात ठेवा, हातात नका ठेवू. हातात नको आहे असा नाही घ्यायचा हातात. सगळ्यांचे दोन्ही हात एम्प्टी आहेत. गुड आफ्टरनून एव्हरीवन. स्टील नो. गुड आफ्टरनून एव्हरीवन.
गुड गुड गुड. डू नॉट कॉल मी सर. ॲक्च्युली IBM मध्ये सर वगैरे हा कल्चर नाही आहे आमच्याकडे. कॉल मी वैभव. यू डायरेक्टली कॉल मी माय नेम. ॲक्च्युली आमच्याकडे कल्चर नाही, सर नाही म्हणत. मॅडम नवीन जेनजी जरी जॉईन झाले तर आम्ही सर नाही म्हणत, वैभव कॉल करतात. डू नॉट कॉल मी सर. सर मुळे काय म्हणतो तर मराठीमध्ये आपण शिवी दिल्यासारखे होते. सर, डू नॉट कॉल मी सर. ओके, कॉल मी वैभव, नेम से बोलो. ठीक आहे. नाव स्टार्ट. अजून एकदा मला असं वाटतं की काहीतरी झोपलेले आहेत, त्यांना ॲजेंटिक हे आहे. आता जे पुढचा सब्जेक्ट आहे, सब्जेक्ट काय आहे माहीत आहे तुम्हाला? सब्जेक्ट मी काय घेणार आहे माहीत आहे? इटनरी तुमच्यावर शेअर नाही केली. काय सब्जेक्ट आहे तुम्ही बघितली इटनरी? माझा फोटो लावलाय बाहेर. काय लावलाय माहिती आहे का तुम्हाला? कशासाठी लावलाय? काय काय सब्जेक्ट आहे? कोणी एक जण सांगेल मला काय सब्जेक्ट आहे? ऑर्गनायझर कमिटी. तुम्ही सांगितलं नाही? सांगितलंय. ओके, विसरला तुम्ही? ओके ओके. लेट मी कशाचा पासवर्ड आहे? स्क्रीन येत नाही. ओके. हे कुणाला आवडेल की एजंट ॲज अ गर्लफ्रेंड म्हणून किंवा बॉयफ्रेंड म्हणून जर तुमचं सगळी गोष्ट ऐकेल असा एजंट तुम्हाला आवडेल? हो किंवा नाही? आवाज येत नाही. आवडेल ना? जे तो तुमचं सगळं काम ऐकेल, सगळं तुम्ही म्हणाल तसं ऐकेल. आता तुम्ही तसं करताय. कुठले कुठले ॲप्लिकेशन तुम्ही AI रिलेटेड वापरतात आता सध्या तुमच्या मोबाईलवर? गिव्ह मी वन एक्झाम्पल. चॅट जीपीटीचं कन्व्हर्जन व्हॉट्सअप सारखे आहे ते नका. त्याच्यानंतर दुसरे कुठले वापरता तुम्ही डेली लाईफमध्ये वापरता? अलेक्सा वापरता? अलेक्सा, नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाय का स्पॉटिफाय? हा, आवाज येतोय येतोय येतोय. मी जाणून बुजून बघू काय म्हणतोय. माझं इंग्लिश चुकीचं आहे का तुमचं चुकीचं आहे ते बघूया आपण. ठीक आहे. लेट्स गो विथ Gaana.com. Hey, have you searched right if this application is Indian application or outside India? No. अरे तुमच्याकडे चॅट जीपीटी आहे. तुम्ही कधी असा विचार केला की मला हे ॲप्लिकेशन काय आहेत, काय करतात हे विचार केला? नेटफ्लिक्स, तुम्ही एक मूवी चालू केला की नेटफ्लिक्स काय करतं माहिती आहे का? तुम्हाला तुमच्या फेवरेट मूवीज लिस्टमध्ये आणून ठेवतं. कसं ठेवतं? काय कळतं त्यांना? हां, कुठला अल्गोरिथम? यू डोंट नो. दॅट इज द AI. बॅकग्राऊंडला तुमचा डेटा रीड होतोय, बिहेवियर रीड होतोय. गुगल मॅप कोणी कोणी वापरले? हात वर करा. कोणी कोणी वापरले रिअली? गुगल मॅप कोणी कोणी वापरले? ज्यांनी वापरलं नसेल, नाही कोणी कोणी वापरले? सगळ्यांनी वापरलंय? ओके, ज्यांनी वापरलं नाही त्यांनी मला हात वर करा. ज्यांनी वापरलं नाही गुगल मॅप त्यांनी हात वर करा. नो वन, राईट? तुम्हाला माहिती आहे मी ट्रॅफिकला सकाळी ऑफिसला जायच्या वेळेला मी गुगल मॅप बघतो, माझा रूट सेट करतो आणि मी बघतो की कुठले कुठले कलर्स असतात गुगल मॅपवर. माहिती आहे तुम्हाला रूटला? व्हॉट इज कॉल्ड एज ग्रीन? ग्रीन मीन्स हे माईक द्या रे कोणाला तरी. ग्रीन मीन्स आवाज येत नाही. ट्रॅफिक सिग्नलचं मी विचारत नाही आहे. गुगल मॅपमध्ये ग्रीन म्हणजे काय? येलो मीन्स क्या? और रेड मीन्स क्या? रेड ब्राउन. You guys are just using the things actually. You are not going to understand that application. You should start understanding those applications. Then you are survivable in the industry. Else not. तुम्हाला यूज केसेस काय करायचे ते माहित नसेल
नाही टिकू शकणार या मार्केटमध्ये, या एआयच्या वर्ल्डमध्ये नाही टिकू शकणार. तुम्हाला काय करायचंय? ह्युमन इन द लूप. द वर्ड कॉल आहे ह्युमन इन द लूप. लूपमध्ये आहे. एखादं एक्झाम्पल घ्या तुम्ही. सर्व्हिस, तुम्हाला कॉल सेंटर, तुम्ही कॉल सेंटरला कॉल करता कधी? कुणीच नाही करत कुठल्याच प्रॉब्लेमसाठी. करता ना? येस ऑर नो? कॉल करता, राईट? कॉल केल्यानंतर काय होतं? लेडी बोलते किंवा जेंट्स बोलतो, कोणीतरी बोलतो ना, ये दबाव, वो दबाव, 9 दबाव, 4 दबाव, 3 दबाव, राइट? दिस इज कॉल्ड, क्या है वो? एक गाइडेड एप्लीकेशन है, राइट? उनके पास वो गाइडेड प्रोग्राम है. वहां पे कोई लेडी नहीं बैठती, उसका आवाज सेट किया हुआ है. मैं दिखाता हूँ यहाँ पे. दैट लाइक अ एजेंट है. ये सिस्टम पहले भी थी, एआई बहुत पहले आया हुआ है. इट्स बूम नाउ. अगर इस एरा में आप नहीं घुसोगे तो आपको कुछ नहीं पता चलेगा. लेकिन इसके लिए आपको यूज केसेस क्या है वो पता होनी चाहिए. नेटफ्लिक्स क्यों आपकी फेवरेट मूवीज नीचे लिस्ट में दिखाता है, कैसे दिखाता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू नॉट थिंक ऑन दैट लेवल, आप एमसीए बीसीए करने में कुछ प्रॉब्लम, आप जॉब मिलेगा ही नहीं आपको. मैं आपको क्लियरली बोलता हूँ. अभी ये मार्केट में चल रहा है कि एआई जॉब खाएगा. क्यों खाएगा? जिनको स्टडी नहीं करना है उनका जॉब खाएगा. I have been in IT industry 21 years now. Recently, since from last 8 months, I am completing one of the program from IIT Madras for agentic AI. I am putting my efforts on Saturday, Sunday for 3 hours each day, Saturday and Sunday, and completing that program. Why? Because I need to stay in market. मुझे अपना जितना पगार मिल रहा है, बाहर जाके मेरा खर्चा भी उतना है, तो मैं सर्वाइव कैसे करूँगा? लोग बोल रहे कि एआई आने से जॉब जाने वाले हुए. ये फॉल्स है. एआई आने से जॉब नहीं जाने वाला, ये एरा चेंज होने वाला है. ऐसे रिसेशंस बहुत आए. Y2K प्रॉब्लम पता है आपको? Y2K प्रॉब्लम किसको पता है? आप 2000 के बाद के लोग हैं. यू डोंट नो द Y2K प्रॉब्लम. जस्ट गो एंड सर्च फॉर Y2K प्रॉब्लम. Then you can understand what is the panic situation was there in that time in 2000. कैलेंडर में 2000 था ही नहीं, कंप्यूटर में दिखता नहीं था, तो वो रिजॉल्व कैसे किया लोगों ने? दैट इज कॉल्ड एज Y2K प्रॉब्लम. 2000 आने वाला है तब लोगों को पता चला कि ये Y2K प्रॉब्लम आया है. दिट इज अ फैक्ट. आप सर्च करो, उसके बारे में आपको डिटेलिंग मिलेगा. ओके. तो नाउ मैंने मेरी गर्लफ्रेंड लाई है. गर्लफ्रेंड नहीं है बोल सकता. मेरी वाइफ फोन करके मुझे बोलेगी यार गर्लफ्रेंड कैसे आ गई. मेरे पास एक प्रेजेंटर है, को प्रेजेंटर है. आई नीड टू शो दैट देयर इज सम टेक्निकल ग्लिच. ओके, सॉरी. ओके, ये है मेरी को प्रेजेंटर. अब इसमें क्या क्या दिख रहा है आपको? कोई एक बताएगा, उठ के बताओ. कुछ प्रॉब्लम नहीं यार. डर किससे रहे हो? ये अपने आप आलोगे सर. अजीम सर ने आपके लिए ये सेटअप किया है इस बड़े होटल में. कराड़ का सबसे बड़ा होटल है, राइट? यस और नो? तो इसमें आपके लिए किया है. आपको ये अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि एजेंटिक किया है क्या है. मेरा सब्जेक्ट आपको पता चल गया, किसी ने सर्च किया, फोटो देखा, कुछ देखा, सब पता चल गया क्या है सब्जेक्ट. मैंने इसलिए वो स्लाइड अभी तक ओपन नहीं की है. क्या सब्जेक्ट? एक कोई खड़ा रह के माइक दे दो, जो इंटरेस्टेड है वो बताएगा कि क्या सब्जेक्ट है मेरा. एनीवन? ऑर्गेनाइजेशन कमेटी, आप बताओ. नहीं, मुझे पूरा सब्जेक्ट पूरा डिटेल में बताओ. कोई तो माइक ले लो और बताओ. नींद आ रही है? मुझे भी आ रही थी अभी. आपको नींद आ रही है? भूख लग रही है? या मुझे भी लग रही है. लेकिन भूख से ज्यादा ये अंडरस्टैंडिंग करना जरूरी है कि एआई है, लेकिन आपको क्या यूज करना है, उसको कैसे हैंडल करना है. आपको एक जॉब करना है आईटी में, पुणे में जाके, बैंगलोर में, हैदराबाद, कहाँ पे, कनाडा, यूएसए, किधर जाना है आपको? जॉब करना है, राइट? विद गुड सैलरी. करना है नहीं करना है? नहीं, आवाज नहीं आ रहा है मुझे. करना है नहीं करना है? Okay, so let's see. This is my partner actually, name as Ria.
अभी इसमें क्या दिख रहा है आपको? सिस्टम प्रॉम्प्ट। ये कौन सा एप्लीकेशन है? 11 लैब्स करके एक एप्लीकेशन है, वहाँ पे जाके आप वीडियो ट्रांसलेटेड आपका एजेंट बना सकते हो। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि सिस्टम प्रॉम्प्ट है, आपको उसका बिहेवियर बताना पड़ता है। आपको कोई एजेंट आपके जैसा चाहिए, राइट? आपको गर्लफ्रेंड चाहिए, बॉयफ्रेंड चाहिए, तो आपको उसका बिहेवियर बताना पड़ेगा कि कैसा चाहिए। शादी करने जाते हो तो बोलते हो ना, मुझे ऐसा लड़का चाहिए, उसकी सैलरी इतनी चाहिए, हाँ, उसको पूना में फ्लैट चाहिए। ये डिमांडिंग है ना अभी जहाँ पे जाओगे। तो ये आपको बिहेवियर बताना पड़ेगा आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का। तो मैंने वो बिहेवियर बताया। आइडेंटिटी क्या है, उसका नाम क्या है, आप अगर स्क्रॉल करोगे यहाँ पे आपको पता चलेगा। पर्सनालिटी क्या है, एनवायरनमेंट क्या है, मैं कहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ उसको, फिर टोन, उसका डिलीवरी टोन कैसे होना चाहिए, लाइटली चाहिए, एग्रेसिव चाहिए। गर्लफ्रेंड ऐसी चाहिए कि बोलने वाली है, चल तेरा तू ले, मेरा लो, मैं देखूंगी, ऐसी वाली गर्लफ्रेंड चाहिए, या तुम्हारे साथ फ्रेंडली का बात करने वाली गर्लफ्रेंड चाहिए? ऑब्वियसली बात करने वाली चाहिए, राइट? ओके। सो टोन, कोर गोल्स क्या होने चाहिए, कंसेप्ट एक्सप्लेनेशन, वो ठीक से बात करे, ठीक से बताए मेरे को क्या प्रॉब्लम है। आइसक्रीम खाना है तो बताए आइसक्रीम खाना है, वो बर्तन फेंक के मारे नहीं, राइट? वो अभी एजेंट आपका बिहेवियर अंडरस्टैंडिंग करता है, वो ऐसा है तो आपको कंसेप्ट एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा। देन क्वेश्चन आंसरिंग, आपको कैसे क्वेश्चन आंसर करना है वो मैं सब इस प्रॉम्प्ट में डाला है। गार्डलिंग नहीं चाहिए, हेलुसिनेशन नहीं चाहिए। एआई क्या करता है? एआई के पास एलएलएम है। एलएलएम का मतलब क्या है, किसी को पता है? लॉन्ग फॉर्म ऑफ एलएलएम। कोई भी एक बताओ यार। ये ऑर्गेनाइजेशन कमेटी नहीं चाहिए, मुझे इधर से चाहिए आवाज। लास्ट बेंचर कौन है? आई नो आपने कुर्सी पे हाथ डाला है, वैसे दैट्स फाइन एक्चुअली, लेकिन कोई बताएगा एलएलएम मीन्स क्या है? गुड गुड गुड। नींद गई? अरे झोप गेली का? लार्ज लैंग्वेज मॉडल। व्हाट इज लार्ज लैंग्वेज मॉडल? आपको पता है क्या उसके बारे में कुछ? नहीं, मैं हम रिया से पूछते हैं, रिया आपको बताएगी कि क्या लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। एलआरएम पता है? नो सर। नहीं, आप खाली चैट जीपीटी में वही आपने देखा है कि आपको एलएलएम पता है, एलआरएम पता नहीं। एसएलएम पता है? आपने देखा नहीं। मैं सारी स्लाइड में, मैं स्लाइड नहीं जाऊंगा अभी। मुझे ये समझ में आया कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो, आप बात नहीं कर रहे हो मेरे से। आपको एआई से बात करनी पड़ेगी। आप अगर बात नहीं करोगे तो एआई आपसे बात कैसे करेगा? बात इन टर्म्स ऑफ कैसे प्रॉम्प्ट। और मेरे पास एक सरप्राइज है, आप जाते जाते मेरे से एक अच्छी चीज लेके जाओगे कि 100 यूज केसेस है, उसमें से आपका कोई तो प्रोजेक्ट हो सकता है। मेरे पास एक ऐसा प्रॉम्प्ट स्ट्रक्चर है, स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, मास्टर प्रॉम्प्ट। यू कैन यूज whenever you need, you will get good answer from ChatGPT, Claude, any tool you can use that. Okay? So this is the prompt. एक AI का स्ट्रक्चर कैसे होता है मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे मैंने एक स्टार्टिंग मैसेज दिया है, फर्स्ट मैसेज आप दे सकते हो। यहाँ पे मैंने वॉइस बोला है, मैंने वॉइस ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो आप, आपको जो चाहिए वो वॉइस सिलेक्ट कर सकते हो, राइट? मैंने यहाँ पे रिया का वॉइस लिया हुआ है। रिया कैसे बोलती है मुझे नहीं पता, मैंने अभी जस्ट इधर बैठा था तब मैं रिया को सिलेक्ट किया है। उससे पहले मैंने मॉर्निंग में जो कोऑर्डिनेटर थे उनको अलग ही दिखाया था, राइट? तो रिया का वॉइस लिया है, मुझे नहीं पता रिया कैसे बात करती है। देन मैंने कंसिडरेशन लैंग्वेज यहाँ पे कंसिडरेशन किया है इस एजेंट के लिए, हिंदी, इंग्लिश, ऐसे कंबाइन में लैंग्वेज होगा। यहाँ पे एक एलएलएम दिया है मैंने, आई अंडरस्टैंड एलएलएम। यहाँ पे मैंने लार्ज लैंग्वेज मॉडल भी सिलेक्ट किया है, इसमें भी जेमिनाई 2.5 फ्लैश वाला है। अभी इस मुद्दे पे आता हो कि इतने एलएलएम्स क्रिएट है, इतने एलआरएम्स क्रिएट है, इतने एसएलएम क्रिएट्स है, आपको ये स्टडी करना पड़ेगा कि मेरे प्रोग्राम के लिए कौन सा मॉडल चाहिए। आपको अगर ये पता नहीं है मुझे कौन सा एलएलएम यूज करना है तो आप आपका एजेंट उस तरीके से बना नहीं सकते। क्लॉड ने लास्ट वीक एक सिक्योरिटी मॉडल लॉन्च किया है, एनीवन नोज दैट नेम? क्लॉड ने लॉन्च किया मॉडल,
AI इतने फास्ट मार्केट में आ रहा है ना, आप अगर सोते रहोगे ना ऐसे, तो आप उस मार्केट में एंटर नहीं कर पाओगे। देयर आर ह्यूज पोटेंशियल इन दिस मार्केट, आपको जॉब अच्छी तरह से मिलेगा। वी हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन AI मॉडल्स। IBM ने कौन सा एक टूल यूज करते हैं? आपके कौन कौन से टूल पता है? क्रू पता है आपको? लैंगचेन पता है? नहीं, आपने यूज नहीं किया कभी। ADK कौन सा यूज किया है? विजुअल स्टूडियो पता है? विजुअल स्टूडियो ये पता है, सबको पता है विजुअल स्टूडियो क्या करता है। विजुअल स्टूडियो कौन सी लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है? विजुअल स्टूडियो पता है आपको? कौन सी करता है? नहीं, आवाज ही नहीं आ रहा है मुझे, आवाज नहीं आ रहा है। माइक दे दो कोई तो। कौन बता रहा है? हाथ खड़े करो यार, बात करो, नहीं तो कुछ मतलब नहीं है। हाँ, ले लो माइक, दे दो उसको प्लीज। एक कोई तो वहां पे स्टैंड करो ना। HTML, Java, PHP। HTML, Java, PHP। C# नहीं करता? C# भी करता है। और क्या करता है? ASP.NET। अभी मुझे बताओ, विजुअल कोड ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है क्या? प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, राइट? क्यों? क्या हम कौन सी भी उसका प्रोग्राम कहाँ भी डिप्लॉय कर सकते हो। तो विजुअल कोड एटलीस्ट आपको पता है, राइट? ऐसे बहुत से टूल है। AI ने जैसे AI मार्केट में आया, उसके साथ में बहुत से टूल आए, बहुत से मॉडल भी आए। आपको ये स्टडी करना है कि मॉडल कौन सा है। नोट इट डाउन। मुझे एक भी बंदा ऐसे नहीं दिखा यहाँ पे कि पेन और पेपर लेके बैठा है यहाँ, एक भी बंदा नहीं। मैंने सर्च किया, जाके आपने सर्च किया, एक ही बंदे के पास नोटबुक नहीं है कि बाबा मैं कुछ तो लिख पाऊँ। आई एम ऑलवेज नहीं, वो भी मुझे दिखा नहीं किसी ने किया है। कोई कर रहा है मोबाइल पे? क्योंकि आजकल मैं मीटिंग में जाता हूँ ना, मीटिंग में मेरा चैट बोर्ड रेडी रहता है, वो मुझे मीटिंग का सारांश देता है पूरा का पूरा, और हमको एक MO भेजना पड़ता है। एज अ मैनेजर या डिलीवरी मैनेजर जो भी हो, हमको मिनट्स ऑफ मीटिंग भेजने पड़ते हैं। तो अभी हमको वो काम नहीं रहता, डायरेक्टली मिल जाता है, हम उसको फाइन ट्यून करते हैं और भेज देते हैं। दैट इज रिक्वायर्ड। एक्शन आइटम इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है? तो ये AI है। अभी मैं प्रीव्यू करता हूँ। आई हैव नॉट पब्लिश्ड एनीथिंग, आई एम प्रीव्यू। दिख रहा है यहाँ पे? क्या दिख रहा है आपको? केबल दिले का कसं गेला होता? हेलो हेलो, hey, hi Ria, are you able to hear me? ये चैट भी कर रही है मेरे साथ, लेकिन रिया बात कर रही है। ये रिकॉर्डिंग होता है पूरा का पूरा, उसका डिटेलिंग कर रही है, लेकिन ये वॉइस नहीं आ रहा है मेरे लैपटॉप, मुझे नहीं पता। मुझे अभी BVDU मुझे अब लगा है। मुझे माफ करना, लेकिन अच्छा, आप मार्केटिंग के बारे। नमस्कार सभी को, और हमारे सेमिनार में आपका स्वागत है। मैं रिया हूँ, आज का AI स्मार्ट असिस्टेंट। बहुत अच्छा, ये सुनकर खुशी हुई कि मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है।
तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस इंटरेस्टिंग सेमिनार को शुरू करते हैं। Hey Ria, can you just tell my students about agentic AI? ज़रूर। एजेंटिक एआई बेसिकली एक ऐसा एआई सिस्टम होता है जो सिर्फ कमांड्स फॉलो नहीं करता बल्कि अपने गोल्स को अचीव करने के लिए खुद से प्लान बनाता है, एक्शंस लेता है और अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर भी करता है। थिंक ऑफ इट लाइक दिस, अगर आप किसी नॉर्मल एआई को कहते हैं कि मुझे एक ईमेल लिखो तो लिखो तो वो सिर्फ ईमेल लिख देगा। लेकिन एक एजेंटिक एआई को अगर आप कहेंगे मेरे लिए इस क्लाइंट के साथ मीटिंग अरेंज करो तो वो खुद से कैलेंडर चेक करेगा, ईमेल ड्राफ्ट करेगा, फॉलो अप करेगा और तब तक काम करेगा जब तक मीटिंग सेट ना हो जाए। यह एक प्रोएक्टिव अप्रोच है। ये एआई को और भी ऑटोनॉमस और एफिशिएंट बनाता है। ए रिया, मुझे बताओ मैं कहाँ पे सेशन दे रहा हूँ? आज का सेमिनार कहाँ पे है? मैं एक एआई हूँ तो मुझे फिजिकल लोकेशन की इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। मैं तो बस डिजिटली आपके साथ कनेक्ट होकर इस सेमिनार में हेल्प कर रहा हूँ। आप ही बता सकते हैं कि हम आज कहाँ पर हैं। ओके, गुड रिया, थैंक्स फॉर माय प्रेजेंटर, को प्रेजेंटर सॉरी। मैंने उसको लोकेशन नहीं बताया था, दिखाया ना मैंने एआई में, मैंने कहाँ पे उसको ये लोकेशन मैंने दिया नहीं था। आप जितना दोगे डिटेलिंग उतना डिटेलिंग एआई भी आपको देगा। तो आपको गर्लफ्रेंड कैसी चाहिए ये घर में जाके थिंक करो, ठीक है? उसके बारे में आप प्रॉम्प्ट लिखना शुरू करो। नाउ आई विल टेल यू, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज द वन ऑफ द लीडिंग जॉब आएगा और उसको पैसा कितना मिलेगा डोंट बिलीव, 25 से 30 लाख तक इनिशियल सैलरी रहेगी उसकी और ये 1-2 साल में आने वाला है। 2030 तक डोंट बिलीव, जितना वर्ल्ड का पॉपुलेशन है उतना एजेंट्स क्रिएट होगी। आप नहीं करोगे तो दूसरा कोई तो कर रहा है। आप नहीं यूज केसेस बनाओगे दूसरा कोई तो कर रहा है। आप खेती करोगे, फिर बैंगन बेचोगे, खेती करोगे, कितने पे जाती है आप देख लो। आपको जो अभी चैतन्य ने बताया लाइफ कैसे जी रहा है, जो वो मेरे गांव का ही है, उसने बताया लाइफ दिखाया, लाइफ स्लाइड्स भी दिखाया कैसे जी रहा है। तो आपको ऐसा कोई लाइफ जीना है, आपको पैसा कमाना है तो आप यहाँ पे आए हुए हैं, राइट? ओके, तो लेट्स गो विद द प्रेजेंटेशन नाउ। आई विल टीच यू। क्या सब्जेक्ट है अभी पता है सबको? बताओ सब्जेक्ट क्या है अभी? अरे आवाज नहीं आ रहा है। आज मैं इसको रिया को बंद करता हूँ पहले। रिया बंद हो जाओ। ओके, सो एजेंटिक आईटी ऑपरेटिंग मॉडल्स। अभी जैसे मैंने बोला नेटफ्लिक्स, अलेक्सा, स्पॉटिफाई, स्विगी, चैट जीपीटी आप डेली लाइफ में यूज करते हो। आपका काम होगा कि वो कैसे काम करता है, यू नीड टू अंडरस्टैंड। आप पहले जाके देखोगे व्हाट्सएप डिलीट कर दो। व्हाट्सएप इज जस्ट अ कम्युनिकेशन मीडिया है, राइट? सो डिलीट द व्हाट्सएप। आपको अगर कुछ एमसीए के बाद जॉब चाहिए, क्या करना है ना, चैट जीपीटी कीप इट यूज, बट चैट जीपीटी का कितना यूज करना है ये आपको पता होना चाहिए। क्या सर्च करना है वो भी आपको पता होना चाहिए और उसका कैसे यूज करना है वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है? लेट्स गो विद द नेक्स्ट स्लाइड। दीज आर द एप्लीकेशन नाउ आई हैव डिस्कस विद यू, राइट? नेटफ्लिक्स 80% ऑफ कंटेंट वॉच हैज कम फ्रॉम एआई रिकॉग्निशन। आप क्या करना चाहते हो नेक्स्ट आपको बता देता है कि आप कौन सा मूवी नेक्स्ट देखोगे। आपको भी लंच करने के बाद कौन कौन स्लीप जाता है, थोड़ा सा नैप बोलते ना, आफ्टरनून नैप कौन लेता है नैप? एक भी नहीं, एक भी नहीं। आप लेते हो? आप लेते हो? खड़े हो जाओ प्लीज। एक तालियां फॉर दिस गाय। आप खड़े हो जाओ सर। आपका ब्रेन को भी एनर्जी देने के लिए नींद जरूरी है। 8 घंटे की नींद आप नहीं दोगे ना, ब्रेन आपका दूसरे दिन काम नहीं कर पाएगा, तो ये जरूरी है। अभी मुझे बताओ, आप नींद नहीं लेते हो? आप बैठो। आप नींद नहीं लेते हो, नैप नहीं लेते हो, आफ्टरनून नहीं लेते हो या रात में नहीं लेते हो, आप करते क्या? आप मोबाइल पे ने क्या क्या देखते हो? इंस्टाग्राम, यूट्यूब और क्या देखते हो?
और क्या कोई टाइम डिसाइडेड है आपका कितना टाइम देखना चाहिए वो? आपको पता है कितना टाइम देखना चाहिए वो पता है आपको? नो नो नो, आई एम नॉट कंसिडरिंग एनी टाइम। आपको भूख लगी है, मुझे भी लगी है, लेकिन आई नीड टू कन्वे दिस मैसेजेस टू यू गाइज। आप एक बार मोबाइल खोला और इंस्टाग्राम चालू किया ना, आप घंटों देख वीडियो करते हो, और ये आप खुद से नहीं करते हो, यू आर कैप्चर्ड बाय AI। यू गाइज आर कैप्चर्ड बाय AI। AI आपको बताता है कि नेटफ्लिक्स में नेक्स्ट क्या देखना है, आपके फेवरेट देता है। जैसे आपने गर्लफ्रेंड एजेंटिक में गर्लफ्रेंड बना ली आपकी एक बार, वो गर्लफ्रेंड आपको कभी गलत बोलेगी नहीं, आपके बिहेवियर वैसा दिया है ना आपने, वो आपको कभी गंदा बोलेगी नहीं, आपका गलती कभी बताएगी नहीं, क्योंकि आपने उसके आपके बिहेवियर जैसा उसको बनाया है। सो AI का ड्रॉबैक वही है, AI ने एक बार आपका बिहेवियर पढ़ लिया, AI आपके बिहेवियर जैसा ही आंसर आपको देगा, आपको जो चाहिए वही देगा। उसका ड्रॉबैक ये होगा कि आप देखो किसी भी बंदे को मैंने डायरेक्टली फीडबैक दे दिया। हमारे इसमें IBM में एक फीडबैक पोर्टल है और हमको कंपलसरी फीडबैक देना होता है। आइदर इज अ पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, कुछ भी हो, वो कंपलसरी है। उसके ब्लू प्लांट हम जाते हैं, ब्लू प्लांट के पर हम पैसे कमा सकते हैं। आप कुछ भी चीज़ें ले सकते हैं IBM स्टोर से, जितने ब्लू पॉइंट। मैं मेरी टीम को कुछ भी अच्छा काम किया तो मैं ब्लू पॉइंट दे देता हूँ। ब्लू पॉइंट में से एक ब्लू पॉइंट मतलब 4 रुपये मिलता है। ऐसे तुमको बहुत पैसे ब्लू पॉइंट, लोग हमारे कंपनी में आईफोन्स वगैरह खरीदते हैं ब्लू पॉइंट पे विदाउट सैलरी। मैं ये बोल रहा हूँ आपको, ब्लू पॉइंट इज द कंसेप्ट। तो मैं जहाँ पे था कि बिहेवियर आपका पढ़ लेता है, आप कैप्चर हो चुके हो। नेटफ्लिक्स, अगर कोई नेटफ्लिक्स देखता है तो कंडीशन है नेटफ्लिक्स, लेकिन सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, तो नेटफ्लिक्स आपके पिताजी ने पैसे भरे नहीं है तो उतना ही चलेगा जितना है, फ्री में कुछ नहीं मिलता नेटफ्लिक्स में, तो वो छोड़ो। इंस्टाग्राम फ्री है, आप कितने रील्स देखते हो किसी को काउंट है? लेकिन आपका काउंट मेरे पास है, मैं दिखा सकता हूँ आपका काउंट क्या है विद नेम। ये AI ने कैप्चर किया है। जैसे सर ने बताया पहले स्टार्टिंग में, डेटा ऑटोमेटिकली गेट कैप्चर्ड, आप करो या ना करो। मुझे एक बताओ, गूगल मैप ने आप गाड़ी चलाते हो, आप कुछ बोलते हो क्या? गूगल मैप सैटेलाइट से डेटा लेता है और आपका रोड का क्लियरिटी आपको देता है, यहाँ पे ट्रैफिक है, यहाँ पे नहीं है, ये गूगल मैप देता है। मतलब कोई तो बैकग्राउंड में काम कर रहा है ना, उसके लिए कोई तो डेटा फेच कर रहा है। ये गूगल ऐप कर रहा है, ये एजेंटिक है या ये कुछ डेटा साइंस है, ये सब कर रहे हैं तुम्हारे लिए, कोई तो काम कर रहा है। एजेंट मीन्स इतना अंडरस्टैंडिंग करो कि आपके बिहाफ कोई तो काम करेगा। मैंने रिया को बोला मेरा को फाउंडर बनो, मैंने रिया को उतने ही इंस्ट्रक्शन दिए, उतना ही प्रॉम्प्ट दिया, रिया वैसे बात करेगी। रिया ने बात करना शुरू कर दिया। रिया ने LLM मॉडल बोले। LLM मॉडल मतलब क्या रहता है आपको पता है? ये तो मैं एग्जांपल बोले, इसमें से किसी को पता है? चैट GPT आपको पता है, स्विगी जोमेटो, पूना में तो बहुत यूज होता है स्विगी जोमेटो। अभी कैसे कंडीशन से पता है? आपने ऑर्डर डालने के बाद है ना, आजकल स्विगी पे आपको पूरा इटनरी जैसा आता है कि ये बंदा कितने मिनट में आपके घर आएगा। पिज्जा कितना टाइमिंग आता है पिज्जा का? 10 मिनट। कितना? 10 मिनट में नहीं आया तो आपको फ्री पिज्जा मिलता है। किसी ने किया है ट्राई ये चीज? हाँ, पिझ्झा यहाँ पे भी मिलता है। डोंट बी, मी मसूरला पिझ्झा मागवतो, येतो कराडवरून पिझ्झा, पण तो आधी मला सांगतो, तो डिस्क्लेमर देतो की सर मसूर लांब आहे, तुम्हाला 30 मिनिट्स तरी वेट करायला लागेल, पण वी कॅन डिलिव्हर द पिझ्झा टू यू. सेम फॉर मैकडी एंड अदर थिंग्स. सो एवरीथिंग विल बी ट्रैक. आपको क्या करना है आप डिसाइड करो, और आपको कहाँ पे जाना है. अभी मैंने एक प्रॉम्प्ट बताया, रिया को प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा. आपको गर्लफ्रेंड बनानी है, आपको बनानी है नहीं बनानी है? चाहिए गर्लफ्रेंड? मैं लास्ट में आपको सरप्राइज गर्लफ्रेंड दिखाता हूँ, ठीक है? तो ये है स्पॉटिफाई. एलेक्सा मैंने बोला, एलेक्सा भी गाइडेड है. मैंने एक प्रोग्राम सेट किया है. आई एम वर्किंग फॉर सम वेलफेयर कंपनीज, राइट? तो पूना में जो भी एजेड लोग हैं अभी, जिनके बच्चे सारे यूएस में सेटल हो गए हैं, दे आर नॉट गोइंग टू यूएस, दे आर नीड टू स्टे इन पूना. ऐसे लोगों के लिए हम एलेक्सा बेस्ड सिस्टम सेट कर रहे हैं.
वो पैसे देते हैं, बच्चे उनके पैसे देते हैं हमको, लेकिन हम सिस्टम सेट कर रहे हैं। बहुत से घर में हमने सेट किया है। एलेक्सा ईच एंड एवरीथिंग आपका ट्रैक करता है। आपके यहाँ पे डिवाइस सेट हुए, लाइट कौन सा बंद करना है, क्या करना है। और उन जो बूढ़े लोग हैं 70-80 के हैं, उनको हम गाइड करते हैं कि कैसे कमांड देना है एलेक्सा को। ये मेरा जॉब छोड़ के मैम एज ए वेलफेयर एक्टिविटी करके हम करते हैं। और हमने सक्सेसफुली नियर अबाउट 100 घर्स में ये सेट किया हुआ है और वो अच्छे से वर्क करता है। ऐसा मत बोलो कि अभी ये ऑटोमेशन आ गया तो किसी को फायदा है किसी को नहीं। आप कंसिडर करोगे तो होगा। मेरे पास एक वीडियो है, टेक महिंद्रा का प्लान का वीडियो है। इफ यू आर सी दैट वीडियो यू डोंट बिलीव ऑटोमेशन विल बी गो एट अप टू दैट लेवल। उसके पास में जो प्लांट है वहाँ पे 9,500 से 10,000 एम्प्लॉई सेटअप काम करते हैं। उसके पास में टेक महिंद्रा ने ऑटोमेटेड एक प्लांट सेटअप किया है। वहाँ पे 400 गर्ल्स काम करती है। 400 गर्ल्स 9,500, क्या फ़र्क है देखो। और क्वालिटी अगर पैरामीटर देखोगे तो जो भी ऑटोमेटेड प्लांट है उसकी क्वालिटी 20 से 25% ज़्यादा है। तो आपको क्या करना है? आप बोलोगे जॉब नहीं है, जॉब चले जाएंगे अगर आप एआई पे मूव नहीं होगे तो। ठीक है, तो ये एग्जांपल है। लेट्स गो एचआर चैटबॉट। हमारे आईबीएम में अभी चैटबॉट नहीं है, ये नहीं है, एचआर कंसेप्ट नहीं है। हमको आस्क एचआर जैसा है और ये बहुत से कंपनीज में हो गया है। आपको जो भी एचआर रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए यू कैन ओपन दैट आस्क एचआर चैटबॉट एंड आस्क द डिटेल्स। मुझे प्ले शीट चाहिए, मुझे डिटेल्स चाहिए तो मैं एचआर चैट को बताता हूँ, ये मुझे दे देती है। मेरे मेल पे वो चला आता। तो यहाँ पे ऑटोमेशन हो गया, एचआर लोग कम हो गए, लेकिन इसमें ह्यूमन इन द लूप है। कुछ अप्रूवल्स जो रहते हैं वहाँ पे आपको मैनेजर के पास जाना ही पड़ता है। सो ह्यूमन इन द लूप रखा हुआ है। ठीक है, आपको जस्ट शिफ्टिंग करना है कि कहाँ से कौन से जॉब ओपन है और उसके लिए तुमको क्या सीखना है, क्या करना है, स्किल इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, ये देखो आप एक ऑनलाइन एग्जाम किसने किसने दिए हैं? ऑनलाइन एग्जाम आजकल सारी एग्जाम ऑनलाइन होती है, राइट? अगर आपको पता चला कि एग्जाम चालू होने वाले और सर्वर क्रैश, आपको बोला कि आप सबमिट नहीं कर सकते हो, क्या करो? कितना टाइम लगेगा फिर वो रिकवर होने के लिए? 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स। अगर लोग अवेलेबल ही नहीं है उस शिफ्ट में तो आपको रिजॉल्विंग नहीं होगा। लेकिन ये अगर सिस्टम हमने ऑटोमेट कर ली, एआई जो पहले ही बताएगा कि यहाँ पे क्रैश होने वाला है, ये सिस्टम में प्रॉब्लम है, तो यू कैन रिजॉल्व दैट प्रॉब्लम विद इन 2 सेकंड एंड योर एग्जाम विल बी रीबूट विद इन 2 सेकंड। आपको पता भी नहीं चलेगा कि बैकग्राउंड में मेरे एग्जाम को कुछ प्रॉब्लम था। वो सर को पता चलेगा कि बाबा एक मुझे टिकट रेज हुआ है कि ये सिस्टम में प्रॉब्लम था, वो टिकट रिजॉल्व भी हुआ, सर आपको बताएंगे नहीं, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, ये लेवल पे ऑटोमेशन हो रहा है। अभी इसमें एआई इन्वॉल्वमेंट है कि एआई ने क्या किया, वो कंटिन्यूसली लॉग चेक रहता है, सिस्टम का लॉग चेक करेगी और वो क्या करेगा, डेटा कलेक्ट करेगा। जहाँ पे उनको फॉल्ट डिटेक्ट होता है एआई वो फॉल्ट रिजॉल्व करेगा ऑटोमेटिकली, उसका एक्शन करेगा। एक्शन करके जो भी रिसिपेंट है उनको मेल भेजेगा कि यहाँ पे एक फॉल्ट था, वी हैव रिजॉल्व दैट फॉल्ट एंड नाउ सिस्टम इज रीबूटेड विद फुल फ्लेज एंड देयर इज नो इम्पैक्ट टू हुएवर इज यूजिंग दैट सिस्टम। दिस इज द ऑटोमेशन। ये लेवल पे ऑटोमेशन हो रहा है। जैसे कॉल सेंटर से बंद हो जाएंगे, कॉल सेंटर पे अभी ये जैसा रिया मैंने बताया, रिया बैठती है वहाँ, रिया को गाइडेड इतना अच्छा तरीके से गाइड करोगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो कौन बोल रहा है। वो अभी ऑटोमेशन बैंकिंग में आ गया है और ये यूज केस है, मैंने यूज केस बता रहा हूँ आपको, वो इसके बेसिस पे मैं एजेंट किया है क्या है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ओके। नाउ टेल मी, किसी को कुछ पता है इसके बारे में? ये वर्ड्स मैंने लिखे यहाँ पे, परसीव, रीजन, एक्ट एंड लर्न। किसी को कुछ भी पता है हाथ खड़े करो। डोंट बी, ऐसे डरो मत कि बाबा क्या बताना है। गलत भी रहेगा तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा और कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन बताओ, रीड करो, उसके नीचे क्या लिखा है वो रीड करके बताओ। कोई है? कोई है माई का लाल जो बताएगा मेरे को ऐसा? कोई है?
आप जहाँ पे भी जाओगे ना इंडस्ट्री में, मैं भी पहले 2004 में आप जैसे बैठे हो, मैं भी वहाँ पे ही बैठता था. हम भी टिंगल तवाळी करते थे, बोलते ना. आम्ही पण टाइमपास करत होतो, असं राहायचं. म्हणजे पाटील मॅडमचा क्लास मला आठवला, मी पाटील मॅडमना बघितल्यानंतर. आम्ही खरंच म्हणजे मॅडमचा क्लास म्हणजे मला सगळा पूर्ण आठवला क्लास. सरांचं राहायचं इजंट इट सर. म्हणजे काय काय वर्ड्स राहतात ते कॅप्चर करतो आपण, म्हणतो ना तसं. म्हणजे हे सगळं आम्हाला तिथून ग्राफ झालंय. पण आता कंडिशन अशी आहे की तुम्ही चेक करा, हे काय आहे, हे एआयला तुम्ही इन्स्ट्रक्शन दिल्या पाहिजेत. प्रिझर्व म्हणजे काय, एआय तुमचा डेटा रीड करतोय, लॉग्स क्रिएट होते, नॉलेज बेस क्रिएट होतात, सगळा डेटा रीड करून एआय ठेवतो तुमचा. त्याच्यानंतर रिझनिंग होतं. रिझनिंग म्हणजे काय, अप्लाय सम लॉजिक्स, then paste patterns and goals to choose best response to the situation. So example मी खाली लिहिलेलं बघा, Netflix needs your pause points. नेटफ्लिक्स क्लॉज पॉईंट्स अंडरस्टँडिंग करतात. तुम्ही नेटफ्लिक्स बघत नाही त्यामुळे ते एक्झाम्पल तुम्हाला जास्त करून लागत नाही. पण मी बघतो नेटफ्लिक्स, मला माहिती आहे की माझी विश लिस्ट तयार असते. मी जर गौरव ठाकूरच बघतोय तर मला गौरव ठाकूरचे सगळे व्हिडिओ आहेत. मी जर मेडिकलचं बघत असेल तर मला मेडिकलचे सगळे येणार व्हिडिओ. तुम्ही जसं बघाल तसं एआय तुम्हाला तुमचं बिहेवियर अंडरस्टँडिंग करून देते. ॲलेक्सा मॅप्स ऑर्डर पिझ्झा ॲक्शन. आता रिझन इथं झालं ना, तुम्हाला काय करायचं आहे, ऑर्डर पिझ्झा केला मी. ऑर्डर पिझ्झा तुम्ही फोनवरून करता राईट. ऑर्डर केल्यानंतर पिझ्झा येईपर्यंत काय ॲक्शन्स होतात ते अलेक्सा मॅप करतो. अलेक्साला पण तुम्ही सांगू शकता की तुम्हाला फोन करायची गरज नाही. अलेक्साला तुम्ही सांगा, अलेक्सा प्लीज ओपन द स्विगी ॲप and order pizza for me which is 100 rupees only, not more than that. Alexa search the pizza which is 100 rupees and put the action against you and order that pizza and deduct the money from your bank as well. How? अरे आप आपके मोबाइल पे इतनी चीज़ें यूज कर रहे हो, आपको याद भी नहीं रहता आपने कब किसको पासवर्ड दिया, किसको क्या किया. You are not secure at all. आपका लोकेशन सिक्योर नहीं है, आप कहाँ पे जा रहे हो मुझे ट्रैक होता है. कोई भी गया वो पहाड़ के नीचे, वो यहाँ पे सातारा में कौन सा वाटरफॉल है फेमस वाटरफॉल, ठोसेगर राइट. वहाँ पे बैरिकेड लगाए हैं क्योंकि बहुत से एक्सीडेंट हुए. क्या उधर मत जाओ. अभी सेल्फी के लिए लोग जाते थे तो उन्होंने बैरिकेड ही लगा दिए. आपको सेल्फी निकालना है, इंस्टाग्राम में डालते हो. अभी कौन सा है, टिक टैक टो और कौन है, कौन सा यूज करते हो, नेटफ्लिक्स और कौन सा, ये इंस्टाग्राम और कौन सा ऐप यूज करते हो आप, हाँ स्नैपचैट. तो आप क्या करते हो, आपका रील बनाते हो. आजकल रील का फैशन है राइट. तो उसके कारण क्या होता है पता है, आपका बिहेवियर ऑलरेडी पता है, आपका डेटा इतना कैप्चर हुआ है कि सब कुछ पता है. डोंट बी बिलीव, आपका सब एक्शन ट्रैक होता है. आप घर से निकले तो सैटेलाइट आपके लोकेशंस अंडरस्टैंडिंग करता है, मोबाइल से ही पता चलता है. आप वाईफाई बंद भी करोगे तो भी मोबाइल से ट्रैकर मिल जाता है. इतना ट्रैक हो रहा है डेटा. सो यू आर नॉट सेफ एट ऑल, यू आर नॉट सिक्योर एट ऑल. योर डेटा इज नॉट सिक्योर. योर बैंक अकाउंट, योर पैन कार्ड, ये सब सिक्योर नहीं है. लेकिन स्टिल यू हैव अ यूज केस टू सिक्योर दिस थिंग्स. जब आप किसी सॉफ्टवेयर पे काम करते हो ना, ये आपका स्किल होना चाहिए कि मुझे ये सिक्योरिटी कैसी लानी है. तो आप ऐसा यूज केस बनाओ कि जहाँ पे आप सिक्योरिटी सेट कर सकते हो. ओके, ये हो गया एक्ट. एग्जीक्यूट टास्क एंड टू एंड, एपीआई, स्क्रिप्ट, नोटिफिकेशन विदाउट वेटिंग फॉर अप्रूवल. मैंने जैसे बोला, आपको कुछ दिनों के बाद आपके अकाउंट से पैसे चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा. लर्न, एआई का एक थिंग्स है कि लर्न करता है. ये एलएलएम मतलब क्या है पता है, मेमोरी है. मैं आगे दिखाता हूँ आपको सारी, ठीक है. ये अभी 3 कंसेप्ट अभी एआई के हैं. पता है किसी को, रैक मीन्स किसी को पता है, लॉन्ग फॉर्म मैंने यहाँ पे दिखाया है, वो पढ़ के तो बोलो किसको पता है. रैक मीन्स दिख रहा है क्या, रिट्रीवल क्या है, एग्यूमेंटेड जनरेशन. अभी क्या है ये, रिट्रीवल मीन्स चैट जीपीटी में हम प्रॉम्प्ट डालते हो, वो आपको रिट्रीव करके देता है राइट. एग्यूमेंटेड मतलब आपकी भाषा नहीं बोलता है वो, उसकी भाषा आपको देता है राइट.
आपने कुछ एजेंटिक एआई बोला तो आपको ज़्यादा ही देगा, आपने बोला कि बाबा कोई भी सर्च कर रहे हो आप, आपको ज़्यादा देता है, कम देता है वो कभी, तो हेलुसिनेट करता है, वो इंफॉर्मेशन हेलुसिनेशन करता है। जैसे चेतन ने बताया अभी कैसे हो रहा है वो हेलुसिनेशन क्या है, मैं उस पर नहीं जाने वाला हूँ, मुझे एजेंटिक एआई ये सब्जेक्ट है मेरा, उस पर मुझे कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है। तो ये रैग हो गया, रैग ऐसे चलता है। अभी एआई एजेंट क्या होता है, एआई एजेंट में एक्शंस होते हैं, जैसे मैंने बोला यहाँ पे मैंने एग्जांपल वैसे सेट किए है, देखो HR बॉट आंसर्स हाउ मेनी लीव्स डू आई हैव बाय फेचिंग फ्रॉम वर्कडे। वर्कडे एक सिस्टम है जहाँ पे HR का डेटा स्टोर होता है, वो हर एक कंपनी यूज करती है, मोस्ट ऑफ द कंपनीज यूजिंग वर्कडे एंड सर्विस नाउ। सर्विस नाउ इज फॉर टिकटिंग सिस्टम एक्चुअली, जो भी आपका सर्विस जहाँ जहाँ पे सर्विसेज का है टिकट रेज करते हो वो सर्विस नाउ यूज करता है। सो वर्कडे से आपकी इंफॉर्मेशन मिलते हैं और वो शेयर इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर देता है। एआई एजेंट क्या करता है, HR चैटबॉट अंडरस्टैंड द इंटेंट, ये इंपॉर्टेंट चीज है। आपको ऐसा चैटबॉट बनाना है, उसको इंटेंट पता होना चाहिए। मैंने अभी रिया को बनाया, रिया को मैंने मेरा प्रेजेंटेशन अपलोड किया हुआ है PDF फॉर्मेट में, तो रिया खाली मैंने उसको लोकेशन दिया नहीं, उसने लोकेशन है क्या बोला क्या नहीं बोला, उसने डायरेक्टली बोला कि मेरे पास लोकेशन नहीं है, आप ही स्टूडेंट को बताओ, को फाउंडर को पता नहीं। तो आपको इंटेंट उस एजेंट में डालना है। आप इंटेंट जब तक डालोगे नहीं, वो प्रॉम्प्ट के थ्रू जाएगा, आपको बिहेवियर बताना है उसका, कैसे बिहेवियर है, वो थप्पड़ मारने वाली रिया है या वो प्यार से समझाने वाली रिया है, वो आपको बताना है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वन ऑफ द लीडिंग में मैंने बोला लीडिंग जॉब्स कमिंग इन, ऑलरेडी स्टार्टेड हुआ है और 2-3 साल में आपको वो दिखेगा। अभी AI इंजीनियर्स, डेवऑप्स इंजीनियर्स और कौन से जॉब ओपन होते हैं, आपने कभी naukri.com या लिंक्डइन पे चेक किया है कि जॉब कौन से ओपन होते हैं? क्या आपको आप वेट कर रहे हो कि आपका MCA हो फिर मैं देखूंगा, मैं देखूंगी, ऐसा है कुछ? यस और नो? अभी मैं बात कर रहा हूँ और कोई सो रहा है तो रियली हेड्स अप टू दैट गाय, एक्चुअली मैं खड़ा करूंगा उसको, फिर उसको हेड्स अप करना पड़ेगा, राइट? तो आपको AI एजेंट में क्या होता है, सम एक्शंस होते हैं। मैंने जैसे बोला अभी, अंडरस्टैंड द इंटेंट, अप्लाइज लीव्स इन द सिस्टम। मुझे लीव्स लेनी है, मुझे वेकेशन पे जाना है, तो मैं उस चैटबॉट को बोलता हूँ कि मंडे आई एम नॉट अवेलेबल, प्लीज सेट माई लीव्स इन सिस्टम एंड इंटीमेट एवरीवन who's are related to me। मैं अभी टीम्स में कभी आउटबॉक्स डालना पड़ता है हमको, मैं नहीं हूँ बाबा प्रेजेंट, मैं कल डाला था मैंने कि मैं आउट हूँ, मैं छुट्टी पे हूँ बाबा, तो मेरा टीम्स मुझे मैसेज सबको दे देता है। वैसे ही मेरे आस्क HR में मैंने डाल दिया ना मेरी छुट्टी है, वो सबको बता देता है कि वैभव आज छुट्टी पे, डू नॉट डिस्टर्ब हिम। तो एक्शन करेगा, सबको मेल भेजेगा, ये AI एजेंट करता है। और एजेंटिक रैक ये मिक्सअप है, AI एजेंट और एजेंटिक रैक का मिक्सअप है। मतलब क्या हो गया, ये दोनों का मिक्सअप वहाँ पे है। HR बॉट रिट्रीव्स लीव पॉलिसी, रैक चेक लीव बैलेंस, रूल्स, डिसाइड एलिजिबिलिटी भी डिसाइड करता है। आपकी लीव्स नहीं रहेगी तो आपको लीव लेने के अधिकार कैसे है, तो लीव्स वो चेक करता है। और देन अप्लाइज लीव्स इन द सिस्टम, नोटिफाई मैनेजर्स एंड नोटिफाई एम्प्लॉई एज वेल। ये ऑटोमेटिक होता है, यहाँ पे ह्यूमन इन द लूप किधर है, नहीं है। मतलब HR की प्रोसेस मैंने क्या की, AI से ऑटोमेट की। मैंने एक प्रोग्राम लिखा, मैंने एक चार्ट LLM कॉल की, मैं आगे बताता हूँ उसके बारे में कैसे चलता है। अभी ये तो फंक्शनलिटी यूज केसेस बता रहा हूँ मैं। हमारे IT वर्ड में ना SOW पहले साइन होता है, उसके बाद में काम चालू होता है, उसके बाद में डिजाइन देना पड़ता है। तो मैं उसी तरीके से कर रहा हूँ, ये यूज केसेस है। मुझे किसी ने बताया कि HR चैटबॉट बनाना है, तो ये यूज केसेस है। ओके, अभी तो हो मेरे साथ या सो गए? यस और नो? वी कैन डू वन एक्टिविटी, जस्ट अप योर हैंड्स। मुझे देखना, मैंने मोबाइल पहले ही बोला था पॉकेट में डालो। आ गए? डाउन, क्लैप, आवाज नहीं आ रहा है, फिर से क्लैप, गुड, सब जगह अभी कंडीशन से।
ओके, ये कुछ अच्छा दिख रहा है? हाँ, ये डिजाइन है रैक वीएस एआई एजेंट वीएस रैक एजेंट किया है। मैंने ये किधर से कंस्ट्रक्शन नहीं किया, ये मैंने प्रेजेंटेशन मेरे बेटे ने तैयार किया हुआ है, वो स्टडिंग इन 12th क्लास। तो उसने कैसे प्रॉम्प्ट दिया था, क्या इंटेंट था, वो 12th क्लास का बंदा मुझे बताता है कि इंटेंट बाबा ऐसा नहीं है, आपने गलत लिखा है यहाँ पे। तो उसने ये जनरेट करके दिया है मुझे प्रेजेंटेशन पूरा, इमेजेस वगैरह सब। हमने 1 घंटा डिस्कस किया और उसने बोला कि बाबा आप कराड़ जा रहे हो तो चेंज योर लैंग्वेज, लैंग्वेज इज़ नॉट अ बैरियर नाउ, ओके। मैं चाइनीज़, मेरे टीम में चाइनीज़ बंदे हैं, 4 बंदे हैं चाइनीज़, and we don't talk in English actually. They are translating my English into Chinese. That is the fact. I know. टाइम आ गया यहाँ पे, मुझे क्विकली आगे जाना है। बहुत सी स्लाइड है, वो यूजफुल है तुमको। ऑर्गेनाइजर कमिटी शेयर दिस प्रेजेंटेशन विद एवरीवन, ओके। माय रिक्वेस्ट टू एवरीवन एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कंटेंट पूरा हमने कलेक्ट किया है जो आपके लिए यूज़ है, आपके फ्यूचर के लिए यूज़ है, वो कंटेंट मैंने क्रिएट किया, ठीक है। रैग ये कैसे चलता है मैंने एक्सप्लेन किया, वैसे ही चलता है। तो यहाँ पे आता है रैग में आपको डायरेक्टली एलएलएम के साथ आप जो भी प्रॉम्प्ट देते हो उसका इंटेंट अंडरस्टैंडिंग करके वो रिप्लाई दे देता है। एजेंट्स में आप देखो, एजेंट्स रहता है, टूल्स रहते हैं, टूल्स आप कोई टूल्स कंसिडरेशन कर लो। जैसे आपको मेल भेजना है तो मेल्स का टूल होना चाहिए, राइट। मेल के लिए कौन सा टूल यूज होता है पता है? वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए कौन सा टूल यूज होता है पता है? नहीं। फाइंड आउट दोज टूल्स जो यूज होते हैं, आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे। एजेंट तो पता चल गया, डेटा सोर्स मेमोरी में है, एलएलएम क्या है पता चल गया। मैं आगे 7 स्टेप बताता हूँ, मुझे अभी उसमें नहीं जाना, ये इंपॉर्टेंट है। दिस इज द 7 स्टेप फ्रेमवर्क फॉर एजेंटिक एआई। सो यू कैन स्टार्ट विद अ गोल, स्टार्ट विद अ गोल। आपको क्या करना है, क्या यूज केसेस है, उसको फिर पिकअप द राइट मॉडल अगेंस्ट दैट यूज केसेस। यहाँ पे मैंने दिखाया देखो, LRM, LLM, SLM। LRM क्या है पता है? रीजनिंग मॉडल है। आपने वो मॉडल देखे कि नहीं पता नहीं, वो परचेस करने पड़ते हैं, LRM मिलता नहीं है। LRM मॉडल कौन से आप फाइंड आउट करो, घर जाके करोगे। कौन से LRM मॉडल है, क्लाउड या ओपन एआई, कौन देता है ये LRM मॉडल, और वो उसका फायदा क्या है, किस लेवल पे उसका इंटैक्ट होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इंडिया में उस लेवल का एक मॉडल बन रहा है आपके लॉ सिस्टम के लिए। दे हैव स्टार्टेड बिल्डिंग ऑटोमेटिंग ऑल द लॉ सिस्टम्स, एंड वहाँ पे एजेंटिक एआई इम्प्लीमेंटेशन चालू हो गया। दैट इज द केस, ओके। चूज द राइट फ्रेमवर्क। अभी 2 टाइप के फ्रेमवर्क है। मैंने अभी ये जो रिया बनाई वो है नो कोड लो कोड प्लेटफॉर्म में, ठीक है। नो कोड लो कोड प्लेटफॉर्म में 1 घंटे में आप आपका एजेंट क्रिएट करोगे, टेस्टेड सब आपको मिल जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे फ्रेमवर्क है यहाँ पे आपका स्किल सेट इंपॉर्टेंट रहता है, आपको पाइथन आना चाहिए, दैट इज मस्ट। आपको विजुअल कोड कैसे यूज करते हो वो पता होना चाहिए। पाइथन यूज करो, सी शार्प करो, आपका एक बेस लैंग्वेज होना चाहिए। सी शार्प इज द बेस लैंग्वेज, गो विद दैट। देयर इज वन बुक कॉल्ड एज CLR वाया सी शार्प, नोट इट डाउन। आप अगर नोट नहीं कर रहे हो तो नोट इट डाउन। CLR वाया सी शार्प सर्च करो गूगल में, मिल जाएगा आपको, डाउनलोड करो। वो तुमको डिटेलिंग देगा कि प्रोग्रामिंग कैसे करना है, ठीक है। ये है तो बाद में आया। देखो मैं 2004 में IT में एंट्री किया है, उसके बाद में बहुत से वर्जन्स आए। .NET 1.0 मैंने यूज किया हुआ, SQL सर्वर वर्जन ही नहीं था उस पर। बाद में 2005 रेनिश सर को पता है ये चीज़। अभी वर्जन नहीं था तब हम काम कर रहे थे उसमें, अभी वो बहुत एडवांस हो गए हैं, ठीक है। आपको ये स्किल लर्न करने पड़ेंगे, उसका क्या है बाबा, कैसे चलता है। अगर ये लर्न नहीं करोगे, आप इंटरव्यू में नहीं, आप बात नहीं करोगे ना, तो भी इंटरव्यू में आपको बाहर निकाल देंगे। आपको एक एजेंट ऐसा क्रिएट करेगा कि आपको बिहाफ ऑफ बात करेगा, वो भी हमें फाइंड आउट कर रहे हैं। अभी परसों ही एक इंटरव्यू हुआ था, उसने हमें दूसरे को बिठा के इंटरव्यू दिया और निकला दूसरा ही बंदा। हम उसका भी फॉल्ट टॉलरेंस बोलते ना,
हम ये इंटरव्यू का फॉल्ट टॉलरेंस अभी आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास एक सिस्टम बना रहे हैं। लोग ऐसा भी करते हैं, दोस्त को बिता देते हैं, चेहरा तुम्हारा दिखता है, लेकिन एआई अगर दिखता है वैसा नहीं है। मुझे हमको पता चलता है, जो स्किल लोग हैं ना उनको पता चलता है कि ये एआई का इमेज है और ये बात कर रहा है। मैं आपको लास्ट में दिखाता हूँ, अगर 5 मिनट में मुझे खत्म करना है, ठीक है? ये समझ में आ, चूज द राइट फ्रेमवर्क, लैंगचेन, गूगल एडीके, क्रू एआई, ये इसमें प्रोग्रामिंग करना पड़ता है लैंगचेन में वगैरह, तो आपको वो फ्रेमवर्क चूज करो जो ऑर्केस्ट्रेट है। ऑर्केस्ट्रेट हम बोलते हैं, जैसे वाटसन एक्स ऑर्केस्ट्रेट इसका है, IBM का है, एनेटेनिक है, वो नो कोड है, उसमें भी ट्राई करो आपको फ्लो अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। एनेटेड में बहुत हाई लेवल पे ये होता है, ऑर्केस्ट्रेट होता है एक्चुअली। आपको कोड नहीं लिखना है, लेकिन उसके जो स्ट्रक्चर बनाने हैं ना बहुत अच्छे बनाने पड़ते हैं, ठीक है? ठीक, कनेक्ट टूल्स है, एमसीपी मतलब एक कनेक्टर है, ये आपके थर्ड पार्टी टूल्स यूज करता है, जैसे यूजिंग एजेंट एज अ टूल, फंक्शनल कॉलिंग, फाइल सिस्टम एक्सेस, दीज आर द टूल्स। यू कैन सी एमसीपी बीच में आता है। उसके बाद में डिवाइड मेमोरी लगता है इसमें, आपको कौन सा मेमोरी यूज करना है, फाइल सिस्टम, एपिसोड, कैशे, थोड़ी देर के लिए कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है। ये जो नॉर्मल प्रोग्रामिंग था एआई में भी वही है, आपको खाली लर्न करना है कि कैसे उसको यूटिलाइज करना है, कहाँ पे आता है, ठीक है? सॉरी। उसके बाद में मैनेज कंटेक्स्ट क्या है वो आपको प्रॉम्प्ट्स में देना पड़ेगा डिटेल में, उसका बिहेवियर बताना पड़ेगा। मैंने जैसे बोला कंसेप्चुअल, कंटेक्चुअल होना चाहिए। लास्ट में टेस्ट एंड इवैल, टेस्टिंग भी करना चाहिए। अभी टेस्टिंग ऑटोमेट हो गया, ऑटोमेशन आया है, टेस्टिंग में पूरा ऑटोमेशन है, लेकिन एआई के लिए आपको डिफरेंटली थिंक करना पड़ेगा कि कैसे टेस्ट करना पड़ेगा। ये हैलुसिनेशन करना नहीं चाहिए, ठीक है? आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन देना नहीं चाहिए, लिमिटेड इंफॉर्मेशन चाहिए। ये चैट जीपीटी अभी ज्यादा देता है, तो आपको लिमिटेड, जब आप टूल डेवलप करोगे, एआई एजेंट डेवलप करोगे, तो आपको लिमिटेड यूज केसेस पे काम करना पड़ेगा। फोकस टू स्कोप चेंज हो गया, आपका पैसा बढ़ेगा, आपको पैसा कोई नहीं देगा, तो फोकस टू स्कोप, ठीक है? और ये जो पॉपुलर लिस्ट ऑफ पॉपुलर मॉडल्स, लिस्ट ऑफ पॉपुलर फ्रेमवर्क्स आपको ये पीपीटी में देखने के लिए मिलेगा। मैंने जैसे बताया वो सारे मॉडल्स कौन से फेमस है, और उसके साथ में मैंने यूज केस क्या वो सर्वाइव करता है वो भी दिया हुआ है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके ओके, दिस इज द डिप्लॉयमेंट। आप कहाँ पे बैठोगे, आई फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, ये आपको देखना है। ये सारे इंजीनियर्स है, मैंने इधर नाम नहीं डाले, आपको आइडेंटिफाई करने हैं। आप कहाँ पे बैठोगे, आप प्रॉम्प्ट इंजीनियर बनोगे, एआई डेवलपर बनोगे, एआई टेस्टर बनोगे, या क्लाउड डेवऑप्स इंजीनियर बनोगे, तो आपको देखना है। ओके, ये मैंने कुछ यूज केसेस है, तो ट्रेडिशनल आईटीवीएस एजेंटिक एआई कंसीडर करो। रिस्पांस ऑफ इश्यूज, ह्यूमन डिटेक्ट्स कॉल्स इन मैनुअल फिक्स आवर्स। पहले आपको इसमें कितना टाइम लगता था, अभी कितना लगता है? 2 आवर्स लगते थे पहले, अभी 9 सेकंड्स में हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एज यूज केसेस एंड रिजोल्यूशंस। सेकंड यूज केस है आईटी सपोर्ट। मैंने बोला Alexa style HR bot replaces help desk now. Then Google AIOps catches crashes early. मॉनिटरिंग का काम आपको करता है। किसी को मॉनिटरिंग के लिए बताया, इशू रिजोल्यूशन के लिए मॉनिटरिंग के लिए बताया, 24/7 सपोर्ट रहता है। बहुत लोग सपोर्ट में भी काम करते हैं। मेरी टीम में मैंने देखा, सपोर्ट की टीम थी मेरी बहुत बड़ी, तो सपोर्ट में भी काम करते हैं। अभी वो करने की जरूरत नहीं, ये एजेंट हमने बना दिया, वो 24/7 आपके साथ काम करेगा, और वो सोएगा भी नहीं आपके साथ, ऐसा ये भी नहीं करेगा, उसको बोलते हैं कंटाला भी नहीं है, राइट? विदाउट स्लीप, विदाउट टेकिंग एनी फूड, ही इज वर्क फॉर यू। ओके, ठीक है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेवऑप्स इंजीनियरिंग मैन्युअली अभी होता था पहले, डिप्लॉयमेंट वगैरह वो सब गया है। यहाँ पे पर्सनलाइजेशन भी, ये यूज के साथ चेक करो, मैं ज़्यादा इसमें नहीं करता हूँ। ये मैंने डिस्कस किया है, राइट? नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, स्पॉटिफाई, किस में इंटेलिजेंस है बनाया है एआई में, वो दिया है। ये सेल्फ हीलिंग आईटी सिस्टम मैंने डिस्कस किया आपके साथ, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होता है, वो डिटेल में मैंने बताया, ठीक है? इस पे मैंने जाता हूँ। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, इंक्लूड मॉनिटरिंग लाइक गूगल मैप्स फॉर आईटी, ये भी मैंने डिस्कस किया है। गूगल मैप का एग्जांपल आपको ऑलरेडी दे दिया, ठीक है? ये है एजेंट ब्रेन।
ओके, तो इस पे जाओ, ऑब्जर्व मेमोरी, प्लान, यूजर, यूज टूल्स एंड आउटपुट। अगेन मैंने जैसे बताया आपको, नेटफ्लिक्स में पॉजेस ऑब्जर्व करता है वो। आप पहली बार जाओगे तो आपको पॉजेस ऑब्जर्व करता है, वो आपका डेटा डिटेक्ट करता है, आपका बिहेवियर डिटेक्ट करता है पहले। उसके बाद में मेमोरी में रिकॉर्ड्स, पास्ट कंटेंट्स एंड हिस्ट्री, वो मेमोरी में आपके रहते हैं। चैट जीपीटी में जाओ, हिस्ट्री दिखता है ना एक साइड में, आपने क्या क्या हिस्ट्री चेक की वो दिखता है, वो रिकॉर्ड में होता है, दिखता है ना या नहीं दिखता है? या किसी को पता ही नहीं हिस्ट्री दिखता है करके? आपने क्या चैट जीपीटी में डाला वो हिस्ट्री रिकॉर्ड होता है, ठीक है। प्लान ब्रेक्स गोल इनटू स्टेप एंड एग्जीक्यूट, मतलब छोटे छोटे स्टेप में एग्जीक्यूट करता है। फ्लो डायग्राम देखिए आपने, रिव्यू किए किसी के साथ, पीयर टू पीयर रिव्यू करो तो आपको पता चले कि आप कौन सा स्टेप मिस कर रहे हो। फ्लो डायग्राम, किसी भी यूज केसेस का फ्लो डायग्राम चेक करो, वो स्टेप्स पता होने चाहिए, वो आपको यहाँ पे प्रॉम्प्ट्स में वैसे ऐड करने हैं। यूज टूल्स लाइक डीबी, अदर एजेंट्स, आउटपुट, फाइनली आउटपुट आ जाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट गो टू द, मैंने आपको फ्लो वाइज का एक दिखाना है, एक एजेंट दिखाया है। फ्लो वाइज टाइम के बेसिस पे मैं दिखा नहीं सकता हूँ, मैं आपको उसका डिटेलिंग दिखाता हूँ कैसे एजेंट फ्लो वाइज, ये ऑर्केस्ट्रेट है फ्लो वाइज, ये टूल है, आप सर्च करो गूगल पे जाके फ्लो वाइज, फ्री में सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, जाके बॉक्स तैयार करो, एजेंट तैयार करो, आपको कैसे आता है वैसे तैयार हो और ट्राई इट, इट्स अ फ्री टूल, ओके। उसके बाद में दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, आई एम जस्ट एक्सटेंडिंग 5 मिनट्स, सॉरी फॉर दैट। जॉब यू विल गेट इन 2-3 years आर एजेंटिक एआई जॉब्स। मैंने आपको बोला है 2-3 साल में आप जब बाहर निकलोगे, 1 साल में बाहर निकलोगे तो आपको एआई के जॉब्स ज्यादा मिलेंगे, तो आपको उसका स्किल आना चाहिए। आना चाहिए नहीं आना चाहिए? यस और नो? आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा, सो गए सब? एवरी ऐप विल can now have a AI brain. One agent you build can do the work for entire team. You are understanding the why behind apps like Netflix, Alexa, Swiggy. मैंने बोला घर जाके शांत मत बैठो, identify these apps. Netflix में क्या होता है? अरे चैट जीपीटी को पूछो, इतना भी आलसी ठीक है, चैट जीपीटी को पूछो, मैं अभी आपको सॉल्यूशन भी दे रहा हूँ, और वो एक पेज पे निकालो जो भी आप बने, अभी इतने एजेंट्स बने हैं कि आप उसमें कंसिडरेशन करो। IBM ने ICA करके एक टूल डेवलप किया है, दिस इज इंटरनल, आई विल टेल यू, व्हाट्सन एक्स पे है, और वो फ्री टू ऑल एम्प्लॉइज, और उनको बोला है कि तुम एजेंट्स क्रिएट करो। विद इन 1 month देयर इज 6000 एजेंट्स दिस पीपल्स हैव क्रिएटेड ऑलरेडी। तो आप अगर इस रेस में आगे नहीं आओगे ना, आपको तो डूबा जाओगे, आपको जॉब ही नहीं मिलने वाली। लिखे ले लो, आपको रेस में खड़ा रहना है, आपको एआई सीखना है, ठीक है। These are the jobs, future jobs. Consider AI, LLM, basic आना चाहिए आपको. This is the basic things. Python plus APIs पता होने चाहिए, APIs कैसे वर्क करते हैं. Prompt engineering, this is on demand. मैंने वहाँ पे core skill on demand वो लिखा है वो. Core tech, database plus and APIs. ये database plus API जाने वाला नहीं है. अगर आप ये database में कुछ भी करना चाहते हो, that is also good options. AI safety and ethics, this is important. अभी सब कुछ आपका डेटा जाएगा, सब जाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत से लोग गवर्नेंस पे, सेफ्टी पे, एथिक्स पे काम कर रहे हैं। एथिक्स चेतन ने बहुत अच्छी तरह से बताया, मैं उस पर आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा, ठीक है। क्लाउड प्लस डेवऑप्स, ये भी जाने वाला नहीं है, क्लाउड्स आएगा। क्लाउड चाहिए, डेटा आपको एप्लीकेशन स्टोर करने के लिए, ये सारे एजेंटिक फ्लोज, LLMs जो है ना क्लाउड पे बिल्ड हो रहे हैं, तो आपको यूज करने के लिए उसको कंसिडर करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये जॉब है आपके फ्यूचर जॉब्स, इसमें स्किल डेवलप करना शुरू करो, ठीक है। ओके, बाय 2030 IT will be autonomous, right? तो मैंने बोला 85% of IT ops will be automated by AI. Then $4 trillion AI market value by 2030. 97 million new AI related jobs by 2025. जॉब्स आना शुरू कर दिया। मेरे को अभी AI इंजीनियर चाहिए, 10 AI इंजीनियर चाहिए, नहीं मिल रहे।
I am started training my team internally. 10 AI इंजीनियर चाहिए, मुझे नहीं मिल रहा। ऐसे मेरे बहुत से कलीग्स को AI इंजीनियर चाहिए, लेकिन आप वो AI स्किल के साथ आओगे, आपका रिज्यूमे देखेंगे तो ही आप ले पाएंगे, नहीं तो नहीं पाएंगे। आप बोलोगे नहीं तो मुझे नहीं पता चलेगा, राइट? रिज्यूम से नहीं पता चलेगा। रिज्यूम राइटिंग तो चैट जीपीटी करता है ना आजकल। आपका स्मार्ट फोटो ये सब चैट जीपीटी करता है, ठीक है? ये मैंने बोला था सरप्राइज दूंगा तुमको, ये सरप्राइज है। 100 AI agents ideas, take it, start building those AI। ये पीपीटी शेयर करो ऑर्गेनाइजेशन की, मैं अगेन मैं बोल रहा हूँ, ये 100 AI agents आप ले लो, करो, मुझे भेजो। अगर किसी ने बोला मैं कल 10 साल के बाद मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारे से कोई तो बंदा यहाँ पे आके खड़ा रहे, पाटिल सर फिर से बोले या कोई भी स्टाफ होगा वो बोले फिर से कि आजा यार बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन आपको लर्निंग नहीं छोड़ना है। अगर आप लर्निंग से बाहर गए ना, आप गए। हर एक कंपनी का अलग स्ट्रैटेजी है। मेरे कंपनी में 2000 आवर्स का स्टैंडर्ड रहता है, गोल्ड सर्टिफाइड बोलते हैं आगे में। एक साल में तुमको 2000 आवर्स स्टडी करने पड़ते हैं मिनिमम। कोई भी प्रमोशन वगैरह चाहिए, ये क्राइटेरिया है, सर्टिफिकेशन क्राइटेरिया है। आपको जब तक कुछ चीजें कंपलसरी नहीं होगी ना, तब करोगे नहीं। और वो कौन करेगा? आपको खुद को करना पड़ेगा। यू शुड बिल्ड योरसेल्फ। ओके, नेक्स्ट। ये अगेन मैंने आपको फ्री में दे रहा हूं, देखो ये क्या है, मास्टर प्रॉम्प्ट है। अगर इसको फिल करके आपने चैट जीपीटी डाला ना, आपको करेक्ट आंसर, करेक्ट यूज केसेस का डिटेल्स मिल जाएगा। दिस इज अ मास्टर प्रॉम्प्ट। और इसके बेसिस पे मैंने नियर अबाउट 1000 एजेंट्स टेस्ट किए। दिस इज माय इंटरनल। ये आपको गिफ्ट दे रहा हूं मैं। आर यू हैप्पी? आप यूज करोगे, राइट? ये आपको अच्छा डेटा देगा, आपको अच्छा डिटेल्स देगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज गिफ्ट फ्रॉम माय साइड। तालियां बजाओ यार, मैं गिफ्ट दे रहा हूं आपको। ये मैंने चैट जीपीटी से लिया है। ये जो फ्री कोर्सेस है ना, आप कंसीडर करो, ये आप कंप्लीट कर सकते हो। आपको ये स्किल इंप्रूव करने हैं तो दीज आर द फ्री कोर्सेस, AI कोर्सेस विद सर्टिफाइड 2026 फ्री है, IBM के फ्री है, ये बहुत से गूगल के फ्री है, ठीक है? देन चैट जीपीटी में आपको चैट जीपीटी कैसे यूज करना है उसके चीट शीट मैंने दी। ये भी मैंने कहा से तो निकाली है। आप ये यूज करो, क्योंकि आपको प्रॉम्प्ट ही लिखना नहीं आएगा तो आप कुछ भी काम नहीं करोगे। तो चैट जीपीटी में कैसे प्रॉम्प्ट लिखने हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीट शीट आप ले लो और इस पे काम करो कि कैसे काम करती है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है? फाइनली, व्हाट AI एजेंट वुड यू बिल्ड? कौन सा एजेंट बनाओगे? मुझे मैसेज करोगे, मेरा नंबर ऑर्गेनाइजेशन शेयर करो। कौन कौन मैसेज करता है मैं सबको डिटेल्स देता हूँ, ठीक है? आप क्या बिल्ड करोगे, कौन सी यूज केसेस लिखो, मुझे खाली एक SMS करके लिखो। डू नॉट एक्सपेक्ट कि मैं उसका रिप्लाई दूँ। रियली मुझे टाइम मिलेगा तो मैं रिप्लाई करूँगा, लेकिन बेस्ड ऑन आपका यूज केसेस क्या है। इफ यू आर इम्प्रेस मी, I will help you to resolve that use case, solve that use case, build that use case. Okay? So it's now action on you. आपको एजेंट बनाना है। मैंने टूल्स दिया है, सब दिया है, फ्री बताया है कहाँ पे फ्री है कहाँ पे नहीं है। You should build the AI agent and share the use cases with me. Okay? And आपको जितना वर्ल्ड में पॉपुलेशन है ना, उसमें से एक बनना है, तो आप भेजो। आई विल रिस्पॉन्ड। अगर यूज केसेस अच्छा रहेगा तो मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ। धनश्री को पता है, नंदनी को पता है। आई विल रिस्पॉन्ड द पीपल, बट मुझे टाइम मिलेगा तो मैं रिस्पॉन्ड करूँगा, अगर आपका इंटरेस्टिंग रहेगा तो, ठीक है? ओके, थैंक यू। Of how autonomous and intelligent systems are transforming IT operations was truly enlightening. You highlighted how agentic models enable Greater efficiency, adaptability, and smarter decision making in today's dynamic technological landscape.
sir. With that, we come to the conclusion of our insightful and enriching speaker sessions. Each address today has truly broadened our perspectives and inspired us. Now we proceed with the certificate distribution ceremony for the student coordinators. I request our dignitaries to kindly present the certificates. I now invite the core committee to come on a stage to receive their certificate. Committees kindly come forward after their name is being announced. Co-committee members Piyush, Dhanashri, Rajnandini, Ishwari, Harsh, Sakshi. And I request the licensing committee to be present next. And I request the stage committee to be present next. Stage committee Avanti, Aditi, Saini, Srishti, Omkar, Raj, Vidya, Padu. Hospitality committee Asiya, Sakshi Kadam and Saini. And I request the discipline committee to be present next. I request the discipline committee to be present. And I request hospitality committee to be present next.
the logistic committee to be and I request social media committee to be present next. And I request the social media committee to be present next. Ayush, Abhishek, Rohan, Harshal, Farhan, Yash, Yogesh. And I request the reception committee to be present next. And I request anchoring committee to be present next. I request the technical committee to be present next. Thank you, everyone. Recognizing dedication fosters excellence. And today we celebrate both of us. I now invite Dr. P.P. Patil, Head of Computer Department, to deliver the vote of thanks.
Good afternoon, respected guest of honor and distinguished guest speakers, Director, Deputy Director, Heads of various departments, Administrative Officer of the Institute, faculty members. It is my proud privilege to propose the vote of thanks for the National IT Symposium 2.0 on the behalf of Bharati Vidyapeeth deemed to be University, Yeshwantrao Mohite Institute of Management, Karad. I extend our sincere thanks to our esteemed guest, Honorable Mr. Jagdish Narayan, Honorable Mr. Sunil Satyavoli, Honorable Mr. Chaitanya Dikshit, Honorable Mr. Vaibhav More, our alumni, for accepting our invitation and sharing their valuable insights that truly enriched us. Your words inspired us to think beyond boundaries and strive for innovation. I would also like to thank teaching and non-teaching staff members and all the students participants, including those who joined online, also from various colleges in Satara and Sangli districts, for their enthusiastic involvement, active participation, and I am confident your students about your knowledge and skills acquired today will definitely helpful to make you future technocrats and successful IT entrepreneurs. Also, I thank our director, Dr. Professor Azim Sheikh sir, for his constant support, guidance and efforts taken during last month for preparation of this particular event. Lastly, I would like to acknowledge the efforts of the students, volunteers of different committees, core team and supporters whose commitment and teamwork made this event a grand success. Thank you one and all. On behalf of the organizing committee, I sincerely thank all our respected dignitaries, speakers, faculty members, student coordinators and participants for making this event a good success. I request everyone to kindly rise for the national anthem. We now invite everyone to join us for a group photo. Yes, students, come forward. Today. Everyone join us for the group photo. Everyone join us near stage for group photo. Everyone please come forward for the group photo. I repeat, everyone please come forward for the group photo.